पूरा हाईलाइन खिलाने की कोशिश की जाएगी। बोनस ले जाना इतने आसानी से नहीं दिया जाएगा। एंकल को पकड़ा है, पूरी तरीके से जकड़ा है। अभिमन्यु ने शिकार बनाया, ओपोनेंट को मैच से बाहर भगाया। वाओ, जस्ट अमेजिंग। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जैसे ही डी रंजीत गए, थोड़ा सा स्लाइड पॉज भी उन्होंने वहां पर लिया था, थोड़े से एक्स्ट्रा सेकंड उन्होंने वहां पर व्यतीत कर दिए। और अभिमन्यु एक नया नाम आयुष पुरुषोत्तम अमूमन वहां पर राइट कॉर्नर पर खेलते हैं। आज एलिवर्सन साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया। मणिकंदन हो, विद्युत हलई हो, पुरुषोत्तम हो, जयसूर्या, राम कुमार, पांचों जो आपको टॉप 7 में नजर आते हैं, उन पांचों को बाहर उठाया है। यानी कि कहीं ना कहीं ए टीम को उतारा गया है अब। और जेट पशुपति कह रहे हैं कि चलिए मैं चाहे ए टीम में हूं या फिर बी टीम में हूं या फिर ओरिजिनल 7 में हूं, मेरा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जेट की स्पीड से गए, टैकल पॉइंट को नहीं दिया चोला वीरेंस को और वापस आए। अब लगातार लेफ्ट कॉर्नर जो मुश्किलात का सबब बन रहा है चोला वीरेंस के लिए। साथ ही साथ ये विघ्नेश को आउट करना एक अच्छा प्रहार इसलिए माना जाएगा क्योंकि चोला वीरेंस के डिफेंडर को रेड लगानी पड़ेगी। अय्यप्पन रेड लगाने के लिए आए हैं। जिम्मेदारी दोहरी, रिवाइवल भी लाना है, अपनी टीम को ऑल आउट से भी बचाना है। 2 खिलाड़ी मौजूद है। एंकल होल्ड, इस बार कॉर्नर थोड़ा सा चेंज था। तमिल ने शुरुआत दी, कॉम्बिनेशन पल्ली टस्कर्स ने दिखाया। पूरा डिफेंस अपनी टीम के लिए एक और अंक लाया। एक और अंक लाया। अय्यप्पन वहां पर चाहते थे कि अपनी स्फूर्ति दिखलाएं, पर जैसे वो बोनस के लिए गए, बहुत अच्छा अटैक। तमिल अरसन की फॉर्म वापस आना पलनी टस्कर्स के लिए कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा है। और तमिल अरसन ने 24 कैरेट सोना है, वहां पर तारीफ करनी होगी। बहुत अच्छी तरह से खेलना जानता है, प्रदर्शन करना जानता है। और पलनी टस्कर्स ने वहीं से शुरू कर दिया कल जहां से उन्होंने समाप्त किया था। आयुष फिर से सेम फॉर्म, खिलाड़ी बदले हैं बट रिजल्ट में शायद कोई बदलाव आने देगी नहीं है टीम। चोला वीरेंस बड़ी जल्दी एक ही पॉइंट पर ऑल आउट। रेड वक्त की बात है, कभी आपके तो कभी हमारे साथ है। ये वही गौतम है जो अपनी टीम से सडन सरप्राइज सोलो टैकल्स लगा लेते थे। और पिछली रेड पे क्योंकि अकेले खड़े थे, कैंप में कोई और साथी नहीं था, मनोबल कमजोर हर खिलाड़ी का हो जाता है। अपनी टीम को ऑल आउट से नहीं बचा पाए। विघ्नेश जो सेकंड लास्ट शिकार अपनी टीम के डिफेंस में बने थे, इस बार रेड लगाने के लिए आए। 9 अंकों का फासला। पलनी टस्कर्स ऑलरेडी डबल डिजिट्स के ऊपर पहुंच चुकी है। मुकाबला अभी भी सिर्फ 7 मिनट से ऊपर का खेला गया है। हर्षित जी आयुष, बिल्कुल अभी सिर्फ 8 साढ़े 7 मिनट के आसपास का खेल वहां पर खेला गया है। और चोला वीरेंस को समझना होगा ना कि कोई बात नहीं, आप ये समझिए कि 9 पॉइंट की लीड के साथ पलनी टस्कर्स इस मैच में आई थी। अब आपको भूल जाना है, पूरी टीम वापस आ चुकी है, तो सेम एनर्जी, वो सेम एटीट्यूड हो, सेम पॉजिटिविटी के साथ आपको खेलना बेहद जरूरी होगा। बास्की मुकेश है, पिछली बार इन्होंने टोटल किया था प्रवीण पर, बट कौन ये अपनी टीम को संभाल सकता है? ये जिम्मेदारी गौतम और प्रवीण पर है। ये 2 सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं आयुष, तो जरूरत थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पहले ऑल आउट के बाद चोला वीरेंस को टाइम आउट लेना चाहिए था और आपस में वार्तालाप करनी चाहिए थी। लेकिन यही तो कमी रही है चोला वीरेंस की। शुरुआत से लेकर अब तक मैं सिर्फ इस टीम से एक ही चीज नोट कर रहा हूं कि आपस में वो कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा, बातचीत नहीं की जा रही। ये जंप अच्छा है, ये जंप पॉइंट लेकर जाएगा और पलनी टस्कर्स के डिफेंस से अभिमन्यु को बाहर भेज के जाएगा। जी अय्यप्पन वहां पर बहुत ही अच्छी जंप लगाई, राइट कॉर्नर पर मौजूद थे अभिमन्यु, दोनों थाइस पर जाना चाहते थे और अय्यप्पन ने पहले ही देखा और कैसे अपने आप को लोड किया। पहले थोड़ा सा डीप चले गए थे बॉक लाइन, बोनस लाइन की तरफ, पर एक बहुत अच्छी जंप और जंप की डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। कई रेडर्स क्या करते हैं आयुष, जंप लॉबी की तरफ लगा देते हैं, उसके बाद एल शेप में करते हैं। यहाँ पर वो जो डाइव थी ना, वही ऐसी थी कि उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड साइड में लगाई। इस बार प्रवीण आए ना, इंतजार कर रहे थे रेडर का थोड़ा सा अंदर आने का। जेट पशुपति लगातार फुटवर्क कर रहे थे, दोनों थाइस पर डाइव आई। अब वो हाई पॉजिटिव गेम की शुरुआत आयुष। चोला वीरेंस ने डिफेंस के साथ खाता खोला है। प्रवीण जो कॉर्नर की पोजीशन पे थे, डबल एंकल होल्ड के लिए चले गए। हल्के से हाथ स्लिप जरूर हुए, लेकिन फिर डिफेंस ने एंश्योर किया, कवर के खिलाड़ियों ने एंश्योर किया कि बाहर के रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दिए जाए। विघ्नेश डिफेंस 5 का, हाईलाइन खिलाया जा नहीं सकता, कारण भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि बोनस एक्टिवेट नहीं। यदि विघ्नेश को पॉइंट चाहिए तो खुद को पॉइंट निकालना पड़ेगा, किसी खिलाड़ी को टच दिला के आना पड़ेगा। जी हाँ, टच पॉइंट की आवश्यकता है, बट मैं मानता हूं कि अगर 5 में ज्यादा अंदर न भी जाए तो चलेगा, क्योंकि विघ्नेश मुरुगेसन जो हैं अच्छे रीडर हैं। ये 6-7 के हाउस में बहुत अच्छा अटैक करते हैं। यहाँ टच लेने का प्रयास था, बट अच्छा वापस पीछे की तरफ गए। विद्युत हलई वहाँ मौजूद थे और अजय बुथैया का जन्मदिन है। बहुत ही अच्छा डाटा आयुष आपने प्राप्त कराया कि आज अजय बुथैया का जन्मदिन है, तो शायद मुझे लगा कि कोच ने इसलिए उन्हें तोहफा दिया कि जाइए आपके लिए, अन्यथा और कोई भी ऐसा प्लेयर आपको ज्यादा नजर नहीं आ रहा है जो शुरुआती 7 में वहां पर अमूमन देखने को मिलता हो और आज ना मिला हो। यानी कि राम कुमार वापस बाहर हैं, जयसूर्या है, पुरुषोत्तम, विद्युत हलई, मणिकंदन, ये 5 खिलाड़ी जो आपको टीम में नजर आते हैं वो बाहर है। बट अजय मुथैया को कहा कि जिन्हें आज आपका जन्मदिन है, हाई फाई बनाने की कोशिश कीजिए, टीम को जिताने का प्रयास कीजिए और एज ए लीड आप अपना कार्य कीजिए।
इसका मतलब ये है कि अजय, जिन्हें एक केक स्वरूप खिलाने के लिए 5 पेस्ट्रीज को बाहर बिठाया गया है और वो सारी की सारी पेस्ट्री अलग अलग फ्लेवर की थी, कहीं वो फ्लेवर कम ना पड़ जाए पन्नी टस्कर्स के कैंप में। आप चलिए, यहाँ पर 7 का गैप आपको नजर आएगा, यानी कि 7 पॉइंट का मार्जिन आपको पल्ली टस्कर्स के क्रम में नजर आ रहा है। मास्की मुकेश गए बड़ी जल्दी वापस आए क्योंकि उन्हें पता था कि 2 और टाइड आने वाली है। अजय मुथैया ये बहुत ही ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ये कवा भी खेलते हैं, कॉर्नर भी खेलते हैं, जहां टीम को आवश्यकता होती है मल्टी फैसेटेड है। यहाँ क्या विघ्नेश मुरुगेसन किक लगाने का प्रयास, समय लरसन पर फ्लाइंग टच करने की कोशिश, राइट कॉर्नर पर थोड़ा सा क्या अतिरिक्त समय ले चुके हैं विद्युत हलई और तमिल अरसन कॉर्नर की पोजीशन को निभा रहे हैं। सिर्फ 9, 8, 7, 6 कम सेकंड शेष। ये नाथन रंगथान की एक शानदार डाइव आई दोनों थाइस पर, और जो हम आयुष थोड़ी देर पहले मैं बता ही रहा था जंप की, इस बार जंप की आप डायरेक्शन समझ गए होंगे। बिल्कुल वही जंप की डायरेक्शन जिसका आप कह रहे थे कि लॉबी की तरफ इनिशिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पोजीशन के बाद वापसी करना थोड़ा आसान होता नहीं है। डू और डाई वहां थी, डू और डाई यहाँ भी है। रेड लगाने के लिए स्टुअर्ट, मुकाबले की पहली रेड, पहला पॉइंट इसी खिलाड़ी के पक्ष में गया था। शायद अपने जहन के अंदर वही दृश्य बार बार देखते हुए नजर आ रहे होंगे। गौतम कवर की पोजीशन के ऊपर है नहीं है, उनको टच करके बाहर भेजा गया। पल्ली टस्कर जर्सी नंबर 11 आउट। जी आयुष, बिल्कुल आपने सही कहा। और यहाँ भी देखिए स्टुअर्ट कैसे कहां से वापस आने के लिए गए वहां से। ओह, कहाँ ये कैसे टच था, थोड़ा कहाँ हुआ, कैसे हुआ है, थोड़ा अभी हमारे समझ के परे था। पर आयुष, आज आपने बात की अजय मुथैया जी का जन्मदिन है। अजय मुथैया के साथ साथ जो इस मुकाबले के रेफरी हैं मोहन गौड़ा, आज उनका भी जन्म दिवस है, तो उनको भी हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और उनको भी यहाँ पर पहले मैच में रेफरी बने हैं, यानी कि तोहफा मिला है। इसका मतलब ये है कि आज यदि कोई कमेंट्री में डेब्यू करना चाह रहा होता और उनका भी जन्मदिन होता तो शायद हम एक नया कमेंटेटर हमारे साथ बैठा होता। हर्षित, ये आयुष, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये सभी बातें हम आप सभी को बताते चले जाएंगे। और मोहन गौड़ा जी की एक और बात बताऊं कि वो कर्नाटक और मैसूर के रहने वाले हैं, और हम आशा करते हैं कि यहाँ पर ऐसी गलती वो नहीं करेंगे, यानी वो पार्टी देने से बिल्कुल नहीं बचेंगे। जैसे यहाँ पर बच गए पल्ली टस्कर्स के मास्की मुकेश रंजीत, आप रेडर हैं, आप आउट ऑफ फॉर्म एज ए रेडर चल रहे हैं, और डिफेंस में आप इतना बड़ा सिली एरर, इसे तो फॉइबल्स कहते हैं। बैलेंस पूरी तरीके से चला गया था और ऑफ बैलेंस होने के बाद पॉइंट्स जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अय्यप्पन 3-13 10 अंकों की बड़ी लीड पल्ली टस्कर्स के पास है। चोला वीरन्स को यदि इस मुकाबले में कमबैक करना है तो हर परिस्थिति में पॉइंट निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। फर्क नहीं पड़ता डिफेंस कितने का है, चाहे बोनस मिले चाहे टच, कुछ ना कुछ लाना होगा। डू और डाई अफोर्ड नहीं कर सकती है टीम। चोला वीरन्स जी, अब ये टीम और ऑल आउट की तरफ नहीं जाना चाहेगी। पल्ली टस्कर्स ने वहां पर टाइम आउट मांगा है। एलिवर्सन साहब से समझने की कोशिश करेंगे वो क्या कह रहे हैं। ஆடி நிறுத்தாதீங்க, ஆடி ரிசல்ட் ஆடுங்க. எதுவுமே பண்றது எல்லாம் முன்னாடி தான் மூவ் பண்றாங்க. ஆடு ரிசல்ட் ஆடுங்க, ஸ்கோர் ஆகுது. ஃபாலோ ட்ரேடியர் இங்க தான் எல்லாமே. बहुत बड़ा रहा है वहां पर, इंजरीज बहुत सारे हुई हैं। महेंद्र प्रसाद, राजशेखर राजेंद्रन, अर्जुन राठी ऑलरेडी बाउंड के लिए वहां पर इंजर्ड है, तो इंजरी कंसर्न में बड़ा पिछड़ी हुई है यहाँ पर चोला वीरन्स। क्या करना चाहिए? वैसे मैंने कल एक मंत्र बताया था, नासिरो घरे सब पीरा जब निरंतर हनुमंत वीरा जाप कर रहे होंगे, लगातार उस मंत्र का जाप कर रहे होंगे। लेकिन पल्ली टस्कर्स, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी निष्ठा, उनकी आस्था थोड़ी ज्यादा, और शायद कबड्डी के प्रति वो जिस तरीके के खेल को दर्शा रहे हैं उसकी आवश्यकता और पड़ती हुई नजर आएगी। मनोगर बाहर है, लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन सबसे ज्यादा टेंशन की पोजीशन बन चुकी है इस टीम के लिए। जो खिलाड़ी जब वहां जा रहा है लगातार मैच से बाहर की जगह पा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। आयुष की लेफ्ट फ्लैंक वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी का सबब रहा है, संकट का सबब रहा है। संकट से उबरना होगा, और आज तो शनिवार भी है, हनुमान जी का दिवस है, याद कीजिए संकट से उबारेंगे बच्चों। आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, वो बचना आपको सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छा टर्न था, पर कहीं ना कहीं हाइट जो हम अमूमन एज अ लीडर फ्रेंड बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी दुश्मन साबित हुई, और यहाँ पर एक अच्छा टर्न के बावजूद राइट कवर ने उन्हें अपना शिकार बनाया। आयुष देखिएगा, ये नाथन वहां पर टैकल के लिए गए, टर्न बहुत अच्छा था, बट वो टर्न उतना कारगर नहीं साबित हो पाया कि ये नाथन के बॉल को यहाँ पर ब्रेक कर दे। दो का डिफेंस, सुपर टैकल की सिचुएशन। एक तरफ प्रवीण आपको नजर आ रहे हैं जो कि फिलहाल मौजूद है राइट कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर। पशुपति अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं, स्पीड दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दाएं से बाएं फ्लैंक लगातार बदलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रवीण अपने आप को सदाकर वो जो एंड लाइन है उससे अंदर बनाकर की कोशिश करना चाह रहे थे। फ्रंटल ब्लॉक,
सोलो टैकल, Get it out. सुपर टैकल, 2 Super पॉइंट। tackle, वाह मोहनदास, 2 point, कॉर्नर की 16 पोजीशन में runs. बैक टू बैक स्ट्रगल करने के बाद अब आपने अपनी टीम के लिए अपने ओपोनेंट को मुंह की देके बाहर भेजा। वाओ, मोहनदास विश्व मोहन बिल्कुल पूरी तरह से सोलो टैकल यहाँ पर किया और बाहर कर दिया रेडर को। और उसके बाद जेट पशुपति थोड़ा सा रिस्क में मुझे लगा निकल आया है, कहीं ना कहीं वो मोहनदास की जर्सी में उसका हाथ फंसा था, रिस्क वहाँ पर फंसी थी। उसके बाद थोड़े से वहाँ पर जेट पशुपति थोड़ा सा परेशानी में फील कर रहे थे। अब देखते हैं कि क्या जेट पशुपति वहाँ पर सही है, क्योंकि अब नहीं चाहते कि और कोई इंजरी यहाँ पर इस एडिशन में और कोई हो। बोनस पॉइंट, चोला रिवाइवल विनर्स। मिला है, ये अच्छी बात है। और विघ्नेश का रिवाइवल मिला है, बोनस भी यहाँ पर आया है। 10 पॉइंटों की लीड आयुष कभी भी कम करने का दमखम रखती है चोला वीरन्स। बिल्कुल रखती है, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना पड़ेगा हर्षित की जो समय कम होता नजर आ रहा है वो भी पन्नी टस्कर जैसी टीम के सामने, तो वो आसान नहीं है। और पिछले बार का मुकाबला आपको याद रहा होगा कि जिस तरीके से अगर आप डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं तो वो मानसिक दबाव हर टीम पे रहता है। सुपर टैकल पिछली बार कन्वर्ट किया था चोला वीरन्स की टीम ने, डिफेंस में वही खिलाड़ी है, इसीलिए शायद स्टुअर्ट ने मोहनदास के सामने इस बार जाने की वो हिम्मत नहीं दिखाई। जी हाँ, वहाँ पर मोहनदास ज्यादा गए नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ को एडवांस टैकल करना कोई अच्छी बात नहीं होगी। यहाँ विघ्नेश ने शार्प टर्न लिया, जस्ट यू टर्न लिया, तुरंत राइट कॉर्नर की तरफ गए। अभिमन्यु उनका पीछा कर रहे थे, चेक किया डिफेंडर को और बहुत ही अच्छा स्ट्रेच करते हुए यहाँ पर हैंड टच किया। अभिमन्यु को बाहर जाना पड़ेगा आयुष। पर ये समझ में नहीं आया कि मुकाबले की शुरुआत में अभिमन्यु आपको खेलते हुए नजर आ रहे थे, जो पोजीशन वो थी लेफ्ट कॉर्नर की, अब वो राइट कॉर्नर की पोजीशन पे क्यों चले गए हर्षित? आयुष तमिल अरसन लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे थे और अभिमन्यु राइट कॉर्नर मौजूद थे। जरूर हो सकता है कि शायद एक जब तमिल अरसन बाहर हो तो अभिमन्यु वहां पर खेल रहे हो, बट उनकी परफेक्ट पोजीशन अगर बात करो अभिमन्यु की तो वो राइट कॉर्नर है। बट यहाँ राइट कॉर्नर ने राइट चीजें नहीं दोहराई है। मास्की मुकेश एक बार फिर से वहां ज्यादा अंदर गए, उन्हें पता था कि गौतम उन पर अटैक करने जरूर चाहेंगे और गौतम को बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। डाइव आई गौतम की, मास्क ने अपने आप को बचाया। ओ डाइव भी नहीं आई थी, वो एंकल होल्ड था और वन हैंडेड एंकल होल्ड था। रेड नंबर 11 का शिकार किया है, अपने ओपोनेंट को मैच से बाहर किया। पन्नी टस्कर्स लगातार अपनी लीड को कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। विघ्नेश ये वो खिलाड़ी है जिसके अंदर क्षमताएं हैं अपनी टीम के लिए कमबैक दिखाने की। राम कुमार को अंदर बुलाया और एक रेडर को जेट पशुपति को बाहर भेजा। क्या ये टच सक्सेसफुल था हर्षित? हाँ, आयुष क्योंकि वो शायद इस वजह से कि चोला वीरन्स जेट पशुपति के नंबर 55 में वहां पर वो आया था, पर यहाँ जरूर ये टच सक्सेसफुल है। यहाँ पर एक अच्छा टच पॉइंट प्राप्त करेंगे विघ्नेश और ये इनकी अच्छी क्रम रहती है। राइट कवर पर बहुत अच्छा अटैक वहां पर करते हैं और अपने आप को पीछे नहीं कर पाए। तो देखिए धीरे धीरे लीड अब कम होने लगी है। और चोला वीरन्स कल का मुझे मुकाबला याद है, शायद मैं और राधिका थे कॉम्बॉक्स में, सेम ऐसा ही स्कोर था। दूसरे हाफ में चोला वीरन्स मुकाबला हारा जरूर, बट कमबैक बहुत अच्छा किया था क्योंकि वो ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे थे जैसे डू और डाई रेट्स पर। आज विघ्नेश ने शुरुआत से कहीं ना कहीं अटैकिंग पोजीशन देखने की कोशिश की है। स्टुअर्ट सिंह, राम कुमार भी ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, बट अभी स्टुअर्ट सिंह रेड लगाते हुए और एम्प्टी हैंडेडली वापस आएंगे। पलनी ने गेम के पेस को स्लो कर दिया है, कल जो नीलगिरी ने किया था आयुष। और ये शायद एक थोड़ी सी अच्छी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। गेम के ऊपर प्रॉपर कमांड होनी चाहिए, गेम फ्लोलेस चलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहाव में आप कहीं पे भी बह जाएं। रंजीत दाएं से बाएं चहलकदमी की जरूरत थी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद लगातार वो तमिल के सामने अपने पांव को रोटेट करने की कोशिश करते रहे। आज चोला वीरन्स की टीम की तरफ से वो रेडर्स के अंदर जो गुहार है वो विघ्नेश के अलावा किसी ने भरी नहीं है। अभी तक रंजीत को एक भी पॉइंट मिला नहीं था, अब भी नहीं मिलेगा। समय टाइम आउट का। पलनी टस्कर्स ने दूसरी बार मांग की है। पलनी टस्कर्स ने दूसरी बार यहाँ पर मांग की है। ஸ்கோர் ஆனால் பார்க்கலாம், எல்லாமே முன்னாடி தான் மூவ் பண்ணுறாங்க, ஏன் கிட்ட போகிறீங்க? போனஸ் என்ன ஒன்று கூட இல்லை, வச்சு அவன் பிடிச்சிக்கும், எல்லாம் தூரம் லாங்கான் இல்லைங்க. 2 ரைடருமே இங்கே தான் விரட்டுறானுங்க, சரியா? ओके, तो दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के कोचेस के साथ बात की है। जरूर यहाँ पर मैसेजेस पास ऑन किए गए होंगे। चोला वीरन्स को यही कहा हुआ कि अब कोई गलती नहीं दोहरानी है, सिर्फ यहाँ पर आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करना है। लेफ्ट रेडर आए हैं एस मुकेश कन्नन, आज अच्छे टोटल चेंजेस खिलाड़ी ने किए हैं और राइट फ्लैंक पर बहुत अच्छा अटैक किया है। बट आयुष इससे पहले दृश्य में हमें राजू सिंह, सागर कुमार नजर आए थे। सागर और राजू की जोड़ी कहते हैं ना कि बहुत ही बढ़िया जोड़ी है, बट सिंध सोनिक क्योंकि सागर कुमार के इंजर्ड हो जाने के बाद राजू अकेले पड़ गए और अब सिंध सोनिक लगभग बाहर के कगार पर है, कगार पर नहीं, लगभग अंतिम मुकाबला खेलेंगे और कहीं ना कहीं वो वापसी की टिकट करा ली होगी उन्होंने। देखिए हर्षित, आप देख रहे थे सागर को, हम तो उपेंद्र जी को देख रहे थे कि वो जब आएंगे तो किस तरीके से खिलाड़ियों को समझाएंगे।
जोक सपाट हो के उपेंद्र जी मुझे इसके लिए माफ कर दे, लेकिन विघ्नेश वो माफ करते हुए नजर आएंगे पल्ले टस्कर्स के डिफेंडर्स को। यार ये नहीं, ये देखना पड़ेगा। एक क्षण के लिए लगा जरूर कि शायद तमिल व परस्यूट दिखाने जाएंगे, लेकिन मिड लाइन के पार ही खुद को रखा। डू और डाई की परिस्थिति है, अच्छा निर्णय था, रुक के रहे स्टुअर्ट सिंह। डू और डाई। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा आयुष की तमिल रसन वहां पर जानबूझकर नहीं है, क्योंकि डू और डाई रेट था, इसका मतलब है उन्होंने अच्छा कैलकुलेट किया आयुष, और यहाँ पर इसी के बीच में एक अच्छा टैकल आता रेडर है। आउट 1 पॉइंट चोला वीरन्स। अब ऐसे में तो शायद सोच रहे होंगे कि खुद ही अंदर चले जाते। स्टुअर्ट भी पकड़े गए, पकड़े तो वो भी जाते हैं। प्रवीण ने आज अच्छी टैकल दिखाई है, बैक होल्ड कर दिखा, और उसी के चलते कोई मौका नहीं मिला रेडर को। पांव जैसे ही उनके ऑफ बैलेंस हुए, फिर ग्रेविटी ने अपना काम कर दिया, रोक के रखा रेडर को। डू और डाई की परिस्थिति वहां थी, डू और डाई यहाँ है। वो डू और डाई के अंदर डिफेंस को सक्सेस मिली थी, डिफेंस यहाँ भी 4 का है। रेड लगाने के लिए विघ्नेश, बैक किक का एग्जीक्यूशन तमिल के सामने, अभी तक कोई टच नहीं। तमिल रामकुमार इन दोनों खिलाड़ी की जोड़ी जो चेन के अंदर अटैक करने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ वो जो राइट कॉर्नर की पोजीशन है वहां से चेन को तोड़ा गया है। दिशा शायद बदली, लेकिन क्या रेडर ने पहले ही लॉबी का इस्तेमाल कर दिया था? दैट्स द ओनली क्वेश्चन दैट्स गोइंग थ्रू माय माइंड। जी आयुष बहुत ही अच्छा आपने ऑब्जर्व किया कि मुझे लगा अभी कि पहले ही रेडर ने लॉबी में चले गए थे। पहले उनका जो लेफ्ट लेग था वो शायद पहले लॉबी में चला गया, और उसके पश्चात वहां पर जो निर्णय आया था, यानी कि वो जो टचेस आए थे, यहाँ देखिए रिप्ले पूरी तरह से पता चलेगा क्या लॉबी को पूरी तरह से क्रॉस यहाँ देखिए यहाँ कर दिया था। पहले राइट लेग थोड़ा सा लॉबी के लाइन पर गया, उसके बाद लेफ्ट लेग पूरी तरह से क्रॉस कर गया, और मोहन गौड़ा साहब की बहुत ही अच्छी निगाहें थी, उन्होंने तुरंत बतलाया कि जी हाँ ये रेडर आउट है। तो चलिए 17-9 के साथ पहला हाफ हुआ है समाप्त। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बड़ी जल्दी मिलेंगे आप सुबह के साथ। फैन कोड पर बने रहिए हमारे साथ। सो मैच नंबर 90 पलनी टस्कर्स वर्सेस चोला वीरन्स, 17-9 का स्कोर। पहले हाफ में 9 रेड पॉइंट्स पलनी टस्कर्स को मिले हैं। कहीं ना कहीं चोला वीरन्स के डिफेंडर्स ने एरर्स की शुरुआत में कुछ अच्छे हाईलाइन डिफेंस खेलने का प्रयास था चोला वीरन्स का, पर पलनी टस्कर्स के रेडर्स ने पूरी तरह से समझा है गेम के पेस को, और शुरुआत में यहाँ पर लीड एक अच्छी बनाई है 8 अंकों की। जरूर 8 अंकों की लीड को अब कम करना चाहेंगे, और एक वो विघ्नेश मुर्गेसन से एरर हुआ, अन्यथा ये स्कोर डबल डिजिट में चोला वीरन्स का भी पहुंच सकता था। मेरे साथ कॉम्बॉक्स से मौजूद हैं आयुष, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद हर्षित। चोला वीरन्स के डिफेंस ने लगातार गलती की, और बिल्कुल आपने सही कहा कि विघ्नेश हालांकि एक आध बार पकड़े जरूर गए, लेकिन उसके बाद अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकालने की कोशिश में सफलता भी मिली है। 4 पॉइंट विघ्नेश ने अभी तक निकाले। ये वो अच्छा टर्न, अच्छा ट्विस्ट था, लेकिन फिर भी काम नहीं आया, क्योंकि डिफेंडर्स ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। सोलो टैकल मोहनदास ने दिखाया था अपने ओपोनेंट टीम के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को, अनइंटेंशनली सही, लेकिन वो इंजरी पहुंचाई, जिसके चलते आपको अब पशुपतिनाथ इस मुकाबले में कब नजर आएंगे ये शायद वक्त ही बताएगा। विघ्नेश पूरी तरीके से उनके पक्ष में वो हाफ गया, जहां तक इस टीम के रेडिंग डिपार्टमेंट की तारीफ की जाए। प्रवीण डिफेंस के अंदर अच्छा खेल रहे हैं, 2 पॉइंट मिले, लेकिन गौतम के हाथों का वो जादू अभी बड़ा फीका नजर आ रहा है हर्षित। जी हाँ, गौतम का जादू अभी फीका नहीं, मुझे लगा चला ही नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से गौतम ऑफ कलर रहे हैं, दिखे ही नहीं कि कहाँ कोई डिफेंस में है। जरूर एरर्स भी कम करने गए हैं, बट गौतम एक ऐसे डिफेंडर जो जब तक ट्राई करते हैं ना, बहुत सारे डिफेंडर्स ऐसे होते हैं नवीन जो जब तक ट्राई नहीं करते उनके लिए वहाँ पर टैकल पॉइंट्स नहीं मिलने लगते हैं, जैसे राजेंद्र वाकर, एम गौतम, लोकेश गुजले अपने आप को अच्छी तरह से कम बैक करके रखते हैं। उन्हें पता है कि एक टैकल पॉइंट आते हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। अंकित जाट उनमें से एक है कि अंकित जाट को भी जब तक अटैक नहीं करने जाते हैं, जब वो बचने जाते हैं हमेशा मुश्किलात होती है। कल अरावली एरोज के लिए वही थोड़े से परेशानी का सबब रहा था, बट पहला हाफ क्योंकि वहां पर पहली रेड पलनी टस्कर्स ने लगाई थी, टॉस जीता था चोला वीरन्स ने, अब दूसरे हाफ में पहली रेड चोला वीरन्स से नजर आई है। रामकुमार यहाँ पहली रेड लेकर पलनी टस्कर्स के लिए, देखते हैं क्या कमाल करना चाहेंगे। प्रवीण राइट कॉर्नर पर होंगे, मनोगर वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर होंगे।
मांग की गई थी हमारे एक दर्शक के द्वारा कि राम कुमार को मैच के ऊपर नहीं खिलाने के चलते क्या पल्ली टस्कर्स की टीम थोड़ी सी कमजोर हुई भी नजर आई है। नहीं, अब उनको खिला लिया गया, मौका मिलेगा। मौका आया जरूर था लेकिन शायद एम्प्टी हैंडेड जाना पड़ेगा। 1 मिनट का खेल पहले हाफ के बाद दूसरे हाफ में खेला जा चुका है। मोहनगढ़ रेड लगाने के लिए लगातार चोला वीरन्स अपने रेडर्स को चेंज करने की कोशिश कर रही है। लेफ्ट कॉर्नर के सामने बैक किक एग्जीक्यूट करना जरूर चाहा लेकिन अभी तक कोई टच नहीं आया। एक तरफ अभिमन्यु है, दूसरी तरफ तमिल। दाएं से बाएं मूवमेंट करने की आवश्यकता थी नहीं, अपनी कैंट को इस्तेमाल किया। आखिरी के 8-7 सेकंड में एम्प्टी हैंडेड मोहनगढ़ अपने घर में। वहां से वापस अंदर की तरफ आते हुए अब दिखाई दिए आपको और डू और डायरेक्ट आयुष। फिर से मुझे डर लग रहा है कि कहीं चोला वीरन्स अपनी वही रणनीति इस मैच में भी नहीं दोहराने वाला है। जरूर एक ठीक हो सकती है बट जब तक आपके रेडर्स पॉइंट नहीं लाएंगे ना तब तक वहां पर आप उस कार्य के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सिर्फ डिफेंस से आपको एक ही पॉइंट मिलेगा और पल्ली टस्कर्स भी मैं उम्मीद करता हूं कल जो गलती नीलगिरी नाइट्स ने की थी आज वो न करे कि सिर्फ 2 और डायरेक्ट पर न खेले। हालांकि जरूर नीलगिरी नाइट्स भी वहां पर जीता था बट एक टफ मैच हो सकता था। तीन रंजीत इस बार लेफ्ट रेडर के तौर पर नहीं राइट रेडर के तौर पर गए थे लेफ्ट कॉर्नर के समक्ष बट उनका स्लो स्टीडी फुटवर्क कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहा है। आयुष देखिए सिर्फ जाकर वहां खड़े हो गए थे। इनिशियल लेवल के ऊपर कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर से वो जो चूक हुई रंजीत से उसका खामियाजा उठाना नहीं पड़ा। पल्ली टस्कर्स के कवर के खिलाड़ियों ने वो जैसा ग्लास पे लिखा होता है ना हैंडल विद केयर वैसे ही रेडर को उठा के आराम से बाहर रखा। मुकेश कनन डू और डाई की परिस्थिति सोलो टैकल सुपर टैकल की सिचुएशन भी ऑन है। 3 के डिफेंस में यदि मुकेश को रोक लिया जाता है तो ना सिर्फ रिवाइवल मिलेगा 2 अंक भी मिलेंगे। अटैक फेल्ड हुआ कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर से चोला वीरन्स के मोनोगढ़ ने उस अटैक के अंदर सफलता भी पाई। सुपर टैकल 2 पॉइंट चोला वीरन्स डबल डिजिट पे। जी हाँ एक और बड़ा सुपर टैकल है। सुपर टैकल नंबर 12 है। इससे पहले इस मैच से पहले 10 सुपर टैकल ये टीम लगा चुकी थी। आज मोहनदास विश्व मोहन ने वो सुपर टैकल लगाया पहले और अब यहाँ पर मनोगर दोनों वहां पर एंकल्स पर गए। इससे पहले आयुष चलिए आपने बहुत अच्छी बात अगर सुपर टैकल की छीड़ दी है तो हमारे सभी दर्शकों को हालांकि अपने प्री शो में बताया कि चोला वीरन्स के कितने खाते में सुपर टैकल्स हैं और पल्ली टस्कर्स ने आयुष इन्होंने बहुत सारे सुपर टैकल्स अपने नाम किए। 15 सुपर टैकल ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा है इसीलिए पल्ली टस्कर्स का ऑल आउट होती है। और सबसे ज्यादा किसने सुपर टैकल्स किए हैं वो अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो वो रावली एरोज का है। 19 सुपर टैकल उनके नाम है। आयुष डिफेंडर्स यदि अच्छा खेलते हैं कम के घर के अंदर यदि टीम डिफेंस अपने ओपोनेंट को रोकने में कामयाब होती है तो जैसा कि हर्षित ने बताया ऑल आउट से अपने आप को परे रख सकती है। और ना सिर्फ ऑल आउट बल्कि आपको 1 के बनस्पत 2 अंक मिलते हैं तो उसी के चलते वो जो टैकल पॉइंट्स है उसमें इजाफा हो जाता है। वो पॉइंट डिफरेंस आपके आगे जाके काम आते हैं। चोला वीरन्स की तरफ से रेड लगाने के लिए मोहन को ये समझना पड़ेगा। हालांकि ये 7 अंकों का फासला बचे हुए 16.25 मिनट के लिए बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी इसको जितना जल्द से जल्द कम किया जा सके चोला वीरन्स के नजरिए से उनके दृष्टिकोण से अच्छा। जी हाँ बिल्कुल मोहनदास विश्व मोहन यहाँ पर इर्द गिर्द घूमेंगे कोशिश की अनसेटल करने की बट मोहनदास विश्व मोहन आयुष फिर से मुझे वही मुकाबला फ्रेम अप होता हुआ नजर आ रहा है। पिछला मैच जरूर जो अभी आपने बात कही ना आयुष वही मैंने बात कही थी पिछले मैच में कि चोला वीरन्स बहुत समय होता है इतनी कम लीड को कम करने के लिए 15 मिनट 16 मिनट बट आयुष क्या करती है चोला वीरन्स यहाँ पर कि डू और डायरेक्ट पर स्वयं भी खेलती है और डू और डायरेक्ट पर विपक्षी को भी खेलने पर मजबूर कर देती है। इसका अर्थ ये है कि पॉइंट्स लगातार बैलेंस होते चले जाते हैं यानी कि एक इधर भी मिलता है एक उधर भी मिलता है। तो कैसे भी आज चोला वीरन्स के रेडर को थोड़ा सा और एग्रेसिव जैसे ही मौका मिले वैसा खेलना पड़ेगा। अब अय्यप्पन को तो खेलना बेहद जरूरी होगा। आयुष डू और डाई की सिचुएशन है अय्यप्पन के लिए। इस बार डिफेंडर्स को चकाने की कोशिश की थोड़ा सा ऑफ बैलेंस मैच से हुए जरूर थे वहां पर खिलाड़ी अभिमन्यु लेकिन फिर भी वो मैच से बाहर नहीं गए। पूरी मैच का नाप ले रहे हैं जितना हो सके अय्यप्पन उतनी दौड़ लगा रहे हैं क्योंकि 5 का डिफेंस है इन्हीं को डीप जाना पड़ेगा। कॉर्नर एक बार फिर टूटा है एंकल होल्ड और उसी के चलते अय्यप्पन बाहर। 1 point each. अजय One को defender बर्थडे out of गिफ्ट bounds. मिला है Number हर्षित। 44. 1 पॉइंट ईच यानी कि एक डिफेंडर वहां पर थोड़े से शायद बाहर हो गए थे और इसीलिए 1 पॉइंट ईच दिया गया है यानी कि फिर से स्कोर इस रेड में बराबरी पर मिलेगा। कौन बाहर गए थे कि अभिमन्यु वहां पर बाहर हो गए थे। रिव्यू चाहते हैं अभिमन्यु देखते हैं कहां बाहर गए थे पूरी तरह से अभिमन्यु। यहाँ अजय मुथैया बर्थडे बॉय के लिए पहला टैकल पॉइंट आता हुआ यहाँ डैश करने गए। ओ हल्की सी स्लाइड थी बट मुझे लगता है रिव्यू उनके लिए सक्सेसफुल हो सकता है। आयुष Pulling Tusker challenges Raider out. Our decision 1 point each. Please review. और आयुष मोहन गौड़ा साहब ये हैं इनका जन्मदिन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जब हम प्लेन में बैठते हैं ना कोई पायलट जब बोलते हैं कि दिस इज योर कैप्टन प्लीज टेक अ रिव्यू और बिल्कुल वैसा यहाँ पर इन्होंने बोला है। और सागर पंचाल को सबसे फिट रेफरी का चैलेंज इन्होंने दे दिया है मोहन गौड़ा साहब ने बट ये रिव्यू अच्छा लिया है पल्ली टस्कर्स ने ये तय है।
जिस दिन अर्शित प्लेन में ये बोलने लगे ना हमें, दिस इज योर कैप्टन प्लीज टेक योर रिव्यू, इसका मतलब वही है इवैक्यूएट इवैक्यूएट इवैक्यूएट, और चेहरे की रंगश बदल जाएगी। Review unsuccessful. 1 point each. Point is captain. You lost your No review. turbulence अर्शित, no turbulence. You can take off your seat belt now. और यहाँ पर अभिमन्यु वापस सीट पर जाएंगे और सीट बेल्ट लगा लीजिएगा। बट मोहन गौड़ा साहब को एक बार फिर से सभी की तरफ से जन्मदिन की बधाइयाँ। अजय मुथैया ने वहाँ पर जरूर टैकल पॉइंट प्राप्त किया और आज लीड जॉनर तेज नारायण साहब की तरफ से हो सकती है कि पार्टी हो शाम को सभी ऑफिशियल्स के लिए और हम सभी के लिए। देखते हैं कि हम यही आशा करेंगे। बार-बार कमेंट्री में आवाज सुन रहे हैं आयुष। लेकिन अर्शित उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको है, लेकिन यहाँ पर चोला वीरेंस के डिफेंस भी उसका लुत्फ उठाता हुआ नजर आएगा। राम कुमार इनको सब्स्टिट्यूट करके एक फोर्स सब्स्टिट्यूशन के तौर पे लाया गया था, उन्होंने पल्ली टस्कर्स के लिए अभी तक एक भी योगदान दिया नहीं है, बस वो और ज्यादा समय तक मैट को, इनफैक्ट वो बेंच को गर्म करते नजर आएंगे। ये अग्रेशन होना अनिवार्य है टीम में। अब सभी अनुयायी हो सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे लीड कम हो रही है। 6 अंकों की अब लीड बची है पल्ली टस्कर्स के पास। पल्ली भी वही गलती दोहराती हुई जो कल नीलगिरी ने कहीं ना कहीं की थी कि वो अपने गेम को पेस के स्लो कर रहे हैं और तमिल अर्जन पर किक का प्रयास है। विघ्नेश मुरुगेसन ये कार्य कर सकते हैं, पर दोनों ही टीमों में अक्सर डिफेंस 4 या 5 का ही रहा है। क्या विघ्नेश जाने का प्रयास करेंगे? इनका फुटवर्क अच्छा है, अपनी एनर्जी वेस्ट न करते हुए इफेक्टिव फुटवर्क दिखाएंगे तो ज्यादा कारगर हो पाएंगे। अय्यप्पन ने आयुष अच्छा फुटवर्क दिखलाया, अच्छी स्पीड दिखलाई, बट इफेक्टिव फुटवर्क होना बहुत जरूरी होता है रेडर में। अब सुबह से क्या ये फुटवर्क दिखलाएंगे? ये अच्छे पड़े तेज रहते हैं। लेफ्ट कॉर्नर चूक इस बार मनोगर से चूक आयुष और यहाँ पॉइंट मिलता हुआ। और उसके बाद भी चोला वीरेंस के कैंप में ही मौजूद थे, थोड़ा और टाइम किल किया, ये इंश्योर किया कि जो बची हुई लीड है 6 अंकों की उसको थोड़ा ज्यादा समय तक के लिए मुकब्बल किया जा सकते हैं। मनोगर के सामने पहली नहीं दूसरी बार फिर वो टीजर पेश किया और शायद हाफ हार्टेड अटेम्प्ट के चलते मनोगर अपने ही घर से अपने ही कैंप से बाहर हो बैठे। जी हल्का सा वहां पर हल्का सा अपना हाथ पीछे नहीं ले जा पाए और अब पलनी टस्कर्स वो काम नहीं कर रहा है। देखिए राइट फ्लैंक से आए विघ्नेश अक्सर पैरेलल थोड़ा सा भगते हुए आते हैं, सिंगल थाई पर गए, बहुत अच्छा सिंगल लेग होल्ड किया और विघ्नेश मुरुगेसन को बाहर किया। बेहतरीन टैकल यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी नाथन रंगनाथन की आयुष। पूरा कॉन्फिडेंस नजर आया, एक तरीके से फ्रीज कर दिया रेडर को, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी उनके पास और जिस एंगल के ऊपर अर्शित को खड़े थे फिर वही था, उनको सिर्फ लॉबी दिख रही थी, पीछे की मिड लाइन देखना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल और तब तक तो डिफेंस कहाँ इंतजार करता है। पल्ली टस्कर्स की वो टीम है, जैसा अर्शित ने बताया 15 से ऊपर सुपर टैकल लगा चुकी है टीम है, उससे साफ पता चलता है डिफेंस बड़ा सदा हुआ। प्रवीण ने भी अच्छा खेल दिखाया, अभी सोलो खड़े तो दूसरी तरफ चोला वीरेंस के लिए आपको राइट कॉर्नर के ऊपर चेन नजर आ रही है, उस चेन के अंदर गौतम है, लेकिन गौतम आज खुद थम कर खेल रहे हैं, कोई पॉइंट निकाला नहीं है। टाइम आउट चोला वीरेंस। जी हाँ टाइम आउट, अब चोला वीरेंस ने यहाँ पर टाइम आउट मांगा है। देखते हैं आइए सुनते हैं कि क्या चोला वीरेंस के कोच कहेंगे। சூப்பர் டேக்கிள் பண்ணோம் இப்படிதானே மேட்ச் இன்னும் 12 நிமிஷம் தான் இருக்குது. மேட்ச் எப்படி பண்ணோம் ஈக்குவலாகவே இட்டுன்னு போனோம், நம்மளுக்கு பாயிண்ட் வந்துன்னே இருக்கும். இப்படி அப்படின்னு அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம லோனாக விட மாட்டோம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லோனாக போடும். இப்படி சொல்ல ஒருத்தாங்க என்ன பண்ணுவோம்। ओके तो यहाँ पर चोला वीरेंस को भी कुछ आदेश दिए गए हैं, कुछ पलनी टस्कर्स को भी आदेश दिए गए हैं। देखते हैं कि कौन उन आदेश का सही पालन कर पाएगा, ये बेहद ज़रूरी है। बट आयुष एक पालन मौसम रोज़ करता है, वो मैसूर का मौसम रोज़ इतना सुहावना होता है, मज़ेदार दिलकश। साउथर्न इंडिया का और राजस्थान में सुनने में आ रहा है आयुष बड़ी बरसात हुई है और बड़ी बरसात हो रही है लगातार। बिल्कुल हो रही है अर्शित, इस बार मौसम ने जो परिवर्तन दिखाया है वो शायद सिर्फ और सिर्फ वही चेंजेस है जो YKS कबड्डी के खेल में करती हुई नजर आ रही है, हर जगह जाकर छा रही है। या तो भाई पूरे हर जगह यहाँ पर बारिश ही बारिश है, ये अच्छी बात है और यहाँ पर पॉइंट्स की बारिश हो, हम यही चाहते हैं। सुपर टैकल का एक और मौका होगा तो सुपर टैकल ऑलरेडी चोला वीरेंस यहाँ पर कर चुका है। क्या मुकेश कन्नन यानी जिन्हें हम मस्की मुकेश कहते हैं, उनके विरुद्ध और टैकल के लिए जा सकते हैं। प्रवीण आयना राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पर एम कॉप्टम टू टच का प्रयास, मास्की वहाँ पर वापस जाएंगे। बच्चे यहाँ तो आइए बारिश की बात हुई है आयुष, और अभी हमारे साथ जो फ्लो मैनेजर हैं युवा कबड्डी सीरीज के बबूना पांडे, जिनकी भोजपुरी विश्व प्रसिद्ध है, भोजपुरी मुशायरेकार हैं, उन्होंने आयुष से मुझे बताया कि बिहार में भी अभी जो बारिश का सिलसिला है, प्री मानसून बारिश इतनी हो चुकी, कई इलाकों में लगभग बाढ़ सी आ चुकी है। तो हम यही आशा करते हैं कि भारत में जन हानि न हो।
अर्चित, इसीलिए शायद हम वो कहते हैं ना कि अति हर चीज की खराब है। बारिश वही होती है जिसका राजस्थान में हम इंतजार किया करते थे। आज इतनी बारिश है कि चीजों को मैनेज करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन डू और डाई को मैनेज करना पड़ेगा। स्टुअर्ट सिंह रेड लगाने के लिए 3 का डिफेंस, एक तरफ प्रवीण, दूसरी तरफ गौतम के साथ मोहनदास चेन के अंदर भी है। दाएं से बाएं चेल करने की कोशिश है। प्रवीण का अटैक आया, गौतम का डैश आया, लेकिन इस बार भी सक्सेस नहीं मिलेगी। 3+2 सुपर हिट, पल्ली टस्कर छा रहा है, लगातार अपने लिए पॉइंट ला रहा है। इस मुकाबले की अब तक की सबसे बड़ी रेड। स्टूपेंडस स्टुअर्ट, क्या बात है, शानदार यहाँ पर एक रेड नजर आई, लेफ्ट फ्लैंक से अटैक आया और तारीफ एक काबिल प्रदर्शन। ये देखिएगा जैसे यहाँ पर पहले हमें कौन नजर आ रहा था लेफ्ट फ्लैंक पर, एम गौतम थे, पर उसके पश्चात लेफ्ट फ्लैंक पर प्रवीण आयनआर गए और गौतम अकेले ने वहां पर होल्ड करके रखा था। मोहनदास से भी बच गए, प्रवीण से भी बच गए। तो अब दूसरी मर्तबा यहाँ पर चोला वीरन्स ऑल आउट हो चुकी है और पल्ली टस्कर्स ने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसकी हम बात कर रहे थे नीलगिरी नाइट्स। और आज पल्ली में क्या यहाँ पर एने लगी रही है, क्या समानताएं रही। शुरुआती समय में वो ये थी कि दोनों ने गेम को स्लो किया, बट पल्ली के एलिवर्सन साहब ने कहा कि गेम स्लो नहीं करना है, इस लीड को बढ़ाना है। तो आयुष, बहुत समय तक ये प्रश्न आया था कि क्या संजीवी और दिवाकरन साहब के जाने के बाद पल्ली पर बहुत इफेक्ट हुआ है? जी नहीं, वो आज के एक्सपर्ट में ये कहना चाहूंगा बहुत ज्यादा इफेक्ट होने नहीं हुआ है, क्योंकि एलिवर्सन साहब ने आकर एज अ कोच अच्छा कार्य किया। यहाँ पी राजा साहब कह रहे हैं कि जाइए रिव्यू मांग लीजिए बोनस का। Yes, Cholaviran, what is the challenge? Bonus point. Please go back. TV umpire, Cholaviran's challenge is bonus point. Audition, no bonus. Radar out. Please review. देखते हैं आयुष, यहाँ पर पी राजा साहब ने बड़े कॉन्फिडेंट होकर कहा था कि रिव्यू लीजिए। आयुष, देखते हैं रिप्ले में कि क्या वो कहीं रिप्ले का कनेक्शन था, क्या कोई रिमार्क दे पाए हैं वहां पर। बोनस निकालने की कोशिश है, मेरे हिसाब से बोनस लाइन तो कट है हर्षित। आयुष, आई वाज थिंकिंग कि पी राजा साहब को इतना दूर से कैसे वो समझ आया कि ये बोनस है या नहीं है। ये थोड़ा सा मेरे लिए संदेहजनक बात है आयुष। यही तो होता है ना हर्षित, तजुर्बा। और शायद इसीलिए कहते हैं कि अपने सीनियर्स के साथ में बहुत ज्यादा समय बिताना चाहिए, क्योंकि तजुर्बा आपको इंटरनेट पे नहीं मिलता, वो आपको अपने सीनियर्स के थ्रू ही आता है। जी आयुष, बिल्कुल आपने कहा कि वर्थ बहुत जरूरी है, और वर्थ वो जब भी आती है आपको जब आप अपना वैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड दर्शाते हैं, एंटिसिपेशन दिखलाते हैं। बट यहाँ रिव्यू गवा दिया चोला वीरन्स ने, और आने वाले 9 मिनट के खेल में दूसरे हाफ में कोई रिव्यू इनके पास रहेगा नहीं। और चलिए, पल्ली टस्कर्स ऑलरेडी अपना रिव्यू गंवा चुके थे, यहाँ चोला वीरन्स ने भी अपना रिव्यू गंवाया। इससे पल्ली टस्कर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और वो इसलिए क्योंकि चोला वीरन्स के विपक्ष में यदि कोई निर्णय जाता है तो निश्चित तौर पे पल्ली टस्कर्स लुफ्त उठाएगी, और क्योंकि लीड ऑलरेडी इतनी बड़ी है कि उनको भी कोई जरूरत नहीं है उस रिव्यू की। गौतम उस खराब फॉर्म से आज चिपक से गए हैं। या एक मैच हाई फाई, दूसरा मैच शांत, तीसरा मैच हाई फाई, चौथा मैच का अभी तक पूरी तरह से 1/3 निकल चुका है और शांत रहे हैं गौतम। इस बार अटैक करने आए गौतम, कह भी रहे थे कि चलिए एक बार डिफेंडर वहां पर बाहर ने धकेल दिया है रेडर को, बट जी नहीं, वहां पर रेफरी का यही मानना कि वहां पर रेडर पहुंच चले थे, और सही मानना। 15 पॉइंट की लीड है। ये पान अच्छा टच किया, इस बार की दोस्त बनी और फ्रेंडशिप निभाई राइट कवर के साथ। अयान को बाहर करना बहुत अच्छी चीज है, जो कि कवर की पोजीशन के ऊपर खड़े थे, उनके थाई के ऊपर जाके उन्होंने वो रनिंग एंड टच मारा, लगभग बॉकलाइन के आसपास खुद मौजूद थे, एक अच्छा सर्किल कंप्लीट कर अपनी टीम के लिए पॉइंट लाए। और गौतम की आप बात कर रहे थे ना हर्षित, आपने कहा कि एक मुकाबले के अंदर हाई फाई, दूसरा मुकाबले में वो थोड़े से शांत हो जाते हैं। मुझे लगता है वो राइम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मुकाबला हाई फाई, दूसरे के अंदर खुद बाय बाय। जी इस बार अच्छी डाइव थी बैकहोल्ड, थोड़ा सा जो मोमेंटम था रेडर का वो इतना परफेक्ट बना कि लेके चले गए रामकुमार। पावा उनमें बहुत अच्छी है, और देखिए तुरंत जैसे ही गए तेजी के साथ रश कर गए, बॉडी में ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। जी आयुष, एब्सोल्युटली। अयप्पन 2 रेड पॉइंट इस खिलाड़ी ने निकाले हैं, लेकिन जिस समय पे इनकी टीम को आवश्यकता थी उस समय वो स्पार्क दिखाना चाहिए था। फुटवर्क थोड़ा सा दिखाया जरूर है, सदावा भी नजर आ रहा है, क्योंकि खुद भी कम हाइट के हैं, फिर झुक के खेलते हैं तो डिफेंडर्स के लिए थोड़ा सा चकमा देने वाला वो दृश्य हो जाता है। पिछली बार इन्होंने कवर को शिकार बनाने की कोशिश की थी, यहाँ कॉर्नर से अटैक बिल्ड हुआ और पल्ली टस्कर्स की तरफ से अभिमन्यु के चक्रव्यूह में ये फंस जाएंगे। या खुश है यहाँ पर
बेंच पर बैठे हुए पलनी टस्कर्स के सभी खिलाड़ी खुश हैं, जैसा प्रदर्शन पलनी टस्कर्स का डिफेंस कर रहा है। यहाँ देखिए जंप अच्छी आई थी, ओ उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर अभिमन्यु ने जहाँ नहीं करना चाहिए था उन्हें हाथ से अटैक, वहाँ पर थोड़ा सा अटैक हुआ था, बट चलिए वो अनइंटेंशनल था। बट आयुष ये एक और बड़ी गलती, प्रवीण INR का तो फॉर्म मुझे लग रहा है बहुत घूम चुका है। चलिए एटलीस्ट एम गौतम वहां पर आते जाते रहता है उनका फॉर्म, पर प्रवीण मुझे लग रहा है कि बहुत दूर छोड़कर आ गए हैं अपने फॉर्म को। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। पहला आप हर्षित फिर भी ये ठीक खेले थे, उसके बाद उनके सर के ऊपर वो किक एग्जीक्यूट किया, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे दृश्य है। उसका कारण ये कि ऑलरेडी टच क्लेम हो चुका था, आपने इंटेंशनली वो टच मारा या नहीं, नॉट टू श्योर अबाउट दैट, लेकिन फिलहाल समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। तब तक आप युवा कबड्डी सीरीज की ऐप डाउनलोड कीजिए। ரெஸ்ட் எடுத்துக்க போ, கீழே மட்டும் ஆடுங்க மேம், டீப்பாக அது வேணும், இந்த லோனை போட்டுருக்கான் கிடைச்சா ஆடுறா ஒரு அடி, நெட்டாக ரீச் தானே போடுறோம்। ஆடிட்டு உள்ள வரேன், உள்ள வந்தா நம்ம டிஃபென்ஸ் பண்ண முடியாது। जरूर विघ्नेश और रंजीत दो रेडर्स बचे। पी राजू साहब ने कहा होगा कि एज ए रेडर आपको पॉइंट लेकर आना है, बट रंजीत कि अगर हम रिकॉर्ड को देखें ना आज, तो वो उनके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हैं। वॉबल किया है आज उन्होंने एज ए रेडर, बिल्कुल बहुत धीमे नजर आए हैं। वो स्पीड उनकी कहाँ चली गई है वो शायद वो स्वयं ढूंढना चाह रहे हैं। पूरी तरह से रंजीत अपने आप को परेशानी का सबब बनाते हुए, और वैसा ही हम, क्योंकि हम 2 दिन से वहाँ पर किसी एक शख्स की वजह से स्विमिंग नहीं जा पाए हैं, सागर पंचाल उनमें से एक है, जैसे वो गुम चुके हैं कई दिनों से नहीं दिख रहे हैं, वैसे यहाँ पर हमें वो फॉर्म नजर नहीं आ रहा है। चोला वीरंस के रंजीत, एम गौतम और प्रवीण का परतमिल रसन वापसी कर गए हैं। ये तय एक और एंकल होल्ड आया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया राइट कवर से, और पूरी तरह से डैश किया वहां पर रेडर को आयुष। विघ्नेश ने अपना पिछला रेड पॉइंट जो निकाला था वो कहानी पहले हाफ की थी अर्चित। 4 पॉइंट निकालने के बाद कहीं खो से गए, गुम से हो गए, और इनको ढूंढे से भी नहीं मिल रहा है लगता है ऐसा अपना फॉर्म। तब इनका वो इनिशिएशन एंकल होल्ड, हालांकि चटपटाहट दिखाई जरूर थी विघ्नेश ने, लेकिन तब तक वो अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए। तीसरा ऑल आउट चोला वीरंस की तरह टीम को एक ही मुकाबले में तीसरी बार सदर्न डर्बी के इस मैच में पलनी टस्कर्स ने पटकनी दी। तुम्हारे जरूर दर्शक मिस कर रहे होंगे वो बड़ी राइवलरी जो हम अक्सर पलनी और चोला की बड़ी राइवलरी देखा करते थे। और अजय मुथैया वो कहा कि ठीक है, आपका जन्म दिवस का उपहार हो चुका है, अब अंतिम 6 मिनट के लिए थोड़ा सा मणिकंदन को मौका दीजिए। मणिकंदन सुब्रमणी पिछले मैच में हाई-फाई इस खिलाड़ी ने बनाया था, हालांकि अच्छा कार्य पलनी टस्कर्स से यहाँ पर नजर आया। अजय मुथैया 2 टैकल पॉइंट उन्होंने अपने नाम किए। 36-14 आयुष, देखिए 7-8 अंकों की सिर्फ लीड थी यहाँ पर, जब 12 शायद 8 मिनट का खेल हो चुका था, आप कह रहे थे दूसरे हाफ का, यानी कि उसके बाद अगले 7-8-10 मिनट में पूरी तरह से मैच बदल गया, जज्बात बदल गए। अय्यप्पन ने जरूर इस बार अभिमन्यु को बाहर की तरफ रास्ता दिखलाया है। अभिमन्यु ने भी अंदर बाहर का खेल आज देखा है पलनी टस्कर्स के लिए, उन्होंने अच्छे डिफेंस करा भी है, और एक आध कुछ गलतियों के चलते उनको बाहर भी जाना पड़ा, लेकिन क्योंकि पलनी टस्कर्स ओवरऑल एज ए टीम आज के इस मैच में अच्छा परफॉर्म करके दिखाई है। स्टुअर्ट ने 8 पॉइंट निकाले, मुकेश को भी वहां पर पॉइंट मिलेंगे, लेकिन क्या ये डैश सक्सेसफुल है? रेडर सेव करार दिया गया, चोला वीरंस के डिफेंस में से फिर चूक हुई है। वो राम कुमार, ये बिल्कुल अच्छे दृश्य नहीं है, ये बिल्कुल अच्छे दृश्य नहीं है पलनी टस्कर्स के लिए। राम कुमार वहां पर मौजूद है, हमारे फिजियो पार्टनर जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी से जल्दी वहां पर निवेदन करेंगे, जल्द से जल्द राम कुमार को यहां पर उठाया जाए। निर्णय आना शेष बचा है। अमर वर्मा साहब, मोहन गौड़ा साहब वहां पर वार्तालाप कर रहे हैं। जी हमारे फिजियो पार्टनर जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी तुरंत आ चुके हैं, शायद वो मैजिकल स्प्रे मारा जाएगा। कहाँ चोट आई है आयुष, हम रिप्ले में देखते हैं और निवेदन करेंगे इफ पॉसिबल। हमारे ईवीएस ऑपरेटर राम हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो रिप्ले दिखा दें। जी बिल्कुल आया है वो रिप्ले। यहाँ हल्की सी वो नी क्या बैंड हुई थी, उसके बाद ये डैश आया, जरूर अपने हाथों से वहां पर था आयुष, कहाँ लगा कि हल्की सी चोट आ गई थी उन्हें। मैं अपने दिमाग के घोड़े जितना तेज दौड़ा सकता था मैंने दौड़ा लिया अर्षित, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि किधर वो उनको निकल आया था, लेकिन रेडर को आउट दिया है, ये सही निर्णय। वो उन दौड़ते घोड़ों के बीच में एक जो घोड़ा है वो इसी के ऊपर दौड़ रहा था कि वो रेडर को सेफ कहां दे दिया गया। मैं इंजरी कंसर्न से पहले ये देख रहा था, क्योंकि फिजियो पार्टनर्स के ऊपर तो मुझे भरोसा है कि वो होना ही था। ओके, पांव आया जरूर था, लेकिन दूसरा पांव क्योंकि हवा में, उसी के चलते चोला वीरंस के डिफेंस को पॉइंट मिलेगा। अय्यप्पन 3 पॉइंट इस खिलाड़ी ने रेड लगाते हुए निकाले हैं, फ्लाइंग किक लगाने की कोशिश कर रहे थे। उड़ता पंजाब मूवी देखिए, आज उड़ता अय्यप्पन भी देख लिया। क्या बात है, एक्रोबैट सिखाया था
और अय्यप्पन एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट वाले रीडर हैं, उनके पास बहुत ही क्वालिटी एस्केपिंग स्किल्स हैं, इनकी स्फूर्ति बहुत अच्छी है और जो फ्लाइंग अपनी किक्स वहां पर दिखलाई थी, क्या हम उस रिप्ले को वापस देख सकते हैं? और उस रिप्ले में अगर देखेंगे तो उनकी वो किक मैं देखना चाहूंगा, यहाँ जरूर फ्लाइंग हैंड टच नजर आया है, हम चाहेंगे उसे कमाल या फिर कैसे भी हमें जहां मौका मिलेगा। और उन्होंने दोनों पैर उनके हवा में थे और लगभग ऐसा लग रहा था कि हवा में स्ट्रेच कर रहे हैं, हवा में स्ट्रेच कर रहे थे दोनों लेग्स के साथ आयुष वहां पर। डबल किक का एग्जीक्यूशन कर दिया हवा में ही, और उसी के चलते उन्होंने जिस खिलाड़ी को बाहर किया था अयनातन, उन्होंने इनका शिकार पहले हाफ में किया है। तो हल्की हल्की सी राइवलरी जो बिल्ड होती हुई नजर आती है वाईकेएस में, वो देखते ही बनती है। चोला वीरन फिलहाल 17 पे 36 के ऊपर पल्ली टस्कर से ये मुकाबला चोला वीरन से दूर जा चुका है। सिर्फ औपचारिकताओं का खेल पल्ली टस्कर्स की टीम निभा रही है। स्टुअर्ट आए, अपना समय लिया और फिर एम्प्टी हैंडेड वापस चले गए। सब्स्टिट्यूशन पल्ली टस्कर्स की तरफ से। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पल्ली टस्कर्स की तरफ से, और कुछ खिलाड़ियों को बाहर बुलाया जाएगा, कुछ खिलाड़ियों को फिर से एक बार मैच प्रैक्टिस। अच्छी सोच पुरुषोत्तम को भी देखिए। आयुष एलेवरसन साहब अब धीरे धीरे ऑन कोच नोट बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें दिवाकरन साहब की आदत थी, इसलिए एलेवरसन साहब को एकदम मुकाबले लगे वहां पर एडजस्ट होने के बाद उन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने विंटर एडिशन में भी अपनी टीम को लीड किया था, देखिए हर प्लेयर को आज मैच प्रैक्टिस दी है। जरूर यहाँ मुकेश कन्नन ने क्या किया शायद ये समझ से परे था, और ये होता है जब आप स्पीड दिखलाते हैं। अय्यप्पन अच्छा कार्य करते हुए स्पीडी रेडर हैं और बहुत ही अच्छी तरह से 4 या 5 या 6 के हाउस में पॉइंट ला रहे हैं। मुकेश क्या कर रहे थे? बड़ा साधारण डिफेंस उन्होंने दिखाया, फ्रीज होके खड़े थे, दोनों ही पांव के बीच में वो स्पेस था, बॉडी बिल्डअप जो था वो एकदम स्ट्रेट था, और उसके बाद में वो टच बड़ी आसानी से उन्होंने कांटेक्ट कर लिया। पूरी बॉडी के साथ अटैक कीजिए, यदि आपको रोकने का अटेम्प्ट करना है रेडर को, तो फिर वो हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए। वो हाफ हार्टेड नहीं होना चाहिए, और थोड़ी सी स्क्वाट की पोजीशन में थे आयुष वहां पर, वो यानी कि पूरी तरह से वो वेस्ट होल्ड की पोजीशन में नहीं थे, उनके नी थोड़े से बैंड थे, स्क्वाट की पोजीशन में थे। वो शायद पहले सोच रहे थे कि डबल थाइस के लिए जाया जाए, बट उसके बाद उन्होंने बैक होल्ड के लिए गए। अय्यप्पन देखिए अब ये अपने आप को मोमेंटम प्रदान कर रहे हैं आने वाले मैचेस के लिए। अगर इस सुपर टैकल से भी बच के आए, स्पीड अच्छी है, थोड़ा सा डीप में अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए जर्क नहीं करा पाते हैं, थोड़ी सी इन स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा कि जब इन पर कोई अटैक करे तब कैसे बचे आयुष। एस मणिकंदन की इस बार शानदार डाइव, और अय्यप्पन यहाँ अपने आप को नहीं बचा पाते हैं जब कोई उनके ऊपर अटैक करता है। मणिकंदन ने डबल एंकल होल्ड किया, और ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। जब आप दोनों ही एंकल्स के ऊपर धावा बोल देते हैं तो रेडर के पास में मोमेंटम के नाम पे कुछ नहीं बचता और वो आसानी से वापस जा नहीं पाते। जब पन्नी टस्कर्स की टीम के अंदर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारा कंपटीशन है, उसी बीच चोला वीरन्स की तरफ से वो बैक होल्ड जो शायद खारिज जा सकता है, नहीं, रेडर आउट दिया। मोहनदास को एक और सफलता, कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर से चेन तोड़ के एक और अटैक, और ये मन सी मुस्कान बहुत निटोरियस थी ये मुस्कान अर्शित। मंद सी मुस्कान मोह के धागे, बट यहाँ देखिए आप कैसे वेस्ट होल्ड के लिए गए, बैक होल्ड के लिए बिल्कुल सोलो टैकल था जो मोहनदास विश्व मोहन ने एज ए डिफेंडर अच्छा कार्य किया। That's what we are talking about अय्यप्पन। जब कोई आप पर अटैक करे तो आप कैसे बच पाए। इस बार तुरंत अपने एरर्स को रेक्टिफाई किया अय्यप्पन ने, जानते थे मणिकंदन एक बार फिर से उनके ऊपर ड्राइव लगाएंगे, तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से इस बार बचाया, और अय्यप्पन की निगाहें बिल्कुल राइट कॉर्नर पर थी। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, ऐसा करना बहुत जरूरी है। आयुष हम यही चाहते हैं कि युवा खिलाड़ी सीखें और वो गलती वापस न दोहराएं जो पहली दफे गलती कर आए हैं। एक बार आपने की तो वो गलती है, बार बार उसे दोहराए तो वो गुनाह है। गलती की फिर भी माफी मिल जाती है, गुनाह को किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता। पन्नी टस्कर्स अपनी गलतियों को सुधार रही है, लेकिन चोला वीरन्स बार बार वो गुनाह कर रही है। 18 अंकों का ये फासला जो पन्नी टस्कर्स के पक्ष में है। आखिरी 25 सेकंड का खेल यहाँ खेला जाना बाकी। विसल बजी है, क्या कोई सब्स्टिट्यूशन है? नहीं, पन्नी टस्कर्स ने टाइम आउट की है मांग। टाइम आउट मांग रहे हैं, शायद इसलिए कहने के लिए मैं बेंच पर बैठे-बैठे थक गया। 20 सेकंड நின்னுட்டு அப்புறம் போனோனே பக்க வைக்காத 30 செகண்ட் बचे, ज्यादा कोई गलती नहीं करनी। ஒண்ணு எது பண்ணா ஒண்ணு யார் பிடிக்காது, அவனா தொட்டு போட்டோம், எண்ட் லைன் ஆயிராதீங்க। और आयुष अभिमन्यु, या जी अर्षित, जी गो ऑन। मुझे लगा कि चोला वीरन्स के कोच ने शायद यही कहा होगा कि कैसे भी पल्ली को ऑल आउट कर आना है, या आपको एटलीस्ट मैच विनिंग कॉन्फिडेंस नहीं बट मैच मेकिंग कॉन्फिडेंस दे सकता है। मुझे तो लगा कि जिस फॉर्म से अभी खेल रही है चोला वीरन्स की टीम, अय्यप्पन को कहा गया होगा कि भाई वो सुपर टैकल मत करवा के आ जाना तू जाते जाते। 2 का डिफेंस है, पुरुषोत्तम के सामने वो अपने फ्लैंक को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एंगल को थोड़ा सा चेंज किया, अभिमन्यु की तरफ गए, पुरुषोत्तम को टच मारा। क्या अभिमन्यु का भी शिकार है? क्या वो भी मैच से बाहर है? नहीं, सिर्फ 1 पॉइंट दिया गया।
पलनी टस्कर्स आखिरकार इस मुकाबले के अंदर बिना ऑल आउट के सरवाइव कर गई, मुकाबला भी अपने नाम ले जाएगी। क्या क्रॉल करते हुए यहाँ पर अय्यप्पन देखिएगा, अपने चारों यानी कि 2 हाथ 2 पैरों का इस्तेमाल किया है। देखिए बिल्कुल आयुष, आपको याद होगा कि हम बचपन में घोड़ा वहाँ खेला करते थे, जरूर किसी न किसी बच्चे को हमारे पीठ पर बिठाया करते थे, या फिर हमारे घर के जो बड़े होते थे उनके पीठ पर बैठा करते थे, घोड़ा खेला करते थे। और वैसा ही अय्यप्पन ने किया, बहुत तेजी के साथ क्रॉल करते हुए मिड लाइन की तरफ गए। बट पलनी टस्कर्स इस मैच में एक बार भी ऑल आउट हुई नहीं और चोला वीरन्स को 3 बार ऑल आउट किया। वहीं पर ये मैच पूरी तरह से बना। आज फिर से डिफेंस में जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठे थे, आज उन्होंने कहीं ना कहीं निराश किया है। एम गौतम की हम बात करें, 0 टैकल पॉइंट्स अय्यप्पन रेडर ने तौर पर अच्छा किया, 2 टैकल पॉइंट मोहनदास के खाते में, वहां पर तो नहीं, क्षमा कीजिएगा, विश्व मोहन के खाते में 3 टैकल पॉइंट्स, 3 मनोगर, 3 प्रवीण कुमार INR, यानी कि 3 खिलाड़ियों में बटे 9 टैकल पॉइंट्स आयुष। और स्टुअर्ट सिंह 8 रेड पॉइंट्स, 4 रेड पॉइंट्स। एस मुकेश कन्नन पशुपति ने ज्यादा रेस लगाई नहीं, पर 3 रेड पॉइंट्स उनके बेहतर थे। और आयुष, आज अगर मैं बात करूं तो पलनी टस्कर्स के 9 खिलाड़ियों ने स्कोर किया है, इसीलिए पलनी टस्कर्स एक टीम कॉम्बिनेशन वाली टीम कहा जाती है और एक ड्रीम टीम के तौर पर अच्छा कर रही है। हर्षित, ऐसा होता है ना कि जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ आपके प्लेयर्स के बराबर हो और आपको वो बर्डन हो कि किस प्लेयर को खिलाए किस प्लेयर को नहीं खिलाए, तो इट्स अ गुड बर्डन टू हैव। एंड पलनी टस्कर्स की टीम की तरफ से वही तो है कि उनके हर खिलाड़ी के अंदर वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है, लगातार दिखाते हुए भी नजर आते हैं। जब जिसको जहां मौका मिल रहा है, कोच जब सब्स्टिट्यूट करके भेज रहे हैं वो बुना रहे हैं। ये वो सुपर टैकल से एक एग्जांपल भी मणिकंदन ने पेश करा था कि भले आप उनको स्टार्टिंग 7 में जगह ना दे, लेकिन जब टीम को जरूरत होगी वो आएंगे, फायर भी करेंगे। सुपर टैकल की सिचुएशन के अंदर वो आखिरी पॉइंट निकालने के अंदर अय्यप्पन ने सक्सेस हासिल की। इनको मुझे लगता है हर्षित अपना आर्क थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जब ये रिटर्न करते हैं तो लॉबी के बहुत ज्यादा पास मत जाइए, कभी सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि आप टच ना लगा पाए तो लॉबी के चलते बाहर हो जाएंगे। मैच की समरी, मैच नंबर 90 समाप्त हो चुका है। गो ऑन हर्षित। जी बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा कि अपन थोड़ा सा स्पीड पर कंट्रोल भी करना पड़ेगा, अन्यथा इंजरीज क्यों होती है। चोला वीरन सबसे बड़ा इंजरी का कंसर्न रहा है कि जब आप अचानक से एंटी ब्रेक लगाते हैं ना आपकी बॉडी में, तो एंकल ट्विस्ट होने का वहां पर पूरी तरह से जरिया रहता है। बचाइए 9 टैकल पॉइंट, सिर्फ 5 टैकल पॉइंट आए चोला वीरेंस के लिए दूसरे हाफ में, और पलनी टस्कर्स के लिए वहां पर 7 आए थे। तो वहां पर पूरी तरह से मुकाबला बदला। रेड पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किए स्टुअर्ट सिंह, 8 रेड पॉइंट, 15 रेड, एक सुपर रेड थी, स्ट्राइक रेट लगभग 53 की। तो ये स्ट्राइक रेट बयां करते कि आज स्टुअर्ट और पलनी कितना अच्छा खेले। यानी कि पलनी टस्कर्स के, अक्सर आयुष हमने कहावत सुनते हैं हिंदी में कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और, तो पलनी टस्कर्स के दिखाने की यानी कि सब्स्टिट्यूट बेंच जो है वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी इनकी स्टार्टिंग 7 है आयुष। बिल्कुल है। वहीं दूसरी तरफ मोहनदास, आज इस खिलाड़ी का दिन थोड़ा अच्छा गया, चेहरे के ऊपर मुस्कान आई जरूर थी। हालांकि टैकल पॉइंट आपको सिर्फ 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी टीम का परफॉर्मेंस जो यदि देखा जाए उसके हिसाब से इसे ठीक ठाक अच्छा खासा माना जाएगा। 5 टैकल इनिशिएट किए थे, 1 सुपर टैकल के अंदर भी इन्वॉल्व थे, और उसके बाद वो चेहरे पे वो मुस्कुराहट। टैकल का सक्सेस रेट लगभग 60%। पॉइंट्स टेबल अंक तालिकाओं में क्या परिवर्तन हुआ है? सिंसोनिक बॉटम के ऊपर थी, वो अभी आपको वही नजर आएगी। वही मुकाबला खेलती हुई पलनी टस्कर्स टॉप 3 के ऊपर आ चुके हैं। 3 मुकाबले उन्होंने जीत लिए हैं, 7 मुकाबले, सबसे ज्यादा मुकाबले अभी तक खेले हैं तो वो इन्हीं 2 टीम्स ने खेले हैं। चोला वीरन्स 7 मुकाबलों में 3 जीत के बाद, 4 मुकाबले गंवाने के बाद, स्कोर डिफरेंस के अंदर एक बड़ा फासला पाने के बाद अभी आपको छठे पायदान के ऊपर नजर आ रही है। लेकिन नीलगिरी नाइट्स वो जब मैचेस खेल रही है लगातार छाल रही है। इस राउंड में एक भी मुकाबला गवाया नहीं है। एक्शन में आने वाली है कुछ समय में, सिंसोनिक से टकराने वाली है कुछ समय में। सिंसोनिक एक ऐसी टीम जो बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल है, उनका मुकाबला है टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल। टेबल टॉपर्स बनाम वो हल्के से फ्लॉपर्स। कहीं जाइएगा मत, बने रहिए फैन कोर्ट पे।
तो इस जीत के साथ पल्ली टस्कर्स ने दर्शा दिया है अपना शानदार खेल और पहुंच गई है टॉप 3 में। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ मैच नंबर 90 of Yuva Kabaddi series summer edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners first. Our broadcast partner Fencode, fantasy partner Dream 11, our future partner in the post match presentation, the captain Mr. Sujit Sir and Mr. Kishore for the first award. And ये मुकाबला जिस अंदाज में बड़ा खेला गया था पल्ली टस्कर्स और चोला वीरन्स के मध्य 38-21 से इस मुकाबले को जीता। शुरुआत में लग रहा था कि क्या चोला वीरन्स कभी भी बाउंस बैक कर सकता है, बट पल्ली टस्कर्स ने रोटेशन पॉलिसी के तहत दर्शाया कि ये उनकी टीम बड़ी जीत की तरफ बढ़ चुकी है और इस मुकाबले को अपने नाम किया विद 17 ह्यूज पॉइंट्स मार्जिन। तो आइए पहले अवार्ड की तरफ चलते हैं जो है बेस्ट रेडर ऑफ द मैच का, जो जाएगा पल्ली टस्कर्स के स्टुपेंडस स्टुअर्ट सिंह जिन्होंने प्राप्त किया आज 8 रेड पॉइंट्स। और आइए देखिए इनके शानदार प्रदर्शन को। And for the next award, we would like to request Mr. Vikas sir and Mr. Rush sir, please join us again from the team of Road to Trial Club. तो ये अवार्ड की अगर हम बात करें जो है बेस्ट डिफेंडर ऑफ द मैच का, ये जाने वाला है चोला वीरन्स के एक ऐसे खिलाड़ी को। एक सरप्राइजिंग नाम है, बट एज अ लेफ्ट कॉर्नर धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान को बनाना शुरू किया, बट उनका प्रीमियम वर्क है एक शानदार रेडर। वो रहेंगे मोहनदास विश्वमोहन। 3 टैकल पॉइंट जिसके अंदर इंक्लूड था एक शानदार सुपर टैकल भी। And now the time for the Kabaddi Kamal of the match। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिस्टर विनोद सर एंड मिस्टर अचल सर से कि प्लीज सर आप हमें ज्वाइन करें द प्रेजेंटेशन। ये अवार्ड की बात करें तो पल्ली टस्कर्स जब इन्हें फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आज जयसूर्य नागराजन ने शुरुआत नहीं की, वहां पर राम कुमार शुरुआत में नहीं थे। इस खिलाड़ी ने कहा कि मैं हूं तो किस बात की फिक्र है, शानदार सुपर हिट लगाई और फ्रॉम द वेरी फ्रंट अपनी टीम को लीड किया। वो थे स्टुअर्ट सिंह। So thank you so much all the high performing guests all are presented here in the post match presentation। इस presentation से इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ बेहद जल्द।
The last day of the booster round, and one team unbeaten in the booster round, and one team still not found that first victory in the booster round. This is David versus Goliath at match number 91, because Nilgiri Knights have been the unbeaten team, and Sin Sonics are the team that has not seen that taste of victory yet in the booster round. And Harshit, can we have both the teams on the mat for this epic clutch? Because Sin Sonic need a win for sure. The top versus the bottom. इस फाइट में देखते हैं कि क्या कोई अपसेट दे पाएगा सिंध सोनिक का खेमा, बट तैयारी पूरी है जज्बे के अंदाज में दोनों ही टीमों को मैच पर बुलाने का, अपनी विंस की कंसिस्टेंसी और विजयी रथ पर सवार विरासत में एक और जीत लेने आ रहे हैं नीलगिरी Knights. So one last time in this edition, here I am inviting the Yellow Brigade, who are likely to play today as a brigade. Sin Sonics! I would have really wanted Sagar Kumar to at least play this last match of the summer edition, because he was really eager, he was really hunger, and he said, I will make sure Sin Sonics at least win a match. But unfortunately, because of the injury, he has to stay out of the last match as well for the Sin Sonics. So they will be clashing up against a team which has not seen a defeat yet in the booster round. Wonderful run in the survival round as well. And then in the last day, they will also be trying to experiment with the bench strength as well. And that really is evident, because Yelumalai Murthy and Abhi Kumar comes in for the right corner defense. On that right corner, there has been a change. Santosh Srinivasan has been rested for this match. Harish makes a comeback. Right, the Chennai lad, he's also a fisherman. He's making a comeback, Harish. That's nice, good news. As Manikandan Sundlamani and Manikandan Nesamani, that's an unchanged cover combination. Surya Selvam and Kesavan Raja will be sharing the responsibilities of raid with Harish as well. Ajay Ananda Krishna, Marimuthu Selvam has been rested today. Balagamadi Manikam will come in whenever the raiding department needs him. And Santosh Srinivasan, the proper right corner, also been rested by Rajaram, the coach. And along with me, which is very nice to invite Navneet next to me. Hi Navneet. शुक्रिया नवीन। और सिन सोनिक्स की बात करें, यहाँ पर मध्य में राहुल गोपे हैं 11 नंबर की जर्सी में, राइट कवर और लेफ्ट कवर पर है रितेश कुमार, और बाईं तरफ है अंगद कुमार ठाकुर। राइट इन और लेफ्ट इन की बात करेंगे मोनू कुमार और विनोद कुमार। कॉर्नर्स पर रहेंगे दाहिने तरफ हरिंदर और बाईं तरफ है राजू सिंह। इसके अलावा प्रिंस कुमार रॉय, प्रेम मंडल, विकास शर्मा, रोहित सिंह और अंशु सिंह, ये है बेंच पर, जब जरूरत होगी तो आएंगे। Yeah, very much, and whenever it's needed, they will obviously come in, because Upendra Kumar might need a lot of substitutions. But top 3 Raiders and top 2 are not available to probably play out there, as Gagan Glorious God has gone for another trial. Sanskar, he wanted to play the match with all lovely matches and lovely points. He's done well for 148, and nice to see Jayasuriya Nagarajan coming in at that third slot, where Durgesh Kumar will be losing out that spot. But nevertheless, they will be going ahead and playing tomorrow as well, the challenger round, and the top 3 defenders here, Navneet. जी हाँ, टॉप 3 डिफेंडर्स की बात करेंगे। लोकेश जयसाम घोषलिया 21 मैच 60 पॉइंट, अंकित जाट की बात करेंगे 21 में से 55, और राजेंद्र भाकर 19 मैच 48 पॉइंट्स। तो ये है टॉप 3 डिफेंडर्स इस एडिशन में। And there's a lot of things that has to be spoken about for the Nilgiri Knights, as Sagar Panchal flips the coin over. Harish has won the toss. He takes it, and that is nice to see Harish actually coming back after a long break. And he's from Ramanathapuram, and of course he will be the man to watch out for. And very nice, where he
is the darling of the team, the original captain Harish, 56 rate points, was out with an injury for a while as he has won the toss. And Navneet, I will be sharing a lot of secrets with the Nilgiri Knights' boys that I had to actually speak and get them to talk from their heart. But today, Raju Singh needs to really fire from his heart, Navneet. जी हाँ, 18 मैच 124 पॉइंट और रेट स्ट्राइक रेट की बात करेंगे 56.36 और हमें इंतजार रहेगा उन सीक्रेट्स का जो नवीन हमसे शेयर करेंगे ड्यूरिंग द मैच. Yeah, very much. First to start off with the captain Harish, who's made a comeback. Just 2 losses for the Nilgiri Knights that just came in the survival round. That's it. And in the booster round, they've got 6 out of 6. So this is the 7th match. They want to finish it nicely. And Harish's father actually works in Dubai as a crane operator. And the entire family in Mulli Munai, that's a place there in Mulli Munai. It's a district's place. So would Marimuthu be rested today? Yeah, right. As Marimuthu has been rested. Arohi, yeah, thanks for that lovely question. You thinking like Rajaram as well. Marimuthu, yeah, he's rested because Krishna has made a comeback. And Mullimanai, his father is a fisherman basically there, Navneet, Harish's father, because he works in Dubai as a crane operator. And most of his family members are all either in Sharjah or in Dubai working in various sectors because his father's brother as well is Chitappa, his Chacha is what we call. So he is also in Sharjah, Dubai, and I'll share more details about what he does throughout the entire night, disturbing all the guys also in the room. Since Sonics, 14 losses, Navneet, not looking good at all. एब्सोल्युटली. और आप 30 में से 14 हार जाएंगे तो बहुत ही खराब स्थिति है. और ये एक और क्वेश्चन है नवीन. Yeah, Zoravar asks, is there any reasons for the Sonics to get their defense together? Yeah, today being the last day, that defense has been the problem for them. For the unsuccessful tackles, the number of unsuccessful tackles by the Sonics are highest compared to any other team. And they have struggled. They have really struggled big time. And even when Sagar was there, Deepak Singh was a very nice prodigy. He could have been a very nice inclusion in the team. But he also showed some initial glimpse of making sure he wants to go there, but does not have the consistency. I was really impressed with Deepak Singh, with the defense, with the both side raiding skills and everything. But Harendra Paswan and of course everybody else, Angad Thakur and everybody else have really let the Sonics down. But today, can they spring up a surprise? Let's see if this last match for the Sonics can give some joy to them and their supporters. Let's get to this countdown and get this match underway. The toss was won by Nilgiri Knights as Akshay Desai gives the whistle. I think to the Sonics' raider, it's not Raju Singh who's starting. He wanted Raju Singh to start off because yesterday he had such a wonderful run. And today Binod Kumar is starting off. But yeah, just going back to the nice right corner there. Abhi Kumar on that right corner, but Yelumalai Murthy from that left corner has a problem in going ahead with a nice block. Misses out. जी हाँ, बिल्कुल वहां पर विनोद ने धक्का मार करके 1 पॉइंट सोनिक्स को दिला दिया है. के हरीश हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो रेड लगाने गए हैं नीलगिरी नाइट्स की तरफ से. 10 सेकंड हो गया है और देखिए पूरे 6-7 खिलाड़ी हैं यहाँ पर. बोनस खुला हुआ है और के हरीश क्या यहाँ पर नीलगिरी नाइट्स के लिए खाता खुलेगा, ये देखना है. He's from Ramanathapuram, that Mavatam, that district where Mullimanai is the place's name, from Ramanathapuram. Very famous, very close to the ocean as well. And he loves fishing. Yeah, as I said, his father is a fisherman. They have a boat. It's not a speedboat, it's a normal boat. And whenever his father gets a time from the crane operating jobs in Dubai, he comes around. Because he does not want to miss out his culture. Jersey number 6 out. Another point that's gone in for the Sonics. Both the corners now taken off. बिल्कुल दोनों कॉर्नर्स चले गए हैं और अब मछलियों की बात कर रहे हैं नवीन.
और पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से मछली पकाई जाती है, आप चाहेंगे नीलगिरी की बात कर रहे हैं, यानी कि आप तमिलनाडु और केरल की बात करें, बेहद ही टेस्टी। अगर केरल की फिश फ्राई की बात करें और वही बंगाल, वहाँ पर माछे झोल बनता है। तो जो हमारी कल्चर है, वहाँ की विविधता है, वो देखने को मिलती है। 1 point Nilgiri Knights. और उस Jersey number विविधता 66 में out. first point for Nilgiri Knights. Kesavan Raja from Salem. And you know what, Navneet? I've told this to many others, and of course they know what Kesavan Raja's story is. In Salem, he used to just stand in the crowd. He used to just sit in the crowd and clap hands for the kabaddi players who were playing there, Kesavan Raja. And today, he's making others also clap for him. What a journey, fabulous journey. Yeah, he was speaking about fish and his delicacies. One of the best proteinaceous fish without any fat content, without any cholesterol content. Yeah, wonderful if you're a seafood lover. Surya Selvam now comes in. And you know what, Harish, the captain, is also half fisherman. That's what he calls himself. But Harendra Paswan, that was 2 a half-hearted points, Nilgiri attempt. Knights. Jersey number 12 and 7 Never out. ever got around for the double thigh hold. Raju also goes out. Raju Singh today wanting to support, I think, in the defense. Comes around from that left corner. And he's forgotten that he has to raid. Not a right way. Not a right way. And yeah, You so have to Harish. So even though he likes to go out there and fish in his boat, he's not taken anybody else 1 point apart from Sony. Surya Selvam, Jersey who's number just been 77 out. handcuffed. He's not taken any of his team members to his place. That is a big complaint on Harish by all the other players. That's a lovely back kick from that Monu Kumar. He goes in and kicks him. So Harish, I wonder why he's not taken anybody apart from Surya Selvam. ये बिल्कुल यहाँ पर केसवन राजा आए हैं। 3 और 3, 5 का डिफेंस है और इंतजार कर रहे हैं। देखिए डिफेंस यहाँ पर बहुत अच्छा खेल दिखा रही है, क्योंकि बोल रही है डिफेंस कि आप अंदर आइए केशवन, अगर आपको पॉइंट चाहिए। और यहाँ पर क्रॉस कर दिया है लाइन। 2 points Nilgiri Knights. Jersey number 15 and 11 out. Upendra Kumar is definitely not happy with this. See, this is the problem. As we had that question also, isn't it? See, can the defense coordinate together? No, if they can, they can't make such errors. You went in for the single thigh hold. Then what was Rahul Gope thinking? Angad Thakur actually going in for an advanced tackle, very hasty. Now look at that. Oh my God. Vinod Kumar goes under the chain of Nesamani. 1 point Manigandan Sony. Nesamani Jersey number actually 66 overrunning out. the raider. ये कमाल का खेल यहाँ पर विनोद ने दिखाया है और ये बहुत ही शानदार डुबकी है, बहुत ही शानदार। जिस तरीके से उनके बाएं आर्म के नीचे से निकल गए, काबिले तारीफ। And that small pause, every time, either a raider or a defender, Navneet, if they have that small pause, it makes world of good. But not on the defense line. Running and touch. He's once again got a touch point. Harendra Paswan. 1 point on that Nilgiri right corner has Knights. to Jersey go number back. 12 out. So that small pause we keep speaking about, it Substitution. actually allows you to Sinsoni. decide Please come. in a split second Number 18 in. what you 66 need to out. do. But Red. Harendra Paswan couldn't manage it out as Prince Kumar Roy comes in. Yeah, और और यहाँ पर मोनू पकड़े गए हैं। पेनाल्टी किक जब फुटबॉल में लगाई जाती है 1 तो point कभी Nilgiri Knights. जो किक करते हैं फुटबॉलर वो भी स्मॉल पॉज लेते हैं। कोई कोई क्रिकेट में बॉलर्स रहते हैं वो छोटे से पॉज लेते हैं। तो ये जो पॉजेस का जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्पोर्ट्स में और जीवन में भी। जब आप मुश्किलात में होते हैं तो कभी थोड़ा सा रुक जाइए, कभी ठहर जाइए और वो पॉज आपकी जिंदगी में आपको सही जगह पहुंचा सकता है। Yeah, very well connected. Superb. And also Prince Kumar Roy holds out his balance in the previous attempt. Harish gets a touch point after a 1 long, point long Nilgiri time. Knights. Jersey he's number 3 out. Still not 100% fit. I think he needs more fishes to be eaten. But you do get fish in Mysuru, but not like what he gets back home there, I think, in Mullimanai. But nevertheless, he's got that 1 point, which is really important. Now, Prince Kumar Roy, last man standing. Can he save the Sin Sonics from an early all-out? And he does! He does very, very well.
Abhi Kumar Red save. on that right corner still 1 needs point to get the Sonic. feel of the match very Jersey number nicely. 6 out. And for some numerology sake or some name sake, Nilgiri his- Knight. his Jersey full number name 6. is Abhishek. Green card. Jersey And pulling. No Abhi jersey Kumar pulling. gets the green card. No, astrology or namology working there for him with the green card. He pulled the jersey there. या प्रिंस कुमार रॉय को वहां पर सफलता मिली। सुपर टैकल यहाँ पर है सिनसोनिक्स की तरफ से, एक तरफ है प्रिंस और दोनों खिलाड़ी यहाँ पर आउट हो जाएंगे। 2 4 plus 2 पॉइंट 4 मिलेगा points. नीलगिरी Nilgiri Knight. नाइट्स। All out यहाँ आगे Sonic. निकल गई है। When there are two raiders, you could not even have substituted Olive. anybody because the whole defense also is not given confidence to Upendra Kumar, Prince Kumar Roy, and Raju Singh. Both were raiders in that super tackle attempt, and the less you speak about that tackle attempt, the better. Yeah, because it was that early all-out that was avoided by Prince Roy, but then after that, the dreadful all-out, the inevitable came across. And nice to see, Raja Ram, the coach, actually giving away a lot of opportunities for Abhi Kumar and Elumalai Murthy, because he knows that strong left corner is Velavan Muruganandan. He'll come in, and that right corner, Santosh Srinivasan. Those are the set corners for Nilgiri Knights, and he just wants the others to also be in that match momentum. K. Harish, nice, because the way he's come up is just phenomenal. Just being playing kabaddi from a very young age as well, because he's also very jovial, very funny, but that no joke Red on out. that. Abhi Kumar 1 point strong Nilgiri ankle Knights. hold, gets it off. That's the Humpy Heroes team, the Kannada team. They're ready for the next match. या, और क्या शानदार तरीके से उन्हें बाहर फेंक दिया गया है। यहाँ पर देखिए 5 और 13 का स्कोर। केशवन राजा आए हैं, 6 का डिफेंस है, और देखिए 3 चेन बना करके जिस तरीके से खड़े हैं, क्या केशवन इस चेन को यहाँ पर देखिए एकदम फ्लोटिंग चल रहा है उस लाइन से जहाँ पर बोनस मिलता है। क्या बोनस मिलेगा? टच पॉइंट जरूर मिला है, बोनस 1 नहीं point मिला है Nilgiri शायद। Knights. Jersey number 15 out. The spectator turned kabaddi superstar Kesavan Raja gets his long right hand on that right cover. Nice reach, very good reach. And yeah, that small pause we were speaking about. See, Kesavan also has that little small pause, and he actually foxes the right cover, making him think that he will not come towards him, but on that sudden change. But also, yeah, you spoke about the football penalty, but no, there is a penalty here from Elumalai Murthy Let us given say away. Not at 1 all point needed. Sonic. Comes Jersey in number from 2 that out. Theni district of Tamil Nadu. And I want to know one name in Hindi. Navneet, Elumalai Murthy, of course, his father is a farmer. And we spoke about what they grow in their fields. They grow avaraka. Avaraka is that big beans. The big fat beans sort of a thing. What is it called in Hindi? बिग बीन, किडनी Yeah. बीन को तो राजमा कहा जाता है, Bonus point Nilgiri Knights. जो रेड कलर के होते हैं, पंजाब में काफी खाए जाते हैं। Yeah, no, not that. That's the rajma, right? या No, I'm saying broad beans. Broad beans. It's green in color. Of course. Right corner. Wow, what is Let us say happening? 1 Abhi point Kumar, you Sonic. need to utilize Jersey this number 6 opportunity out. and make sure that Rajaram, your coach, has some confidence in you. The corners have been weak. Whatever Hey. the tackles that's been attempted, it's been wrong. They've not got the angle. They've not got the correct cover on the raider to stop him. It's been wrong there, Namit, as of now. जी हाँ, और आप बात कर रहे थे ब्रॉड बीन्स की, तो उसे कहा जाता है सेल। Oh, okay. I mean, I think that's very rare, isn't it? In the north, I don't think so. They eat that Bonus too much. point Nilgiri Knights. Yeah. मैं अगर आपको सही से बताऊं तो जो बैंगन होती है, बैंगन यानी ब्रिंजल, तो हाँ। आलू, बैंगन, टमाटर के साथ अगर सेम को डाल दिया जाए, यानी आप जो ब्रॉड बीन्स की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ही हाँ। टेस्टी लगता है। और यार। जो मेरा गांव है, विलेज, वो Let एकदम us say नेपाल बॉर्डर पर है। 1 point वहाँ पर ये Sonic. होता है। Jersey number 9 out. Oh, okay. That's nice. That's new. We have not heard about that.
as Sudalamani once again tries an advanced tackle on the single thigh hold. Vinod Kumar gets that easy point. Bordering near Nepal. Whoa, Navneet, I didn't know this. Which state and which district has Surya Selvam 1 gets point. another point Nilgiri on that Knights. right corner. Number 12 Yeah. out. Wait. बिल्कुल। और सेम की जो सब्जी है वो आपको पूरे बिहार में मिलेगी, लेकिन मैं अपने जिस गांव की बात कर रहा हूँ बिहार में सुपौल जिला आता है और बिल्कुल एकदम बॉर्डर पर है, नेपाल के बॉर्डर पर। आप आधे घंटे में वहां जा सकते हैं नेपाल। Lovely. Let us say 2 points. Lovely. Nilgiri Knights. Jersey number 15 Yeah. and 12 out. In half an 15. hour, there is 30 minutes, but Substitution. even before, Sonic. Please come. I think the first Number 20 minutes, 66 in. Sonics will be 11 out. probably all out for the second time. Right cover, right corner, Red. both being hand touched. As Ritesh Kumar and Narendra Paswan, they could not go back in time. Once again, zero coordination on that. But yeah, it's interesting to speak about your visits. I think you can even travel in a probably two-wheeler, but 1 that point. is a lovely toe Sonic. touch. Jersey number 2 out. Beautiful work. Yelumalai Murthy was not ready for the ankle hold. And Prince Roy shows his class. Yeah, that is good. So the raiding has not been an issue at all, Navneet, for the Sin Sonics in the summer edition. Entirely. Even if you see the survival round or here even in the booster round. The problem has been their defense. That's been their defense. And yeah, just speaking about your association or travel to Nepal. Have you traveled in two-wheelers? Have you crossed the border over there? I think it's a free border, right, as of now? जी हाँ, बिल्कुल। आप आराम से बाइक में जा सकते हैं और एक चीज वहां पर देखने को मिलती है, एक पुलिस का चेक होता है जिस ब्रिज से मैं क्रॉस करता हूं। और जैसे आप मॉल में एंट्री लेते हैं तो किस तरीके से आपको चेक किया जाता है, बस उसी तरीके से एक छोटा सा चेक होता है। और वहां पर अगर आप जाएंगे तो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरीके की चीजें लेंगे तो वो थोड़ी सी महंगी होती है, थोड़ा सा टैक्स ज्यादा होता है। बहुत बार क्या होता है कि वो चीजें भारत से ही जाती है, तो Correct. Yeah, correct. Oh, nice ankle hold on the right corner. First time Sonics are successful. 1 point in tackling Sonic. the Raider, and that's Surya Selvam. Their first tackle point, convincing one. I think Harendra Paswan went in for the single thigh hold, and then the left cover came in. Brilliant support from Angad Thakur as well. And Raju Singh also today playing like a defender. Does well to take care of the tangling hand. Yeah, that is very nice to know certain things. I'm sure, Navneet, I don't know if you have shared it with any other colleague of ours on the mic, but I am very curious to know. As I always say, your geographical knowledge is very nice, and that's a nice kick on Kesavan Raja 1 point from Sonic. Prince Kumar 1 Roy. defender out of bounds. Jersey Strong number 1 kick. out. Oh no, he's gone out of the end line. He attempted the kick, and Kesavan Raja couldn't control himself. इसी बीच फिर से एक बार यहाँ पर मैच की शुरुआत हो गई है। केशवन राजा के बाहर जाने के बाद के हरीश यहाँ पर आए हैं। नीलगिरी नाइट्स 18, सिन सोनिक्स 11, 5 मिनट 5 सेकंड का खेल यहाँ पर बचा हुआ है। और भले नीलगिरी नाइट्स यहाँ पर लीड पर है, पर क्या वो ऑल आउट हो सकती है? यहाँ पर लगातार नीलगिरी नाइट्स के खिलाड़ी आउट होते जा रहे हैं। 2 खिलाड़ी बचे। सुपर टैकल का मौका होगा अगली बार जब सिन सोनिक्स जाएगी। Correct. And Rajaram is now started to talk. Nice running dash from Ritesh. K. Harish, lack of match practice, and he did not see the right cover coming behind him, right behind him. He just blinded, showing his back to the defender. Very nice dash from Ritesh Kumar. Attacked K. Harish on the midriff, but that's a poor tackle attempt. Right, 1 what point is happening? Sonic. Nilgiri Jersey Knights. number 66 out. Initial lead, and you just don't expect this from Nesamani, do you? Manigandan Nesamani, very, very good. I think he fumbled on his own shoes. Yeah, he tripled on his own shoes. And Abhi Kumar comes in for the first raid of the Yuva Kabaddi series in his career. He's never been a raider. Has he got a point? Yes, he has. Come on, bonus plus Ritesh. 2 points. Nilgiri Knights. He's got a Jersey super number raid. 15 and 66 out. He's not only saved the Nilgiri Knights from an all-out, it's a super raid. Navneet, Abhi Kumar in his first ever raid. जी हाँ, सुपर रेड लगा दिए हैं और सुपर रेड का फायदा होगा कि 3 खिलाड़ी वापस मैदान में आ जाएंगे। अभी कुमार का ये शानदार रेड, that will give him a lot of confidence.
but Ritesh should have held back. They had a lovely opportunity to inflict the all-out. I mean, lovely is just a small number or a small comparison. They have a massive opportunity to inflict the all-out, and Abhi, with that confidence, still once again goes into raid. And this is good. This again will give a lot of confidence to Rajaram, saying whenever Abhi can raid, he can be utilized instead of a substitution on a raider. But just it is just one that has happened in I think the first raid. Now the defense of Sinsonics, very smart, does not give away any touch points. But I'm so fascinated always with Nepal, because I have a lot of friends also working in Mumbai from Nepal in the hotel industry. I mean, of course they work there, and my stay there has just made them closer to me. A wonderful place, and 100% one religion follower. I mean, the majority follows just that one religion. That's good to see as well. But what also actually bothers me, or rather concerns me, is Navneet, when they get along with someone else who has always a territorial issue with us, and try and raise voices against us. That actually concerns me a lot, because so many good things happen from us to Nepal. They'll have to just understand it's a long-term relationship that's mattering a lot. And this is Abhi Kumar, super tackle on the ankle Raider hold. out. Super And that tackle. was a do-or-die 2 raid points, pressure. Nilgiri Knights. Right, this is good. Abhi Kumar turning it around. जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर अभी कुमार पकड़े गए हैं, माफ कीजिएगा विनोद वहाँ पर पकड़े गए हैं. Do-or-die raid, Surya Selvam. Can the defense be quiet? Let them be quiet. That's it. That's more than enough. All right. I told them to just be quiet. No. Raider safe. I think he's got a super raid. 4+2. Oh 6 my point. God. Check that out. 5+2. What is this? Akshay Desai has 6 point. best number Nilgiri of Knights. fingers All to out show that. Sinsonic. Oof. This is a 4 touch All pointer in. and an all-out raid from Surya Selvam. This, I'm sure, our co-producer Mohit will put it across as the Kabaddi Kamal. 1, 2, 3, 4. That's it, gone. Raju Singh is not a defender. And I just said for the defense of the Sinsonic to stay quiet. That's all they had to do. It's a do-or-die raid pressure on Surya Selvam. And I'm seeing it for the first time, Navneet, that the referee is been under pressure for a lack of fingers. जी हाँ, और जब तक आपके पास 6 उंगलियां नहीं होंगी आप एक साथ नहीं दिखा सकते थे, या अगर क्रिकेट की भाषा में करें तो दोनों हाथों को अगर आप ऊपर दिखा देते तो 6 का वो इशारा एक माना जाता है, लेकिन आप दूसरे स्पोर्ट से वो कॉपी नहीं कर सकते, तो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने दिखाया. Yeah. Do you think Hrithik Roshan being there in the referee's position would have made a better choice? 6 fingers, 1 शायद could have. शायद, लेकिन वहां पर जो रेफरी का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है. Half time. Change the court. Oh, yeah. Referee's cost is put together all our payments. Everybody who's there in the Yuva Kabaddi series. I think, the whole month's payment would have just gone for one day. Nevertheless, Nilgiri Knights, as expected, are just stamping authority on the weak defense of the Sinsonics. Look at that, 21 raid points. And that shows how the defense have just given away points once again to the Nilgiri Knights. And we are trying to keep it together with stories of Nepal, Hrithik Roshan and everything. So yeah, stay tuned with us as we slip into a short break and come back soon.
Welcome back for the last day of the booster round here, where the Sin Sonics are actually playing their last match, and it has been a problematic match and problematic defense as always. That's been the issue whole throughout the summer edition. The survival round was good comparatively because they had the Chola Virans and of course the Kaziranga Rhinos struggling more than what the Sin Sonics did. But from the time they've lost Sagar Kumar, their regular raider and captain, the defense have been all over the place, and that also is another example why the Sin Sonics are struggling. And almost, of course, I think they have already packed their bags in the hotel rooms and they've got it to the Chamundi Vihar Indoor Stadium. They'll probably catch a train or a flight right from the stadium as well. All right, I'm Navin Shauri. Alongside with me is Navneet, speaking about a lot of good memories of our neighboring country, Nepal, and also of something to do with Hrithik Roshan as well. And that's a very interesting conversation. We are trying to keep it together with our storytelling. Navneet, also, what's your good memory of Nepal for your travel there? Wonderful places, wonderful temples to be visiting. And were you there around when that big tragedy of the earthquake happened? I mean, I'm yeah. So what were that experience? How did Nepal stand up back on his feet again? जी हाँ, और मुझे याद है एक्चुअली मैं ऑफ कोर्स अपने गांव में नहीं था, मैं जमशेदपुर में था और वो दिन था 25 अप्रैल 2015 और उस दिन मैं एक्चुअली जमशेदपुर में मैं कार सीख रहा था, मैं एक मैदान में था और जब कार सीख रहा था तो कार हिलने लगा और मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी। मुझे लगा कि शायद कार में कुछ खराबी हो गई, लेकिन आप सोचिए कि नेपाल कहाँ और जमशेदपुर कहाँ कम से कम 600-700 किलोमीटर की है और वहां पर जब हिला तो ऑलमोस्ट झारखंड के एंड में वो ट्रेमर्स फील हुए थे। My God. Oh, yeah, the tectonic plates that get shifted under the Earth's crust. Yeah, it just gives us a lot of tremors. And yeah, the Richter scale also would have been shivering and shaking, which measures the earthquake. And what a memory there, Navneet. Yeah, really. I mean, imagine you're trying to learn to drive a car, and suddenly you feel the tremors. I'm sure you'll never forget that. Right. That stays in the memory for sure. But I'm also very, fascinated to see how Nepal stood up on its feet after that natural disaster and that tragedy. It's actually very, very appreciative. As Keshav and Raja's Nilgiri Knights, jersey number 3 attempt out. on the point. Vinod Kumar goes for the ankle load. Upendra Kumar all stares. That is a lot of tremors in his eyes for sure. बिल्कुल। और एक्चुअली जो माउंटेन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो यंग यानी कि जैसे यंग लोग होते हैं उसमें काफ़ी एनर्जी होती है और वो जो पहाड़ है उसमें काफ़ी एनर्जी है वहाँ हिमालय पे, तो अक्सर वो पहाड़ हिलते रहते हैं। और ये नेपाल की दुर्भाग्य की बात थी कि उतने बड़े झटके वहाँ पर महसूस किए गए। और नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि समंदर से कहीं से भी वो टच नहीं होते हैं। तो ऊपर में चाइना है, नीचे भारत है, दाहिने तरफ आपको बगल में भूटान भी है, बीच में सिक्किम आता है या भूटान। तो बिल्कुल। और इस तरीके का जब सिचुएशन होता है, आप गिर जाते हैं तो आपको मदद के लिए पड़ोसियों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। नेपाल को खड़ा करने के लिए भारत ने बहुत ही आर्थिक और लोग भी वहां गए और सपोर्ट किया नेपाल को, और नेपाल से हमारे रिश्ते अक्सर अच्छे ही रहे हैं। पर बीते कुछ वर्षों में चाइना ने वहां ऐसी कोशिश की है कि हमारे रिश्ते पर असर पड़े। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब नेबर्स होते हैं, आपके घर के बगल वाले भी जो नेबर्स होते हैं, तो रिश्ते में तो नोकझोंक होती ही रहती है। You'll have to really diplomatically get out of that low joke. As the running hand touch from Prince Kumar Roy was good, and that previous raid on that toe touch. Yeah, Abhi Kumar, you just need to get your things together because much needed. You have that opportunity because from tomorrow in the challenger round, Santosh Srinivasan will come back on that right corner. Yeah, especially that Lipula Lake is such an integral part of India. Suddenly somebody decides one day that they put up a map on their drawing table and correct it with their marker. Yeah, that was so funny. That was so much not necessary. But yeah, as you said, external forces trying to rupture our friendship. But yeah, at the end of the day,
sensitivity and sensibleness should prevail. And that's what we always request, because we also love Nepal. There's so much happening between two countries, so much manpower being actually exchanged, you know, because if I really, correct me if I'm wrong here, Navneet, as Balaganapati has come in from the bench to raid. First raid, he was being tackled out. Now comes in for his second raid, searching for his first point in this match. I don't know if he's got the bonus. I don't think so. No bonus there. So, I think the Gurkha regiment, that is been one of the major backbone for the Indian army, where, all the mountaineering, the Sherpas, they call themselves the Sherpa clan. They come in from the Gurkha regiment. And without them, our Indian army is nothing. And I think that is the only country, Nepal is the only country where we recruit Sherpas from Nepal into our Indian army. That is massive. That's really massive. Nobody else has got that privilege. And Surya Selvam comes into this do-or-die raid. And Navneet, we can explain after this do-or-die raid as well about that. या डू और डाई रेड है यहाँ पर सूर्या सेल्वम की तरफ से 1 पॉइंट वहां पर मिला है. 1 point Nilgiri Knights, jersey number 15 out. And all the guys, I think they're waiting for the Humpy Heroes' match next. They're trying to come in quickly. Once again, the defense wolves. Oh my God. I can't even call it as a rookie mistake. Someone who's, I think, playing kabaddi for the first time. Yeah, the defense is actually, I'm sorry to say this, the defense is actually playing like a team from Japan or Malaysia, the Sonics team, because that inexperience of kabaddi is being shown like that. Yeah, but Vinod Kumar, do or die raid now. On the block line, he just wants to understand. The block comes in from Manigandan. And that block is a 1 strong point, one. Nilgiri Knights. She's, I think, one of that biggest kabaddi fan, and she knows the rules as well. She gives the Substitution. signal. Nilgiri Who's Knights, got the please point? come. As Manigandan 71 Subramani in, comes in with a 77 nice out. block. Yeah, Right. Navneet throwing some lights on the Gurkha regiment, as we will speak about tomorrow's schedule in a while. जी बिल्कुल. और गूर्खा रेजिमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिमेंट है, और जैसा कि आप शेरपा की बात कर रहे थे, और शेरपा की बात करें तो बहुत सारे जो मीटिंग्स होते हैं उसमें एक शब्द यूज किया 1 जाता point है Nilgiri शेरपा. Knights, jersey number 12 out. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जब कंट्रीज के हेड जाते हैं मीटिंग करने, लेकिन कभी कभी हेड्स नहीं जाते, कभी कभी सबऑर्डिनेट्स जाते हैं, और जो कि ऑफिसर्स रहते हैं, और उन्हें शेरपा कहा जाता है, और वो शब्द वहीं से आया है. और जब आप बात कर रहे गूर्खा रेजिमेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिमेंट है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या सबसे अच्छा 1 है, point Sonic, इस पर मैं jersey कोई number कमेंट नहीं 66 देना out. चाहूंगा. मैं समझता हूं कि भारत में जो भी फोर्सेस हैं उनका अपना अपना महत्व है. चाहे वो तो कंपैरिजन थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ, गूर्खा रेजिमेंट बहुत ही शानदार रेजिमेंट. Yeah. One of the important. Every regiment is good. You speak about Indian Official Army. timeout. It is world's best. There's no doubt about it. Of course, apart from the numbers and the armories that we have, 35-15 in favor of the Nilgiri Knights, and with the red band, Ajay Anand Krishna has come in from the bench. So yeah, no, I was just mentioning the Gurkha, and there Santosh Srinivasan onto the right of the screen, and Surya Selvam there sitting there. This is Marimuthu Selvam as well, who's not playing today. Marimuthu Selvam, and Surya Selvam has got 13 points. And you know what, Deva and our PCR team, this is Marimuthu Selvam, not Surya Selvam. We are firing the graphics of the raider who's been there, but nevertheless, it happens. So, Ajay Ananda Krishna, has he got a point? He was just greedy. He was just greedy. Get it out. Should have 1 gone point in after that Sony. initial attempt. Ajay, come on. Prince Kumar Roy with a nice double ankle hold. Red. जी बिल्कुल. और मैं जब से ये युवा कबड्डी सीरीज के साथ जुटा हूँ, मैंने कभी ये हेडबैंड लगाते हुए किसी को नहीं देखा. पोनी टेल में देखा है, लेकिन वो अच्छा लग रहा था.
और इस तरीके के कैरेक्टर्स आपको बहुत ही इंटरेस्ट जगाते हैं कबड्डी के मैच पर। Yeah, definitely. You remember that man bun? Yeah, you spoke about the man bun in the Ahmednagar Periyar Panthers team in the previous Pune edition that we had. And he supported the Ahmednagar team so very well. I think because of him, they actually went ahead and won that finals as well. He was a brilliant player for sure. Balaganapati has now come into red. And I'll tell you about the headband of Ajayananda, that red color red band. 1 point, Nilgiri Knights. Balaganapati gets Jersey a number running hand touch. 66 out. I asked him, is it for luck or superstition? He says, no, and I've just grown long hair and I just need to keep that in place. And I have seen him wearing different color headbands also. So that is not superstition at all. Right? So that is something to cheer about. The youngsters not actually completely believing in superstition, but this is a strong block 1 point, on a Nilgiri tackle Knights. from the right cover. ये और मैं जब स्पोर्ट्स पहले फॉलो करता था तो अगर 90s की बात की जाए तो उसमें से बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, फुटबॉलर हो या क्रिकेटर, वो हेडबैंड पहनते थे। क्रिकेटर्स की बात करें, मनोज प्रभाकर, रिचर्ड हैडली, और रिसेंटली मैंने एस रीसम को भी देखा था। Oh yeah, Srisanth has been, a flamboyant character. Of course, coming in from Kerala, you have a little bit of expressive body language. Especially, I still remember the way he actually went ahead and rubbed Matty Hayden on the wrong side. You don't want to mess with head on, especially when he's got a bat in his hand. Ajayananda Krishna now comes in for a super tackle situation. Raju Singh is just saving himself. Can Ajayananda just go running and touch? No, he took a lot of time. Struggle is on. I don't think so. That struggle will give him any points. Out. Very strong. Super tackle. Super 2 tackle points, again. Sinsonic. Rajaram knows. Just accepts that with a smile. Angad Thakur comes in front of him. Yeah, brilliant double thigh hold on the frontal block. So yeah, just speaking about headers, I've spent a nice time with him working and also in the commentary box. He's a lovely character. He just looks huge. That's it. But he's very friendly. Vinod gets a 1 point, hand touch Sinsonic. on the Jersey left number cover. 9 out. Manikandan Sudamani goes off. हाँ, और बड़े हैं। Substitution, Sinsonic. ऑस्ट्रेलिया की अगर आप Number वो जो 16, टीम थी 12 out. जो 2000 के दशक में बहुत ही शानदार रूल करती थी, बहुत ही बड़े बड़े कैरेक्टर्स थे, हेडन थे, ग्लेन मैकग्रा थे, रिकी पॉन्टिंग थे, और जब आप मैदान में उतरते थे तो ओपोनेंट पहले ही उनसे डर जाते थे, आधा गेम वहीं पर वो जीत जाते थे मेंटली। लेकिन जब वो रिटायर हो गए और जब लोगों से मिलने लगे और एक दूसरा साइड उनका दिखा, सॉफ्ट साइड, तो आपको दिखाता है कि वो जो कैरेक्टर्स है वो कितने डिफरेंट है, मैदान पर किस तरीके से रहते हैं और आम जिंदगी में किस तरीके से रहते हैं। Yeah. Sagar Kumar is talking to Pradeep Yadav. Sagar Kumar with the black and white striped t-shirt was the really missed Out. in the entire 1 season. point, Nilgiri Another Knights. lovely dash. Yeah, Aditya Shinde. I used to call him Aditya Roy Kapoor in that Ahmednagar Periyar Panthers. That's what I was trying to remember. If he was right. Aditya Shinde with the man bun came in. And Ajayananda now with that headband. And yeah, style statements. You speak about another Australian player. That's a nice lovely out. thigh hold there 1 from point, Angad Thakur. Sinsonic. He's come good in the second half. The running hand touches not working. Once again, Balaganapati goes out from the mat. Yeah, speak about another lovely player whom you rightly mentioned, Navneet. On the cricket field, we never knew who they really were as human beings, their real characters. Yeah, speak about Headers, and more than Headers have also been very closely worked with Binga, Bretley. He is a lovely character. And his time sense, Navneet, that's impeccable. And being such a Time out, superstar, Sinsonic. as Sinsonics have taken a time out, he himself being the superstar of the Australian fast bowling side, what was very nice is he's got that timing sense. आता है रनिंग में मार के बाहर करो ना, Speak हल्का about सा that प्रेस more. करोगे बाहर ऑटोमेटिक जाएगा, तो खुद स्पीड में है।
Yeah, he wants the defense to go back and trail back at the right time. And the Raiders' speed itself will take him to the lobby. That's what Upendra Kumar says. Ajay Ananda now needs to understand that he needs to stay on the mat. I know he needs to get some touch points, but staying on the mat also will give you that confidence, Ajay. So yeah, because I tell his timing, once we had to go to Tiruvallur. Now, Tiruvallur is very southern to Tamil Nadu, where we have the Tiruvallur statue, where, during the tsunami time, that tall statue of Tiruvallur was almost covered until the neck as well when that long wave, tsunami wave came in. So that statue was so big. We had visited that place, and next day morning, Strategic we timeout. had to head out for another promotional activity with another radio station that's got involved. And it was a 6 p.m. show. We had to go there. And Binga was the first one to sit in our car. Even before me. As Rajaram gets talking. இங்கே கார்னர் வெரைட்டியை தொடு என்னன்னா இங்கே கார்னர் அவன் போய் முழங்கால போட்டுறான் அப்போ பாட்டு அவன் அதுக்குள்ள எந்திரிச்சவர்கள் என்னால் கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் தொட முடியும் தொட்டுவான் இங்கே தொட்டுவான் சேஃபாக ஃபாலோ பண்ணி இங்கே பாலை பாட்டு ஓடிவான் ஆனால் டச் பண்ணால் லாபி யூஸ் பண்ணிவான் நான் ஃப்ரீயாக விளையாடு Right. Very good from Rajaram. He's filling and he's just pumping confidence into Ajay Ananda. That's what he said. Enananda free velade. So the moment where the defender is lying on his knees, Monangalu potu okkandu yencha odane, that means the moment he just gets up from his knees, just touch him, come back. That's okay. If you don't even come back, if you don't even touch him on the first attempt, that's okay. But try for the second time. Don't get tackled out. It's okay. Play well. That's what Rajaram boosted confidence in Ajay Ananda. Very experienced coach. Very soft spoken as well. Rajaram shared a lot of lunch sessions with him. And his boost and confidence has worked for Ajay 1 Ananda. point, Nilgiri Knights. Escapes Jersey the number clutches 66 out. of Ritesh Kumar for the first time. जी अजय नंदा वहां पर पॉइंट्स लेकर के आए हैं और इस बार डू और डाई रेड में अंशु जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 का माफ कीजिएगा 6 का डिफेंस है, 3 चेन बना करके अंशु सिंह का इंतजार हो रहा है और यहाँ पर फ्रंट ब्लॉक आया, कोई मौका नहीं, एडवांस टैकल था लेकिन अंशु उस एडवांस टैकल से भी पार नहीं पार पाए। 40 और 21 ये स्कोर है, 6 मिनट का खेल शेष है। I think you know what, Navneet? 52, I think, is the highest aggregate points by any team in a match. And Nilgiri Knights, if they go at this pace, they can really cross that. And look at this. Ajay 1 Ananda point, with the Nilgiri confidence Knights. that he's Jersey number got 7 from out. Rajaram. Just after that timeout that was being taken, strategic timeout, and the boost in confidence has created a different Ajay Ananda on the raid. This is the second time on the running anti, gets 2 points. Raju Singh was going in, blinding him across for the dash. But he could not control himself. Ajay Ananda turns right on time and gets Raju Singh. Very good. It's a 20-point lead. Yeah, I was just speaking about Brett Lee. So then I realized, why is he so successful? It's because of the discipline. It's because of how you respect others, how you respect others' time, and all that matters a lot. As Abhi Raider Kumar out. just 1 has an point, easy Nilgiri tackle on the Knights. raider. Monu's just does not have any answer. And there, Binga became a very good friend of mine. You know, in Tamil, he learnt one word. As this is another all-out that has been inflicted. 1 plus 2, 3 Right, points. Sonic not Nilgiri finding Knights. answers. All out Sin Sonic. For a friend, Navneet, we call in Chennai, especially in Madras, All we in. have that slang of calling him as Macha. As in Kannada, we say Maga. Yen Maga, Chanagidiya. That's what we say in Kannada. Maga actually literally means son. And Macha actually literally means Sala. You know, your wife's brother or anybody, that's Macha. Or if you're married, your brother-in-law, brother-in-law basically is Macha. So Brett learned that word so nicely, and everywhere he came out, he said every time he spoke to us, he addressed us as Macha only. Raider out. 1 point, Nilgiri Knights. मचा एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है तमिलनाडु में और मैंने भी देखा है कि जब भी मैं
वहाँ के लोगों से मिला हूँ तमिलनाडु को, और इस तरीके से थैंक्स मचा, इस तरीके से बात करना एक बहुत ही कॉमन स्लैंग है। Yeah, yeah, very much. And you know, we had one very good friend of mine as well. Of course, he is an RJ. He's a big celebrity, of course, in Tamil Nadu, and everybody, of course, Red watching around. live in 1 point fan court will Sonic. also relate to it. As Balaganapati once again is being tackled out. Nice right cover block with the chain tackle comes both the covers, Angad and Ritesh. And nice to get that going. Ah! Prince Kumar Roy, I think he's got multiple points here. 2 points. Only Sinsonic. Jersey two, number but 2 and nevertheless, 66 good. out. It's very good. 2 I and think they 6. will Raider. want more points. Raider. They will discuss. Navneet, it looked like as if 3 points. Yeah, Manigandan Nesamani goes in, then Sudalamani. And he's crossed the midline before Elumalai Murthy goes for the ankles. 3 points. Ah, it's a Sinsonic. super raid as expected. See, I felt it was 3 points. जी हाँ, बिल्कुल लास्ट में एक खिलाड़ी ने पैर पकड़ ली थी और क्लियरली 3 पॉइंट है। Please go. TV umpire, Nilgiri Knight challenges 2 defenders. Our decision 3 points. Please review. What is wrong with Sagar Panchal? He never fumbles, he never pauses on the words, he's very confident, but today he's just fumbled a little. But nevertheless, that's Sagar Panchal, he will do better. Right turn was brilliant from Prince Kumar Roy. And Manigandan Sudalamani came behind Nesamani as always. Very good cover combination. They are very close friends. But the turn has actually helped Prince Kumar Roy. And did Elumalai Murthy touch him while Prince was turning? That's a big question here for Rambir Singh to answer that. I think it's 3. I really think it's 3. And I think Elumalai Murthy has got a touch on Prince Kumar Roy before he turns. Yeah, I think I have some time here to explain out what there's a famous celebrity who's called Makapa Anand, a very close friend of mine. And Makapa was actually teasing him around, saying he was calling him Mama. When Brett used to call Macha, Makapa used to call him Mama, and the real Mama is Jiju. So, and thankfully, I think Makapa does not have any blood relatives on a marriable lines. He was just feeling bad. Sir, jersey number, please. Saying, if I have a sister, Jersey I could number. have gotten Brett married to her. That's what he was telling us. Review unsuccessful. 3 points. Yeah. Sinsonic. Yeah, as expected, Yeah, unsuccessful Kamal 3 Khani. points. Number 2, 9 and 66. और मामा ये जो शब्द है ये हिंदी में इसका मीनिंग कुछ और होता है। Correct. Yeah, absolutely. Yeah, that's very nice. Where those are the days where I really got to know the Aussies much better. Bonus plus 1 Ajay point. Nanda. Nilgiri Knights. Got bonus Jersey number plus 1. 66 out. Whoa! Look at that confidence booster there, Navneet. Raja Ram just Defender. went in and spoke words of appreciations. And from there on, he's not been tackled at all. And look at that spring Please in his come. step. And Sinsonics will say no bonus. Yeah, that's the review. TV umpire, Sinsonic challenges. No bonus. Our decision bonus point. Please review. Yeah, that's it. See, as I said, Sagar might not fumble the next time. I know him well. He did not fumble now. And this is a picture perfect of the bonus. Capture this in the frame and put it outside the Chamudi Vihar Indoor Stadium for all the posters that's there. His landing foot completely crossing the bonus line, trailing foot in the air. That's according to me. It depends on Rambir Singh for the final decision though. But yeah, those were the actual times. Review unsuccessful. Bonus plus Unsuccessful. point. Nilgiri Yeah, Knights. as Captain, expected. your user, no more. As expected, Sindh also lose their review bonus given away by Rambir Singh. As I said, it should be a picture perfect one for anybody learning how to make or how to get a successful bonus point. Ajay Ananda has become a different raider, Navneet, after that pep talk. And that is not even a pep talk. That is just I think a fatherly talk by Rajaram, isn't it? निश्चित रूप से। और देखिए टीम रिव्यू में दोनों जो बत्तियां हैं वो लाल हो गई है
और 1 मिनट 40 सेकंड यानी 100 सेकंड से कम का खेल रहेगा। नीलगिरी नाइट्स यहाँ पर 48 और वो जो जीत का बिगुल है और वो आप यहाँ पर प्रिंस कुमार रॉय को पॉइंट मिले, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा नीलगिरी नाइट्स की जो वो लोगो है नीलगिरी तार, ये जो बकरी है नीलगिरी तार कहा जाता है, बहुत ही नीलगिरी के पहाड़ों में पाया जाता है। बहुत ही फक्र से अपना सर ऊंचा करके नीलगिरी नाइट्स उसी नीलगिरी तार की तरह यहाँ पर महसूस कर रही होगी। Oh yeah, very much. And they will get 7 out of 7 victories in the booster round. And after that booster shot, or rather the booster shot that Rajaram gave to Ajyananda, he's got tackle for the first time. Nice chain tackle. When Sinsonics can do this, why they don't do this every time? Look at this. This is perfect combination and coordination from the right cover and the left cover. And the corner defenders coming in as a second line of defense. Why can't they do that always? Can Prince Kumar Roy go ahead and inflict the all-out under the chain dupki? Just a pull. A trouser being pulled down. 1 point Sinsonic. Jersey number 6 out. Ravi Kumar. Number 6, please come. Yeah, there. The green card. Definite green card. As Bala Ganapati remains the last man standing. Oh no! Yellow card. Yellow card and a technical play. point. Yellow card and a technical point given away to Sinsonics as well. Yellow card. Substitution. Sinsonic. Please come. Yeah, 14, 6 out. 44 in, 3 out. 18, 1 out. First match properly here. And he's got an yellow card and he will not be coming back because there's just 11 seconds. No technical point, says Akshay Desai. No technical point. Okay. Agreed. Abhi, come on. You're such a decent kid. Gone ahead and pulled Prince Kumar Roy's trouser. No. Not allowed. Balaganapati finishes the last trade peacefully. Match As over. 48 only for the Nilgiri Knights. It's a 20-point victory. And that means, I think it was the highest for, 52, if I'm not, going wrong on my memory lines. The highest aggregate by any team was probably 52. And that has not been breached. Yeah, nevertheless, that stays the same. But Navneet, with all the disappointment, we will be saying goodbye to the Sinsonics for this edition. ये सिंथसॉनिक्स को जाना होगा और यही खेल होता है, एक एक करके सारी टीम चली जाती है और इस वक्त सिंथसॉनिक्स के जाने का का समय आ गया है। नीलगिरी नाइट्स 48, सिंथसॉनिक्स 28 यानी कि 28 और दोनों टीमों के खिलाड़ी रेफरी सब आपस में हाथ मिला रहे हैं। 7 out of 7. And you know what? Nilgiris is also house for all the hilly regions of our Western Ghats. It also shares a lot of borders also there with Kerala and Karnataka. And 7 Hills are the birthplace of Lord Murugan. Also Elumalai, where we also always relate to the Tamil cultures as well. So they've got 7 victories out of 7 in the booster round. So a perfect 7-hill victory for the Nilgiri Knights. They have whitewashed every team that has come in front of them. Not easy, Navneet. Really not easy to get that feat. And of course, Karnan started off that in the booster round. And then when Rajaram came in, took over the responsibilities from Karnan, nothing has changed. Nothing really has changed. Apart from our very own strong defender on the left corner becoming a do-or-die raid expert. Elumalai, Velavan Muruganandan. He became a strong do-or-die raid expert. That's the only change that happened after Karnan left Rajaram to take over the responsibilities. 32 raid points, massive for the Nilgiri Knights Raiders. They had a good time. They had good fun on the mat as well. As Ajyananda came in, Balaganapati came in. Very good. But nothing to speak highly there for the Sinsonics, Navneet. जी बिल्कुल, बहुत ही कमजोर प्रदर्शन रहा। 28 पॉइंट, रेड पॉइंट 18। टैकल में बराबरी थे लेकिन 3 बार ऑल आउट हो गई तो 6 पॉइंट वहां नीलगिरी नाइट्स को मिल गया। सुपर रेड, सुपर टैकल, सब कुछ देखने को मिला है दोनों तरफ से इस मैच में।
तो ये है मैच का लेखा जोखा 48 और 28 ये स्कोर। और सूर्य सेल्वम की बात करें, बेस्ट रेडर्स 8 रेड लगाए 13 पॉइंट और वो स्ट्राइक रेट देखिए, वो स्ट्राइक रेट है 162%। Yeah, that's good because he was also substituted out. He did not have that empty raids. And yes, Sinsonics actually conceded 52 points by the Kannada team, the Humpy Heroes. That has been the highest aggregate by any team. And thankfully, Nilgiri Knights did not beat that record. Abhi Kumar, in his first appearance on the Kabaddi mat in the Yuva Kabaddi series in the summer edition 2023, has earned that yellow card. But more importantly, he is the best defender with 4 tackle points. That's very good. That's very nice. And lovely to see the Nilgiri Knights get a perfect 7. And the Yelumalai will be really happy, the 7 hills for the Nilgiri Knights. But yeah, Sinsonics, we are very sorry that you will have to say goodbye to us. 7 losses out of 7. And that is very disappointing. We really want you guys to come back strong the next edition and come back with a nice N2, nice coordination and a good, strong defensive approach than this edition. But Navneet, once again, thank you so much, because this one-sided match never felt one-sided because of the lovely discussions that we had in the commentary box. Up next, the Kannada team taking on the Chambal challengers, Humpy Heroes. Today also no Gagan Glorious Gowda. Can they turn it around against the Chambal challengers like yesterday they did against the Aravali Arrows? Let's watch out at 6:45. Stay tuned. I'm Navin Shori. We will be back very soon with that match. Thank you so much, Navneet.
With 7 losses, Sonic यहीं पर हमारा साथ छोड़ जाएंगे, बट निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा रहा ये उनके लिए सफर, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ पाया होगा। बट आइए आप सभी का स्वागत करते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ मैच नंबर 91 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners, broadcast partner FenCode, fantasy partner Dream 11, physio partner Department of Sports Science, Jesus College of Physiotherapy, hospitality partner Chincho Hotel और healthcare partner Ramakrishna Specialty Hospital। और आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं इस जीत की पार्टी में नीलगिरी नाइट्स के नीलगिरी से ही मौजूद मिस्टर जतिन डी सर, मैनेजिंग पार्टनर जेसी केरामिक्स, और मिस्टर दिलीप वखरा सर, मैनेजिंग पार्टनर टेक्नोक्राफ्ट। हम आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। ये मुकाबला जैसा हमने आप सभी को बताया कि नीलगिरी नाइट्स ने एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में जीता। सीधा चलेंगे अब अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की तरफ। शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रीडर ऑफ द मैच के साथ जो रहेंगे नीलगिरी नाइट्स के सूर्या सेल्वम, जिन्होंने आज अपने सूर्य को उदय किया और प्राप्त किए 13 और 8 पॉइंट्स। आइए देखते हैं। And now the time for the best defender of the match। तो आज जैसे ही इस खिलाड़ी को मौका मिला, शुरुआत इन्होंने की थी लगातार सर्वाइवल 1 में, बट आज इन्हें मौका मिला है और आज इस खिलाड़ी ने अच्छा भी किया है। नीलगिरी नाइट्स के एस अभी कुमार 4 टैकल पॉइंट्स एज अ कॉर्नर अपने नाम किया और अपनी टीम की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाई। आइए देखते हैं। और अब समय कबड्डी कमाल ऑफ द मैच, तो ये जाएगा नीलगिरी नाइट्स के वन मोर टाइम, जिन्होंने लगाए 4+2 6 पॉइंटर सुपर रेड, वो थे सूर्या सेल्वम। तो चलिए हम जरूर मिस करेंगे राजू सिंह और सागर की परफॉर्मेंस को और निश्चित तौर पर इस येलो ब्रिगेड को, बट इस प्रेजेंटेशन से इतना ही। जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ इन द नेक्स्ट मैच।
Good evening. Match number 92, Chambal Challengers versus Hampi Heroes here, standing on the fifth and the sixth spot on the points table. Good evening. Match number 92, Hampi Heroes versus Chambal Challengers. Hampi Heroes might get onto the mat without Gagan Gowda today. Good evening. Match number 92. This is Hampi Heroes will be taking on Chambal Challengers here. So we will be waiting for Harshit to call both the teams onto the mat, Naveen. You must have to come know the crowd is cheering up for his home team. Crowd, are you enjoying? So let's invite the home team, the team
team from Karnataka, Hampi Heroes. But this would not be an easy battle for the home team because the challengers are all set. Let's invite and give it a equal support to Chambal Challengers. Good evening and welcome to Chamdi Vihar Indoor Stadium where the Hampi Heroes have descended down and we can hear the noise that is already here with the vibe that is just sky high. And yeah, I was just about to start off and say that I've been not in the commentary box with my very good and old friend Radhika Reddy. And Radhika, old I mean not in terms of the age, I mean old in terms of how many years we've known together. So yeah, don't get me wrong there, as Sukesh Kulal and Narsimurthy, once strong, always strong on the corners, trusted corner combination for the Hampi Heroes, now for Narsimha, as Madhu Kaverappa and Kiran BS and Teja Nayak. No Gagan Glorious Gowda, as he's gone in for making a bigger leap in another trials. All the very best, Glorious Raider. Make Yuva Kabaddi series' name shine there, and don't forget to mention in your resume you were a product of Yuva Kabaddi series. Shiv Kumar and Suhas Nagraj for the covers. Ritik, Krishna Kumar, Sudarshan, Devanathan in the substitution lines along with coach Narsimha. Radhika, I'm sure the resume of Gagan will say that he's a very, very good product. Absolutely. I think this is where he was picked up for the trials though. And Sanskar Mishra here will be the key raider, second top raider in the league so far for Chambal Challengers. And he will be supported by, Vansh and Uday Kumar in the raiding unit. In the covers, we have Akshay and Gopi Malapalli. Now he's taking up the cover position on the left, and is Durgesh Sahu. We'll be eyeing on this defender as well, and Rehan Sheikh on the left corner. Yeah, he was picked up from here, the Glorious Raider. 17 matches, 171 raids. Yeah, that's a glorious achievement, as well as 20 matches for Sanskar Mishra. 148 for him, and Jayasurya Nagarajan, nice. And he's also contributing in the absence of Sanjeevi for the Palani Tuskers. But when Madhu is absent, then the Hampi Heroes will think a lot. But when Gagan Gowda is absent, Madhu says, I am here, just don't bother about anything else. The top three defenders, again, all corner defenders. Nice to see them here. Absolutely. The sequence doesn't change a lot. He's the same thing since a week or so. It's Lokesh Kosalia leading the chat with 60, and next is Ankit Jat with 55, and Rajendra Bakar 48. Yeah, the pocket dynamite is just there in the top three list. Very nice to see as Karuam just goes ahead and flips the coin over. Sanskar Mishra says it's my toss and my coin. And nice to see Sanskar Mishra back in the fold very, very soon. And I was happy with Gopi Mailapalli as well. Yesterday, Radhika, he assisted very nicely in the tackles. And today, he'll have to watch out for this lad, Madhu Kaverappa, the captain. Not so much on the raid points because he's always there as the third raider of the team with, Gagan Gowda and then Shashank. So Madhu is always there as a captain, but today he's there as a lead raider. And yesterday also he did well as a lead raider against the Aravali Arrows, where they won their first match without Gagan Gowda here in the summer edition. So they have some confidence, and Chambal Challengers will have to watch out for it. Absolutely. They are in a safe position, so they're just trying out everybody possible. And Sanskar Mishra is the player we will be eyeing on. Hats off to his super raids and the number of super 10s he created, and the second best in the raiding unit. So all eyes on this tall raider. Yeah, and I am happy that he's starting in the starting 7.
because last two matches, the previous match, day before yesterday, he did not play at all. Yesterday, he came in at last 10.5 minutes, and that did not impact on the Tumble Challengers win percentage. But the win percentage for the Hump Heroes is good, and they are very nice, 55%. They are through to the Challenger round. But I'm just waiting for that question if there is anything with regards to Humpy Heroes. Gagan Glorious Goran, you can see Suhas Nagraj there with a bandage on his nose. He just got a bleeding out there. So he was back and it's good. Where is Gagan? Why is he not even in the bench? Harsh asks. The very purpose of Gagan here is, to find the Aage ka rasta, and he is making it big there. Oh yeah, very much. Yeah, he's there. He's there to get into the bigger leap, Harsh, where he's gone in for the trials, and he will be eyed by everybody, the talent scouts, and also the major team owners and team coaches, where they will see him to see if they can pick him up in the upcoming tournaments as well. So all the very best. He'll be back soon, Harsh, don't worry. An entire Yuva Kabaddi series is also actually waiting for the Glorious Raider to make a comeback, and nice to see Sanskar Mishra in a very nice jovial mood, no pressure whatsoever, and he's all set to take up the responsibility of the captain. And what a way that he's taken up that responsibility. Yeah. Yeah, but then Naveen, they need to make up for the 2 consecutive losses they had just now. Yeah, they have to. And this is a lovely question from Sukesh. Sanskar and Durgesh, are they both the best raiding duo? Not too much, but they have not played together. When Durgesh was raiding, Sanskar was just being as his lieutenant. And when Durgesh had that, when he had that injury, Sanskar was taking over from Durgesh. So we want to see them raid together as a duo force. We will see that in the Challenger round. We will discuss about that question more as we will get the countdown underway, and me and Radhika will discuss about that more as well. The Tumble Challengers won the toss, and it will be the first raid that's going to happen from Madhu Kaverappa. Jay Kumar asks Madhu to go in from the right to left of our screens. The left raider begins proceedings, and it's always considered as a very good ominous present for Madhu Kaverappa to start the proceedings. But yeah, Radhika, going back to that question, I feel they have not hunted in pairs, right? When Durgesh was going all guns, Sanskar was underplaying himself, isn't it? Exactly. Exactly, they didn't play together as much as, they played individually, but then 2 of them are the top guns. One of them is in the second spot of the raiding unit, and, Durgesh Kumar is also with 131 raid points on the 4th. So if they work together, then the wonders would happen. Yeah, definitely, it should happen. Harsh, we will also wait for that Challenger round to kick in from tomorrow, where there will be a major change there in every team, as Durgesh might come back soon with that injury. He's almost fit, 80% fit. Come back as Uday goes back after an empty raid. And you know what, Radhika? Teja Nayak comes in and jokingly, very, very jovially, day before yesterday, when the crowd was cheering for Teja, me and Ryan were in the commentary box, and we were having a bit of a fun as well. Running and touch on right cover, starts well, Teja Nayak. I'll tell you how that fun mode was converted. 1 point, Hump Heroes. Jersey number 55 out. Yeah, lovely bit of, execution of extended arms on the right cover. The moment he picked up his, speed, that's where the, action happened there. Yeah, so just speaking about the fun moment, but Sanskar Mishra gets his hand touch on the right cover. So both right covers attack. Number 60 now. Suhas Nagraj, he's got this early problems of playing highline defense and not going back. Exactly, you need to anticipate how tall is the raider and what would be his reach.
And also, Sanskar Mishra is also good at those running hand touches. Very good, especially towards the left corner and the right cover. Right, Kiran BS. He's got an injured muscle on the right knee. But he's coming in to strap and play across. Oh, that's a lovely good kick. Under the chain. And he's got 2 points. This is number 8 and 55 out. Absolutely. Being the weekend, I think it's a house full out there in the Chamundi Indoor Stadium. A lovely bit of dubki there. Brilliant. Very, very good. And what is more even interesting was about Teja Nayak. Yeah, Teja had only 1 rate point. And the crowd was going gaga over him. And me and Ryan actually found out why. And then we were, jovially speaking. 1 point. Teja should wear full pants number 10 and play now. rather than the shorts. That's what our conclusion was. No, this reminds me of our own Madhvi Bhandari when she spoke about the Korean player Yang Kun Lee. Yeah, she spoke on air that he has lovely thighs and all. Yeah, Madhvi can be getting carried away. I know, Madhvi. Under the tail, Teja wanted to go. And with shots, without shots, the ankle will be pulled back. Right now, Punch Mudaliar. 1 point. And that's a nice combination tackle to send the strong man out. We're just speaking about Teja Nayak. The sound of the crowd goes silent. When he went and got that first rate point as well, Naveen, I was about to say, he's a nice personality on the ground. Yeah, he is. He's very much he is. And Ryan had a doubt, saying, Naveen, the raider, Teja Nayak, has just got 1 touch point today. And why is the crowd actually cheering for him? That's what his doubt was. So I had to answer, saying, no, all the time that has been put in the gym. And I discussed that with Narsimha, the coach, and Madhu as well. Do you want to think about Teja wearing full pants and playing instead of the shorts? They all agreed. They said yes. They completely agreed with me. They said, yeah, there's a lot of noise when we raid, especially Teja raids. And we really want him to be in the full pants rather than the shorts. And yesterday, I happened to see a small interview clip of Madhu Kaverappa. He speaks so nicely, Naveen. It's very rare that we see kabaddi players, speaking so well. Correct. He's a very good vocabulary. He expresses his heart very nicely. A lad from Bengaluru, so he's got that confidence. And the reason why also he speaks so nicely is because he's also been starting off to sometimes play cricket for a while. So he was been there in that university. So in that university team where he studied there, and because of that rib injury, he left out cricket and came into kabaddi. As Uday comes in for a do-or-die race. Tukesh Kunal, come on. 1 point. Left corner. Jersey number 4 should not have gone in for the dash. This is the defender we thought, he would be doing great, but then timing was not the right thing that he could maintain on the mat now. But then this is a do-or-die raid and the captain steps up. And he does not step back. 1 point. Ambiros. This is number 8 out. And today playing that high line defense. Radhika, he's good in the right cover rather than the left cover is what I've observed. Naveen, I have seen him everywhere. Somehow. Yeah. No, but yesterday, very honestly, where he was assisting very nicely to, I think Lakan Lal was there in the left cover. So he was there in the right cover, Gopi, and he was assisting him very I'll tell well. you. Yeah. 1 point. Somebody who is an aggressive defender, out. who is very quick on his feet, they will be good as assist, Naveen. That's where you found, Gopi Mailapalli. But if he's given a lead defender position, he might fail. Correct. He was very good in the assist. Yeah, absolutely. Bang on. As that running hand touch was from Vansh Mudaliar against Narsimha Murthy. And yeah, Vansh Mudaliar. Yeah, that name is so Tamil. Yeah, I think I shared the story as well. And it's also movie friendly, Naveen. We see a lot of that surname, whatever the surnames we call in movies. Correct. Yeah, we do.
and it's that clan which has always been with a lot of very good high respect, of course, in the society. But double tie hold, that's nice. Yuva Kumar puts in the tackle, and Right he's out. successful for the first 1 time. point. Got his high Ambiro. five yesterday, and today he starts off nicely. And this lad Radhika, he's a son of parents who always get their earnings from just photo frame making. They just make photo That's what you frames. mentioned. Yeah. Yeah, I remember you mentioning about us when a small little story about the our lives of pictures would not go with glass frame or something like that. Correct, Yeah, but correct. Madhu Kavirappa, he is so calm and composed, Naveen. And you know what? He's handsome too. He is definitely is. Yeah, that was also a point in contention. Madhu and Gagan, who looks the best on the mat when they raid. There's also one small competition that's going on. And Shivkumar, number 27, he says, now Amayakuru. Amayakuru means we are the... somebody who's pavam. Yeah, Pavam. Yeah. Shivkumar says we are not even being seen by the girls is their worry as defenders. I said, yeah, see, listen, defenders do the hard work. They are the laborers of the match. As Teja Nayak comes in for a do-or-die raid, tries the bonus first, then the kick, turns around, does not get it. I'm not able to hear Teja, and the crowd will go silent. Right out. Crowd will really 1 go point. silent. Chambal Challengers. Chambal Challengers defense. They waited for the right opportunity, and Teja Nayak has to circum for the second time. Is it, Naveen? Definitely second time. Akshay, they've got a nice right cover. Akshay AP. Right, that's a new name. No Lakhan Kashyap there. And it's nice to see Akshay actually making his name felt. Running and touch. He's gone into the lobby. Shivkumar says, come on. Don't fake claim anything. Go into the lobby is what Shivkumar is saying. But Uday Kumar Parthe says, I've got a hand touch. And the referees. 1 point. Chambal Challengers. Jersey number 27 out. Shivkumar has been sent off by Madhu saying it's okay, don't go for the review. Exactly, because it's just starting of the match and you can't just go with 1 point for a review, because you have a raiders who can get those super raids as well. So in that case, you need to hold it. Yeah, they should. They really should. And that combination of the covers we always keep speaking about, the Nilgiri Knights is the Manigandan effect. Nesamani and Sudalamani. Krishna here. Correction. Kiran. Bonus BS point. Ambiros. Right gets out the 1 bonus point. Chambal But Challengers. the dash also is successful. Exactly. After the bonus has been done, a running bonus, and then Right. Yeah. Very strong dash from Vansh Mudaliar. And suddenly the Humpy Heroes have been reduced to 2 defenders only on the mat. Sanskar Mishra loves this situation. He knows only Suhas is there on the end line. He's just on the border. He's cornered both of them. Madhu goes for the ankle hold. Can they inflict the super tackle? The crowd goes gaga over it. Oh, that's a massive hold. Right out. By Suhas Super Nagaraj. tackle. 2 point. There was Ambiro. not even a single frame of struggle by Sanskar Mishra. Radhika, that's a lovely hold. I think it's a very different sort of a hold where the Raiders' both shoulders have been locked by the defender. Wow, that is a new skill. Put that out there, Mohit, as the Kabaddi Kamal moment, because that is a skill that cannot be explained. Ankle hold by Madhu Kavirappa was good. He'll get the super tackle point. But that hold, that interlocking of the shoulders, wow, that's massive. That's brilliant. Radhika, I think we'll have to go back and see that replay again. If nothing happens in the super tackle attempt, Uday Kumar, you just have lost Sanskar Mishra. If you are smart enough, you will go back safe. You'll go back safe. That's what you have to do. Because 2 strong defenders, Sukesh Kulal and Suhas Nagaraj. Suhas is very good while sleeping on the mat. He just scares him away. Now, can our EVS operator Ram go back to that tackle?
especially where Suhas Nagaraj is holding back. No, not this one, Ram. Not this one. The successful tackle. Radhika, Ram has got that hair in front of his forehead. So that takes a little time for him to actually go ahead and assess which replay. Now Madhu Kavirappa, he has to succumb to the combination effort from the 1 defense of point, Chambal Chambal Challengers. Challengers. Now, who will rescue the team Humpy Heroes who don't have your lead raider? Substitution, Ambiros, please come. Jersey number 2 in, And 16 look out. who's coming. Left cover, Gopi Mailipalli with a strong block. And that's nice where they have substituted Ritik. They needed a defender, so Ritik comes in. So that's nice. And yesterday there was a little problem day before. Ritik's name was just excluded off the team sheet with a small confusion with the manager and the coaches. And Ritik was sent out without being able to play. Sukesh Kulal doesn't 1 attack point, him. Chambal Challengers. Oh my Jersey God. number 4 out. Yeah, Sukesh Kulal is one defender who is good at those super tackles as well, Naveen. But this time around, he was not even challenging the raider. He's just trying to escape. Right, this is some serious situation here for the Humpy Heroes. Last man standing, Ritik, he's a defender. He has to be raiding because the number of substitutes, that's what Narasimha is thinking. He's saying if I keep on substituting, I might lose out. And as expected, all out inflicted. Bonus I don't point, think so he's got a bonus. Ambiros. Oh, he's got a Right bonus, round, lucky. 1 + 2, 3 points, Chambal Challengers. All out, Bonus didn't look Ambiros. convincing. Radhika, All in. convincing for you, the bonus? It wasn't very clear though. But then Yeah. I don't think the Chambal Challengers would even want to challenge it. He was Yeah. just hopping in. Yeah. Lucky, very lucky. And Jay Kumar. Naveen, just I have a avoids it. question for you. Was Yeah. Humpy Heroes relying more on Gagan Gowda? Undoubtedly. Right Undoubtedly. shape. 1 point. And rely in Chambal terms Challengers. of Jersey number 2 out. the raid points and also the But then defense. And Gagan now Gowda- Ritik. Yeah. Joined the team very late, is it? No, I mean, he blossomed Maybe a little. 2 Not minutes very late. Yeah. Yeah, two matches late or 3 matches. Yeah. Yeah, only 2 matches. Yeah, correct. They did not start well, and then when Gagan came in. But I'll tell you what, more than Gagan, the Narasimha does not agree this point with me, but I always tell him, listen, Gagan can be your BrahMos missile, but your Rafale jet is your Shashank. Because Shashank, without that left raider, nobody to revive Gagan Gowda when he gets out. And the 3 all-outs that they succeeded in one of the matches where Gagan was there, and I think it was the Periyar Panthers. Yeah, I'm very sure it is Periyar Panthers who actually targeted them out. Every time Gagan used to be on the bench, he got never revived back. So along with Gagan, Shashank is what should be very instrumental. And yeah, Shashank also has gone for some trials, and Gagan also now going in for trials. And Kiran BS comes in. So that actually gives opportunity for Kiran, who has to succeed, but no. Right out. Just runs in 1 point, to Chambal the Challengers. nose of the left-in defender. And also look at that, Naveen. He's completely succumbed to the situation. Right. He's not definitely agile there. Yeah, and also he's struggling with that injury. That right knee. Maybe. Exactly. Yeah. There is an issue because he's also Kiran BS also is from Bengaluru. You know what? His father is a painter. He does painting work as well. I mean, painter not in terms of painting some portraits or something. The normal regular work, the hard-earned labor of the painting job runs the family around for Kiran BS. So he has to take care of his leg, very importantly, along with raiding, of course. Now Tejanayak, can he respond well for the sound? Yes, he has responded. And he's got the big whale, Right shape. not a fish. 1 point. It's a whale who's Ambiro. going out Jersey number from that 11 right out. in position, Sanskar Mishra. Exactly. Targeting your raider. And his acceleration is so good, Naveen. And the extension of the arm. Why was he so close to the back line, though? Yeah. See, we have seen Sankar Mishra go for those surprise tackles from the in Exactly. positions.
I think he was ready for that, but did not go back in time. And now once Mudaliar, do what I did. Sukesh Kulal, I've told him to have Bonus patience, point, jumper challenges. but he does not. Right out, 1 listen to point, me, or Hampi rather Heroes. is Coach Narsimha. He goes for the ankle hold immediately. And was dangerous on the tackle. I love the way right cover supported him, Naveen. He was jet speed there. And I guess, all the girls in the, auditorium or at the stadium, they thought, Gagan would be there on the mat today. The Gagan and I is unfortunately not playing. Yeah, they're not actually 1 affected. point. Hampi Heroes. Because This the is number man 8 out. with the lovely legs is doing the job. So they're not bothered. Gagan, sorry Maga, you're not being missed here. Teja is filling up for you. With raiding and of course with some attention. Yeah. I hope he's listening to this, Gagan Gowda. I'm sure he will. He will be. He said before he boarded the bus for the trials, he said, Anna, I'm going to listen to all the commentary. I'm going to listen to what all you're going to tell us about me, about everybody. I said, yeah, please do. Yeah, please do. And Uday Kumar has done well. You have been, Naveen, I should tell you, you have been the cheerleader for Gagan. Seriously? Were, man. I do cheer for anybody who does really well. And of course, for anybody who also, learns the game, Radhika. Because see, what we also did with Gagan was, double thigh hold attempted. He starts the midline. Girls, keep quiet. He's not crossing. Right. This is where they need to review it, Naveen. And look at them. Defender. Look at them. They should review it. They should review it, Hampi Heroes. 55-4. 55. And they are reviewing it for sure. And 4 of them in the question, Naveen. Yeah. 4 of them in the question. Will that be the first super raid? There was a back hole that failed. The covers came in. Right out. He 1 it. point. Jumper challenges. Naveen, he did not cross it, Naveen. He did not, but Hampi Heroes are challenging this. Teja Naik was given out. Hampi Heroes have a review. They should exercise this. They should. TMBR, They should. Hampi Hero challenge, rider safe. Our decision, rider out. Please review. Naveen, I'll say without even checking, Raider was safe, Naveen. Brilliant. Yeah, first the double ankle hold, then it got converted to a missed out back hold from Rehan Sheikh. Then Durgesh Sahu goes in. Akshay is still not coming in. But. I think the review will be successful, Naveen. The first attempt, he completely crossed the midline. Good on the Look at zoomer that. as well. Yeah. Good on the zoomed angle. But is that convincing for Review Rambir Singh? successful. Rider safe. Oh, 2 yeah. points. Hampi Heroes. Look at the sound. Captain, Hampi Heroes, your review returned. And Deva wantedly, I'm sure. Yeah, Deva and of course Simbu, our audio engineer, wantedly reduced my mic volume to raise the arena sound. Because it's Teja Naik. 17 out. Absolutely. And it's just a 2-pointer raid, though. But then that's a good, lovely escape. Yeah, Simbu is our audio engineer there, Radhika. I'm sure he's listening to me. Simbu, okay, pa. Pasangala katitanga ipo ye mic volume konja ethi vai. I'm just saying. Naveen, what's the schedule from tomorrow for the challenger round? Yeah, I will say that. I will definitely tell that. 5:30 the matches begin. I was just telling Simbu that the girls have shouted for Teja Naik. Now the mic of my volume can be increased. Just here to this. Just here to this cheer. Yeah, he definitely needs a long bat. Come on, he needs a long bat. And he's inflicted the all out. Forget about the long bat. The all out. Girls can't keep quiet here. They've been really swept off their feet with the lovely feet work from Teja Naik. And those thighs have done all the jobs right, Naveen. Those slippery thighs have definitely made a big comeback for Hampi Heroes there. Half time, change the code. Very much. That's the half time as well. Jay Kumar tells us, and we did not even realize 20 minutes have been just flown away. Teja Naik, yeah, lovely, as you said, correct. Slippery thighs making the effort.
and he's been good today. 12 great points. Madhu Kaverappa slightly struggling, but that's not a problem. Teja Naik is filling in for Gagan Gowda's fan following, and he's giving him good competition. Stay on with us. Small break. 1 point lead for Hump Heroes. We'll come back soon with the next 20 minutes. Welcome back, everybody. As we are speaking about Teja Naik and his raiding brilliance, but the tumble challenges have also done well. Teja actually started off the proceedings. Of course, his father, Mr. Lala Naik, will be really happy from Davangere. And you know what, Radhika? Teja Naik's brother is a national level judo player. So he and his brother actually train together. So that's why that physique is so much natural. It comes naturally to Teja. Of course, he hits the gym, no doubt. But being a judo player's brother, they train together, and that is why the strong force in his thighs and shoulders, and of course his legs, it's very good. Kiran B is also trying to support Teja Naik, but Sanskar Mishra was being tackled. Radhika, watch this. After the high pointers, I want you to name this tackle. I want you to name the hold that was put in by Suhas Nagraj. That is something that I have not seen ever on the Kabaddi match, interlocking the shoulders of the shoulders. Yeah, exactly. Maybe it was, not a technique, but then it just happened so in the moment. Yeah. It could be kind of a back hold itself. It definitely happened in the moment, but very much presence of mind there. And this 2-pointer raid, this set up the arena on fire, and then the all-out brought Humpy Heroes back into this match. So both the teams have inflicted one all-out on each in the first half. And this will be a very, very exciting second half, as Jay Kumar says Sanskar Mishra to raid first, as they had won the toss. Right, yeah, you just spoke about Gagan Glorious Gowda being a very big, cheerful person. He's a very silent man, I'll tell you that. Right corner, Narasimhamurthy today is committing a lot of errors. Shape, 2 Last points. two matches was Chambal good for challenges. him. This is number 1 and 4 out. Swept off both the corners. First raid in the second half. Exactly. I think, just taking the radar into your shoulder span is what is required for a frontal block. When you miss that, the angle will be good for the radar to escape. And yes, as you say, the crowd is all cheers for Teja Naik. There is one dialogue of Prabhas in a green, cut out Chukikoni Namma Arjun. Oh, yeah, we will hear that dialogue. Oh my God, he's crossed the midline. For sure. Right now, 1 point. Chambal challenges. They should review it. No, they should review it yet again. They should review it. They will. And before even the Humpy Heroes and we spoke, I think the crowd wanted the review. Come here. No, Radhika. Oh, here. No, he did not cross it, Naveen. He just, was on the midline, but he did not cross it. Team MBR, Humpy Heroes challenges, right accept 3 point. Our decision, right route. Please review. Madhu Kaverappa said only 3 points, but there were more in contention. I think twice the hands were taken off, and the last touch, Radhika, what's the last touch? Yeah, the last touch itself, Naveen, he did not cross the midline. That's what I see. Here, he turns. He wanted to go in for one more, but then the hand's been taken care. But yet again, he does it for the last time. Look at this one. On the line somehow.
Oh, Yeah, he crossed freeze it. that frame. He crossed it, Naveen. Yeah, freeze that frame. Freeze that frame. I think he's done it. I think he's done it. Oh my Yeah, God. he crossed it. Yeah, his middle finger, I think, is He crossed. crossed it, Naveen. Yeah, the longest And finger that in would the be hand. more points. Oh, definitely. Definitely. Now count how many points also maybe. Tough Yeah, decision. that's what I'm saying. It should be 4 or more. It should be 4 at least. You know, Correct. because the third attempt, every defender was on him. Correct. So both the covers for sure. Gopi The and third the one, other cover. 4, 5. I think 6, My 7. God. It should be a sweep out, Naveen, if things work out in favor of, Teja Naik. It would be a complete sweep out of the team. Oh my God. And if Rambir Singh wants to hear Chamundi Vihar Indoor Stadium erupt and the roofs to come down, he will offer it against the Chambal challengers. And he will offer in favor of the Teja Naik team. My God, that's a massive rate. It should be a 7, 8, 9 pointer, Naveen, if things work out. Oh my God. Just the review. It Yeah. would be the biggest of all time. Yeah. And it would be all eyes and ears on Rambir Singh. I'm sure Rambir Singh is also standing up on his table and reviewing this. That is the that is the pressure. I just imagine Rambir Singh squatting and standing up on his table and watching it in his zoom lens and eyes to see if he crossed the midline. My God, this is going to be one Mission Impossible raid. Even Tom Cruise will be happy about this. I'm sure he'll not be happy with Teja getting all the girl fans behind him. Tom Cruise. Yeah, take enough But time, yeah. but the verdict should be, exactly on spot. 5 points. Oh! Raider said Review 5 points. successful! 5 points are red! Here the Chamundi Vihar Indoor Rewritten. Stadium roof is collapsing down! My God! Oh, hang on, guys! Oh, look at that! They are celebrating in the eyes, and this is as if Teja Naik has won the World Cup of Kabaddi. Can you believe this? I also wanted to see if it was a 7-pointer race. Just because I saw everybody on Teja Naik. Not this attempt. The final attempt, everybody was there, Naveen. Everybody was there. Correct. Everyone was there. The only man who was not actually there was Vansh Modaliar, and he's been sent out. And Sanskar Mishra seizes this opportunity to come back and try and revive this 5-pointer raid. My God, what has Teja Naik done today? And Yuva Kumar blinded Right was out. Sanskar Mishra. Bonus, Chambal Yuva challengers. Kumar with the Right dice. out, 1 point, Ambiru. This crowd this Saturday evening has got the party cut out here in Mysuru. Lovely. That gave all the confidence to the defense as well to go in Right. for a single-handedly block of that tall raider. Raider shape. 1 plus 3 Take it all point, out. Ambiru. That's it. All I out, think Chambal from here challengers. on in, Radhika, if the Hampi Heroes lose this match, All it's in. all their fault. Look at the kids. Look at the kids. Enjoy this. Naveen, but we Time have out, seen Ambiru. massive raids for Humpy Heroes, but the score difference isn't much, is it? I know we might add a couple of more points for Humpy Heroes with the just one player remaining. But Chambal challengers have been nice, good as well. ಬೋನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ರಿ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೊಡ್ಕೊಬೋದು ಕ್ಯಾಚ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೊಡ್ಕೊಬೋದು ಕ್ಯಾಚು. ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಏನು ನೀವು ಹೊಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಇಬ್ರಿಬ್ರು ಈಚೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಹೊಡ್ಕೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಡ್ರಿ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ರಿ. ನೀವು ಅವ್ನ ಕೇಳಿ ಹೊಡ್ಸು, ನೀನು ಆಡ್ಸು. तीसरे बार पाया, दोनों कॉर्नर जा ही नहीं रहे. Okay. Both the coaches spoke about the defense. Radhika, you want to decode what Narasimha said in Kannada? Very simple and easy. I don't know, Naveen. When you are the expert, I prefer to zip. No. What he said when, was... when I have a Harshit or
Ayush, I try to, play my Bonus tricks and point, all, jumbo challenges. but then You try to play the card, right? So that is what exactly Narasimha said. What Javed did, Javed Khan has been introduced there on that left corner. That's very good instead of Rehan Sheikh. So what Javed Khan did, exactly that was the point that Narasimha actually shared. He said, let the raider get the bonus. It's okay. Don't give him touch points. When you go for the tackle, you're giving touch points, and then you're giving away, couple of points together. So don't do that, is what Narasimha actually said, and that's what the defense exactly followed the coach's order. So good that they are following the coach. And Teja Nayak got a Super 10. I think for the first time in the Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. And Teja Nayak getting a Super 10 without lovely bit of Gagan bonus. Yeah. It was And a he got it. bonus, Naveen. I guess it was a bonus. Attempt was good, nevertheless. But, They're not screaming awarded. for every lad that comes from Hampi Heroes, Naveen. This is totally a local activation happening. Yeah, but I'll tell you, I did not get this opportunity about Kiran BS to speak about, Radhika, I'm sorry, I'm speaking about his skin, the tights that he's worn, the red, attractive or rather disturbing tights. That is his lucky mascot, that's what he says. He's got 2 or 3 of Does he wash it? that color. Yeah, he does. That was my first question. I asked Kiran, how many times do you wash? I say, Anna, every match, come on. I have 2 or 3 pairs like that, and everything is of the same color. Yeah, so that is his lucky. The print and the color is lucky, not that particular type. Correct. The print and the color. Yes, very true. 12 touch points for the lad who's been setting the Chamundi Vihar Indoor Stadium on fire. And under the 10 he goes, Gupti. Jersey pulling, I saw a jersey pull. Has the referee seen it? It was a jersey pull for sure. Teja Naik also Number 33. is challenging that one. Yeah, Jaykumar and everybody will get into a conversation. Radhika, you saw the jersey pull? Yeah, the jersey pull confirmation is coming in. Yeah, there was Adeshe, one. 1 point. Hampi Heroes. Jersey number 33, Jesse Pulli. Yeah, correct. How many times Hey. he'll be lucky, Naveen? Saturday night. Jersey number and 33, these guys Jesse have their Pulli. party on. Green card. No Jesse Pulli. And green card there awarded. Substitution. Sambal challenges. Please come. To, Jersey number 5 in, 55 Abhiram. out. Yeah, he pulled the jersey. There. Might not be Exactly. intentional, but it went with the Definitely momentum. not intentional. Yeah. But then the tackle happened just because of the jersey pull, so that was the right verdict from the referees there. And Dua Raid came in after so long, and this is Sankar Mishra. He's been knocked out. Wow. Right out. Left corner. 1 Look at point, that. Hampi Heroes. That's the booty dance that's happening in the stands by the guys in front. Right, left corner. Sukesh Kulal goes for the attack. Ritik comes in for the cover. Brilliant. Right. This is classic kabaddi. When a corner defender goes, Absolutely. cover comes in and covers him. And it's all about the understanding between when does the defender attempt and when to execute the support. Now I think the correct. Happy Heroes, they just can relax for a bit. Do not go deep in when you do not want to. And their defense, especially their defense. As I said, Radhika, the 2 all-outs that came in, if Hampi Heroes lose this, it's because of the defense. And look who's here! Look who's here! The boss is in the house! Durgesh Kumar comes in, does not get a bonus point. And Durgesh always comes in when tumble challengers are in a deep bit of a bother. He's not 100% fit, let me tell you that. He's just 75% fit. And that's okay, he says. Sanskar Mishra is struggling. That is why his elder brother, like so-called elder brothers come in. Yeah. But then Naveen, from tomorrow when the challenger round starts, it's again a fresh start for all the teams. Nothing is carried forward, is it? So why do you want to risk it? Because you will anyways make it forward. Yeah, correct. But I think they want to stamp their authority. That's what it is. Just trying to be there on the... as I said, see Adeshe, the defense. 1 point.
Chambal Sukesh challenges. Kulal, Jersey number 4 out. hang on with the Now this unnecessary reminds me tackle of attempt. some dialogue of Mahesh Babu Naveen. ఎప్పుడు వచ్చాం అన్నది కాదు బుల్లెట్ దిగిందా లేదా. Adi kavala beta, right. It's about saying it's not important when do you come. It's about when the bullet pierces you. And Teja Nayak today 1 point. has become Ambiru. Jersey a number 8 cannon. out. Look at the booty dance that's happening. Oh, right. Take a bow. Right. I think we'll have to go out there. I think Harshit and everybody in the post show, I think they should try out a booty dance. Radhika, what do you think? Bonus point. Chambal challenges. I just want Harshit to save his voice. I mean, I just saw little discomfort with him. I just wanted to save his voice. That's the only Yeah, concern. very Other than that, he is, doing a great job there. Yeah. Quick bonus point on the previous race. Teja Nayak knows it's not just the crowd that he has to please, it's also his coach. So he takes it very smartly and intelligently. Kills all the 30 seconds, comes back. But there I is tell you, I think it's enough and raining. more time for Chambal challenges, Naveen, even to come back now. If you have Durgesh Kumar, every time go for a bonus and then go for an attack, very much possible for Chambal challenges to even come back. There's still a lot of time left. Yuva Kumar as he dashed him off. Yes, they Right have. out. Bonus point. Look Chambal at the challenges. booty dance once again. Right out 1 point. And the Ambiru. reason Deva is cutting to that angle, Radhika, is because after the match today, Deva and all the lensmen are trying out a booty dance for sure. Right. Yeah, completely dashed off. But then before that, he has taken the bonus, so the score difference remains the same. Just do not let this, all out happen for Chambal challenges. That's the way they can have the hope and not the silly errors. Unnecessary. Right, I Really say. unnecessary from 1 Lakan point. Kashyap. Ambiru. So the Jersey entire number 6 out. bench is being fielded in by Pradeep Yadav on the substitution lines. Lakan is a better defender than that. Very, very good work from Kiran BS. Right. Slight pause and turn. That's it. And those lucky tights definitely had paid him. That's a lot Yeah, there. And they do. Durgesh Kumar, the moment he came in, already 2 rate points to him. Sure, he'll go for the bonus, but then look at that brilliant tackle. Bonus point. Chambal challenges. Right out 1 point. Yes, Ambiru. marvelous. And even the best of the best has not got an answer for Ritik's blocks and dashes today. Right cover. Wonderful. Check that out. Sukesh Right. Kulal then goes for the support. Not necessary, says Ritik. Dashes Durgesh out. They are hungry. They are hungry for more Humpy heroes. I think they have decided that this Saturday night I is think going to be a big nah, match. the crowd is feeling their energy, Naveen. Yeah, So very much. that's definite advantage when you're playing on your home ground, is it? Oh, totally. And I've been very importantly asking them all the questions as the defender stepped out of the end line. I think yes. Right, I I say. think a defender 1 has point. stepped out of the end Ambiru. line. Jersey number 44. Out Unwanted. of bound. Now that should be the final nail on the coffin, Naveen, because after this, recovery period isn't there Right. for Humpy heroes to, come back. Correct. Correct. Once Mudaliar being a raider, Radhika, he goes off and that's only left Abhiram, a defender. Now what can he do? Can he save it? They will give him the bonus. Nevertheless, it will be a third all out if this happens on Chambal challenges. And as you said, come Right, on, I say. Narasimhamurthy. Bonus plus 1 point. Chambal challenges. Not Jersey needed. number 1 now. Madhu Kavirappa just stares at him. Exactly, he did not listen to the coach this time around. He's Right. error prone today, Naveen. Yeah, totally. Totally error prone. 2 strong high fives on 2 consecutive days by Narasimhamurthy. But then today, right corner, it's been a problem. Sanskar Mishra is back on the mat. And don't forget, we had that question. Are Durgesh and Sanskar the best raiding Dayo? They are there on the mat. This is the time for them to actually fire as a partnership. Sanskar definitely will try to revive his elder brother back on the mat very soon. Narasimha knows it. Yeah, Sanskar Bonus Mishra. point, Chambal Just challenges. getting the bonus point. How does that help? Wow! Madhu Kavirappa on the pursuit.
gets his hand and he says, go, 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 go. I have time for the all-out to be inflicted. What a lovely kabaddi brain that captain has got. And because of the wrist injury via cricket, thanks to that injury, we have such a nice talent here, Radhika. What a good thinking by Madhu. All in, Chambal. Oh, exactly. You know, the way Strategic Sankar Mishra timeout. stepped the end line, he should be pulled out. That's what happened. And Solo Ranger on the mat, he cleverly finished them off. Look at his reaction. Come on, Madhu. You need to be a little more friendly, my friend. I'll tell you that. Respect the players. ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಡ್ ಸೇಫು ಥರ್ಡ್ ರೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋದವರು ಬಾತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 28 ಆದಮೇಲೆ 29-30 ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿರಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ತೀವಿ ಬೇಡ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬೋನಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಬ್ರಿಬ್ರು ಪುನಃ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ का ट्राई मत करते Oh, they're not listening to Pradeep Yadav. Naveen, I'll just try and decode. So, यार कबड्डी खेलने आया तू मेरे भाई तेरे को इतना तक नॉलेज नहीं है यार they wanted him to play on the जबरदस्ती ट्राई मत कर and बे first two raids that go empty should be a 30-second raid. Yeah, very correct. But why did Narasimha say that? Because, of course, they're leading, man. That is fine. But he told one major line in the starting. He said, "Naale inda jaasti irodu kelsa." Okay. Don't get carried away. Is it? Jasti is more. Right eye shape. 1 point, Chambal challenges. Jersey number 4 out. Right. Yeah, this time around, lovely kick from Sankar Mishra there. Yeah, now they have enough time and more for the Team Humpy Heroes. It crosses the work line, makes the raid legal. But then the way he is confident today, but then he listens to the coach. That's a good sign. Playing as per the situation demands for the team. Now, Chambal challengers, they need to put in some quick raids. Durgesh Kumar, you have been called in for the rescue of the team and you need to show what you're made of, and yes, this should be a multiple pointer. Chambal challenges. Yeah, multiple point for sure. Kiran BS. Defender. Not needed. Defender. That's what Narasimha Rider. said, Radhika. Exactly, Rider. that's what he said. Let the bonus go. Don't go in for attacking the raider. Don't give Jasti is multiple more, points. is it? Yeah, Jasti is more. Bonus plus. Team MBR, Chambal challenges, challenging, bonus plus 2 point. Our decision 2 point. Please review. They want the bonus as well. Because anyways, you know, he is normally good at that bonus as well, Naveen. You know, I but don't then think this so. time He's around, stamping on the bonus line. This time around, definitely not. This time around, Yeah. not. And after that, the ankle hold came in from the lucky tights. That was not lucky there, but I think he has to wear a different tights for the defense, maybe. But don't go for the defense, Kiran. Come on. He's tapping on the bonus line. He should cross it to get the bonus. I think Chambal challengers will lose their review. But yeah, I was just telling what Narasimha said. Unsuccessful. A review Only 2 unsuccessful as point. expected. Chambal challenges captain. Your review is Yeah, over. no more review. So Narasimha said from tomorrow there is more work. That means from tomorrow the challenger round is going to start. Exactly. So don't get injured. That's why he wanted his raiders to actually come in 10-27. 1 and 2nd raid. No, just not going out there for the injury prone raids. Oh, Teja is having a ball 1 of a point. time. Humpy Black Hero. and Lal Jersey number 6 gives out. away another point. Easy. Chambal challengers' strategy should be, just play with your raiders, not with the defense now. Yeah. Correct. Because when you have Durgesh and Sankar both, the defense should actually rest. At the moment Madhu we thought says- they're coming close, but then, again, Cillian from the defense, 1 that point, gives Chambal more challenges. pressure to the Jersey raiders. number 4 out. Now left corner, Sukesh Kulal. Madhu Kavirappa was telling the right corner not to come in to Krishna, but he forgot that Sukesh Kulal was playing a high line defense and does not go back in time. But I'll tell you what, jokes apart, today
I think Radhika out of the 14 raid points. Lovely back kick on Durgesh standing on the left corner. Why? Good dance is on, but why is Durgesh standing on the left corner? That's what, what was the need, because he was being called in for rescue as a raider. It's almost like, what an error. What an error that was. Total thinking lapse from Durgesh Kumar. But I was telling you, Krishna! Rider out of bound. Raider out of bound without a touch. Sanskar Mishra, no review with the tumble challengers. They'll have to go back. He did not have a touch on the left corner defender. He stepped into the lobby. Sanskar, he begs and pleads with the referees. Was there a touch, Radhika? I don't know. No, If there the was kick not. was there, Naveen, I don't know, because we were on the other side of the camera. Maybe he executed a kick, that's what I think. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನ್ ರೈಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು ಆಯ್ತಾ ನೀನ್ ರೈಟ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಮಾಡು ರೈಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನ್ Yeah, why did we get the audio off? It's fine. When I ask you to raid, then raid. That's what he says, is it? Correct. And he also said, please do what I say. Kiran went for the ankle hold. That is what Narasimha was not happy. Oh, he was furious. He was really furious. Rightly so. It is not needed. Listen to your coach, Kiran. That's it. Very simple. Can have a little bit of an argument with your coach, but remember, coach is always right because he only speaks for your good. He does not speak for his own good. The talent scouting, not so much for the coaches, but for the players from Yuva Kabaddi series. That's for sure. So, Kiran, I'm sure the coach's seat is such a hot seat, Naveen. Yeah, correct. It's all Tony out there. Totally, no doubt. Yeah, in that right corner, Krishna has got another chance. And still, I've asked him to reduce his brightness. He's still on that process. He told me yesterday that I'm trying to reduce my brightness to trying to be in the sun more. But that's not affected. That's not affected him at all. Madhu Kavirappa with only 2 raid points today. See, what I like about Madhu is, he does not, I see as a captain, we have seen many players wanting to go there and always take the limelight and keep performing. So that's why I like him as a captain, where he underperforms. He knows who's got the momentum, who's got the time on their side, who's got that, running touches, running points. So he lets that raider to do the job. It's all about maturity, Naveen. We have seen him growing here. What is Pradeep Yadav saying? I think his mic is off. 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೈಡ್ಗೆ Okay, now Kiran completely agrees to whatever Narasimha said. He said, in a do or die raid, if you're going in, first waste the first 10 to 12 seconds. Start from the 15th second to attack is what Narasimha said, even in the do or die raid. That's again a good point. Exactly. That's what they normally do, Naveen. When you are leading, and if it's a do or die raid, killing of the time is also equally important. But not the right corner. Krishna, number 14 out. I know he's eager to perform, but he needs to stay low. He needs to stay down. In one of the post-match press conference, Madhu was sharing about why Krishna has been such an underperformer is because he's very good when it comes to practice matches, but he just gets a little anxious to score points. That's why he's going out there and putting out those unwanted tackles. But yeah, do or die raid, Kiran is holding it still for the first 10 to 12 seconds. At 10 he starts. Yeah, he's listening to the coach. Has he got the bonus point? He's very confident. They still have the review though. Naveen, they might use it. Not necessary. He's got the bonus point. He's got it. Very good. Once at again, least get one more point. They should get at least one more point out of this game, Naveen. Get one touch point here. Then you will be, losing the match with 7. Yeah, correct. Tumble challengers need to think on those lines because no bonus. Working in favor of the umpires. Oh, no, don't go back. Come on, Javed. Have an eye on the scoreboard like Madhu Kavirappa does. See, he comes in,
sees the scoreboard and easily crosses the walk line, makes the raid legal. Also goes for a bonus attempt. And Abhiram gives away another point. So I think they won't get even 1 point from this match. There was a, the costume pull as well. Jersey number 33. Oh. Yellow card. Nah, Naveen, what was the purpose? 14 seconds remaining. Yeah, correct. No, I think he already got a green card before to this for a jersey pull. Remember? Yeah. On Teja Naik. Yeah. I think, see, he likes Teja Naik's jersey and he likes Madhu Kavirappa's trouser. Right, after the match, you'll get it, Abhiram. Don't worry. Sad that you got the yellow card, Abhiram. What is Vansh Mudaliar doing? Come on! Tumble challengers don't even get a single point out of this match. Bonus was there for the taking, Naveen, and after that you would have gone for an attack. Losing with 7 or more also would not impact much now. At least you would have attempted. Error in judgment, error in strategies. It's been that sort of a day where the Tumble challengers are totally outplayed. And even without Gagan Glorious Gaura, second time the Humpy Heroes have won against a strong side. At least a comparatively strong side like the Tumble challengers. And in the second half, Radhika, the Humpy Heroes have scored 25 points. And in turn, the Tumble challengers have just scored 17 points. My God, that's been a major difference. And this raid, Teja Nayak turning it around. It should have been more than 4. But nevertheless, he's got that 4 raid points, 5 points rather. Five. Yeah, 5-pointer raid. And 3 all-outs were been a problem. But yeah, for the Humpy Heroes, defense worries are there. But that has been masked, as always, by the Raiders. And this time, this man, number 12, Teja Nayak. And of course, his father will be really, really happy watching this match, Mr. Lala Nayak. Yeah, we have seen moments of brilliance from the losing team as well, Naveen. But then strategically they failed. Here they failed big time. Yeah, very much. Totally. The strategies on the tackle, because there, see, not much to choose, Radhika, from the raiding department and the defense department. The problem is the all-outs. There, the all-outs, the super raids, and all that super tackle points, and even that extra point where Madhu Kavirappa was raiding and Sanskar Mishra stepping out of the end line. And then when he was raiding, he went into the lobby without a touch on the left corner defender. See, all that unwanted errors. That is what has cost the match for the Tumble challengers. But yeah, what a lovely match for Teja Nayak here. Absolutely. He should be kind of a Fazal Atrachali in place of Surendra Nada today. 17 raids, 15 raid points, 1 super raid that put the stadium on fire. Raid strike rate 88%. Yeah, very much. He's very good. First super 10 for him. Much needed for all that effort that he puts in on the Kabaddi match. Yuva Kabaddi. Yeah, even with 3 tackle points, he gets the best defender award. Good that he did not attempt too many errors, unlike Narasimha Murthy on that right corner. And overall, that is the end for the Humpy Heroes on the booster round. They finish in 3rd. And the next match is coming up will be Periyar Panthers and Aravali Arrows. I'm sure the Aravali Arrows want to win that match very soon because they want to go to the challenger round with a win behind their back. But both teams on the court also will be very challenging to watch out who will be going out there and winning this match. But good match for the Humpy Heroes. Radhika, thank you so much for joining us in the commentary box. After a small break, we'll come back soon with the 8 p.m. match. Stay tuned to Fancode. Thank you so much. I'm Naveen Shori. Good night, guys.
Consecutively fourth win for Hampi Heroes in a row. Welcome to the post-match presentation of match number 92 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. We would like to start this presentation with thanking all our partners. First, our broadcast partner FenCode, Fantasy partner Dream 11, Physio partner Department of Sports Science, Jesus College of Physiotherapy, Hospitality partner Ginger Hotel, our healthcare partner Ramakrishna Specialty Hospital. In the presentation today, we have the birthday boy, Mr. Mohan Kumar, NN Physical Education Director, University of Mysuru, Technical Official Yuva Kabaddi Series, and also a party giver. Thank you so much for coming here. ये मुकाबला खेला गया हम्पी हीरोज बनाम चंबल चैलेंजर्स, जहां पर एक मिरर इमेज स्कोर आप सभी को नजर आया 43-34, जहां पर 9 पॉइंट के मार्जिन से हम्पी हीरोज ने मुकाबला जीता, और जीता नहीं कहना चाहेंगे, कंक्रीट किया अपने लिए। बहुत ही अद्भुत मुकाबला था। सीधा चलेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की तरफ, और शुरुआत करेंगे इस अवार्ड्स के विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ, जो रहेंगे हम्पी हीरोज के द वेरी फास्ट एंड स्पीड, ही इज नन अदर देन तेजा नायक, 15 रेड पॉइंट्स इन हिज किट टुडे। लेट्स हैव अ लुक एट हिज परफॉर्मेंस। Just fantabulously he gained many more points, and now the time for the best defender of the match. और अब बात करेंगे हम हीरोज के एक और ऐसे डिफेंडर की जो लगातार अच्छा कर रहे हैं, और आज भी इन्होंने अपने पेशेंस को होल्ड करके रखा और बने हैं बेस्ट डिफेंडर शिवा कुमार एस फॉर हिज अमेजिंग 3 टैकल पॉइंट्स। आइए इनके प्रदर्शन को भी निहारते हैं। And now the time for the kabaddi कमाल of the match, और हम्पी हीरोज एक दफे 1-2 पग से पिछड़ रही थी, पर यहां पर आकर तेजा ने एक ऐसी रेड लगाई जहां पर 5 पॉइंट अपनी टीम के लिए प्राप्त किए और पूरी तरह से मैच को अपने पक्ष में लिया। तो तेजा नायक के जाएगा ये शानदार अवार्ड खाते में। So that's all from the post-match presentation of match number 92. Thank you so much for joining us.
Kanisa, match number 93, Periyar Panthers versus Aravali Arrows. Rajasthan Derby का समय हो चला है. युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023. It would be the last game of booster round. तो देखते हैं कि कौन सी टीम किस अंदाज में चैलेंजर में पहुंचेगी और अब समय हो चला है राजस्थान डर्बी का. So here's the time to invite both the teams on the mat. So चलिए समय हो चला है दोनों ही टीमों को मैट पर आमंत्रित करें. उससे पहले बता दें कि आ रही है एक ऐसी टीम जिन्होंने दिखलाया है कि कैसे किया जाता है अपने विपक्षियों का शिकार. सो आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के मध्य आ रहे हैं पेरियर पैंथर्स. और अब आएंगे पेरियार को चुनौती देने इनके सबसे बड़े राइवल्स. तो बुलाइए अरावली की चट्टानों से परिपूर्ण अरावली एरोज. Yes, the story has been such that a few Panthers have walked in to the Aravali Mountains seeking certain bragging rights. Yes, we have the Aravali Arrows going up against the Periyar Panthers in this exciting game, and a fruitful booster round is what we've had across this entire fruitful summer edition of Yuva Kabaddi series. And to introduce the starting 7 for the Periyar Panthers in this game, in the corners we will see Mukesh Chaudhary and Monu Prasad. On the insides we will see Kanram Chaudhary and Nakul Saini. In the cover we will see Rahul Chaudhary and Manjeet Mitra. And in the middle raiding we have Sardar Chaudhary. Not to forget the substitutes, Lokesh Gosalia, we see him in the substitutes today. Anuj Saini, Gopal Singh, Richpal Jat and Rohit Yadav. Alongside me we have the one and only Harshit. Hey there Harshit. Yeah, Ryan, hi, good evening. और चलिए आपके साथ आज कमेंट्री बॉक्स से शेयर करने का मौका मिलेगा. सैटरडे इवनिंग को माहौल बनाएंगे. बताइए साहिल बागड़ा की बात करते हैं. इन्हें खेलने का मौका मिल रहा है. अरावली एरोज में चेतन चौधरी होंगे. प्रदीप सिंह आज जहां पर शुरुआती 7 में उतरते हुए नजर आएंगे. रोहित पंचोली को कुछ और करना पड़ेगा काम, जाकर हिट करना पड़ेगा डिफेंडर्स को. रोहित बेनीवाल भी वहां पर होने वाले हैं. तो क्या रोहित स्क्वायर आज काम कर पाएंगे अरावली एरोज के लिए? अंकित जट लेफ्ट कॉर्नर पर अमूमन की तरह आपको राजेंद्र भाकर नहीं नजर आ रहे हैं. शायद थोड़ा सा अतिरिक्त मौका हरिओम चौधरी को आप देना चाहते हैं. सोनू शेरोन, देव गुजर, प्रेम बडू, नवप्रीत सिंह और आफ्ताब खान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के खिलाड़ी के तौर पर नजर आने वाले हैं रायन. और आइए अब तक के अगर हम हेड टू हेड की बात करें ना इन दोनों टीमों की, तो 12 बार ये दोनों टीमें भिड़ी है और 8 बार अरावली एरोज जीती है. यानी कि पिछले स्टैट्स को अगर हम देखें तो अरावली एरोज कहीं ना कहीं भारी पड़ी है पेरियार पैंथर्स पे रायन. Yes, they have been the team pounding over the Panthers, but we will now look at the top 3 raiders. Gagan Glorious Gowda, as we call him, 171 raid points across 17 matches. He is on a roll and I'm sure he's going to come back and continue that dominance. Right behind him we have Sanskar Mishra, 154 points out of 21 matches. And there, Durgesh Kumar in the third spot, 138 raid points across 16 matches here now. जी हाँ, जयसूर्य नागराजन को यहाँ पर पिछड़कर यहाँ पर दुर्गेश कुमार आए, क्योंकि आज के अंतिम मुकाबले उन्होंने कुछ रेड्स लगाए और अपनी टीम के लिए पॉइंट चटकाए. बट आइए टॉप 3 डिफेंडर्स की बात करते हैं. तो लोकेश वहाँ पर गोसलिया नजर आएंगे, 21 मुकाबलों में 60 टैकल पॉइंट्स. अंकित जाट 21 मुकाबले में 55. और अब शिवा कुमार ने 3 टैकल पॉइंट प्राप्त किए. तो अमूमन तौर पर यहाँ पर आपको राजेंद्र भाकर नजर आ रहे थे 48 टैकल पॉइंट्स के साथ, पर शिव कुमार ने आज 1 पॉइंट ज्यादा प्राप्त किया, तो पछाड़ दिया है राजेंद्र भाकर को. बट रॉयन, आज का ये मैच राजस्थान डर्बी का है. एक टीम अरावली एरोज है, दूसरी टीम पेरियार पैंथर्स है. और इस मुकाबले के रेफरी होंगे मिस्टर करीम सर. टॉस जीता शायद मंजीत मित्र ने, अरावली एरोज माफ कीजिएगा पेरियार पैंथर्स ने. और आपको आपकी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर ये टीम नजर आने वाली है. Indeed, and another interesting fact is that, the first place in the defenders is up for grabs because Ankit Jat will be
He's just 5 points away from Lokesh Gosalia. Not to forget Manjeet Mitra, the man to watch out for in this match. 21 matches, 47 tackle points. He's gonna grab onto you and not let you go back. A tackle strike rate of 55.56. He is the man to watch out for in the Periyar Panthers lineup, Harshit. जी हाँ बिल्कुल रायन, आपने अच्छी बात वहां पर कही कि मंजीत मित्रा पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आज होने वाली है। और मंजीत मित्रा 47 टैकल पॉइंट्स है इस खिलाड़ी, अगर आज 3 टैकल पॉइंट प्राप्त किए तो शायद तीसरे पायदान पर वहां आ जाएंगे। बट अंकित जाट अनडाउटेडली 21 मुकाबलों में 55 टैकल पॉइंट्स अपने कप्तान चेतन चौधरी के साथ पूरी तरह से बेकरार रहेंगे। बट रायन, एक और स्टैट्स मैं आपको देता हूं कि पिछले मैच में अंकित जाट को एक भी पॉइंट नहीं मिला था और पिछले 2-3 मैच उस टीम के इतने बेहतर नहीं गए हैं। तो पेरियार पैंथर्स के लिए ये अच्छे संकेत है कि उनके रेडर्स अंकित जाट के विरुद्ध क्या आज फ्रीली रेड लगा पाएंगे। बट पेरियार पैंथर्स का स्टैट्स अभी कुछ ऐसे रहे हैं रायन। Yes, their stats have been such that they won 14 games, no ties for them, and across the last 5 matches, they have 4 wins coming in. So the Periyar Panthers would want this graphic to change to 5 Ws tomorrow when they begin their next round in this Yuva Kabaddi series summer edition. Periyar Panthers in the previous summer edition were the team who finished second. They would want to come on top in the second edition. जी हाँ बिल्कुल सही कहा रायन। आइए जल्दी से उस प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनीष ने वो प्रश्न किया है, इस मंजीत मित्रा द बेस्ट ऑलराउंडर इन दिस एडिशन? ओके, थोड़ा सा डाइसी प्रयास है, हमें आज भी एक्सपर्ट के तौर पर सुपर टैकल करने की कोशिश है, बट मुझे लगता है कि बेस्ट तो नहीं है, बट हाँ वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पर टॉप 3 में इस खिलाड़ी को मैं शुमार रखूंगा। जरूर और भी कुछ बड़े नाम हैं वहां पर आपको नजर आएंगे और रायन और मैं बहुत सारे डिस्कशन वहां पर करेंगे। रायन, आपकी प्रतिक्रिया भी दे दीजिए, क्या आपको लगता है मंजीत मित्रा अभी तक समर एडिशन के बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं? I second your decision. He is among the best, and he could be arguably the best. We can give him the best title if he can put out a couple more good performances. And not to forget, the Aravali Arrows, 22 matches, 7 victories, just 7. I'm sure they would want a lot more. 14 losses and 1 tie. The Arrows had a few good positives in between the season, but they've not been able to captivate, and that's the reason as to why they have 4 losses across their last 5 matches, Harshit. या लगातार वहां पर हार के साथ आ रहे हैं और अपोजिट रहा है वहां पर पेरियार पैंथर्स का खेमा। आइए आज दी एक्सपर्ट में क्या पूछा है मुकेश ने। अंकित जाट हैज ओनली स्कोर्ड 5 पॉइंट्स इन द लास्ट 3 गेम्स। हैज ही बीन परफॉर्मिंग ओनली अगेंस्ट द वीक टीम्स? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये अंकित जाट का जो क्रम है ये सिर्फ वीक रेडर्स के विरुद्ध अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर टीम में रायन कोई ना कोई अच्छा रेडर जरूर होता है। तो अंकित जाट इनका फॉर्म थोड़ा सा वीक है, मैं ही कहना चाहूंगा। ये सिर्फ वीक टीम के आगे परफॉर्म करते हैं, इसमें मेरा मत कहीं ना कहीं ना है। रायन, आपको क्या लगता है? प्लीज आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं दें। Oh, definitely not. We've seen the type of defender he's been across, especially in the initial games where he was, so ruthless. And I'm sure right now this is the match where he's going to prove us wrong and possibly claim that first spot. So both the teams are in the mat and they have warmed up. We get the view of the trophy. We will zoom in and get the match counted down. सो आइए बूस्टर राउंड के अंतिम मुकाबले की तरफ हम सभी प्रस्थान कर चुके हैं। राखी कुमारी होंगी यहाँ पर इस मैच की U2। आइए पहली रेड, ओह सरप्राइजिंग स्टाउंडिंग रेड यहाँ पर लगा दी रोहित ने। आते ही बेनीवाल एज ए लेफ्ट रेडर के तौर पर आए। सरदार जब तक सेटल डाउन होते तब तक ऑलरेडी उन्होंने रायन टच कर दिया था। तो सैटरडे इवनिंग की जैसे हमें शुरुआत की उम्मीद थी वैसे ही शुरुआत यहाँ पर हो चली है। Yes, Saturday evening, it's bound for a party, and this is a definitely party level start for the Aravali Arrows. But the question is, will it be another scoring party? Because we've seen all of a sudden when we've shifted from the 15-minute halves to 20-minute halves, the points scored have been significantly higher, and Nakul Saini will score points here for the Periyar Panthers to open their account. यहाँ पर हरिओम चौधरी यहाँ पर टैकल करने के लिए जरूर गए थे, एंकल होल्ड किया, बट नकुल ने देखी कितनी ईज के साथ, क्योंकि राइट कवर का साथ नहीं आया। अगर वो डायरेक्शन को इमीडिएट बदलते तो हो सकता था कि वो टैकल सक्सेसफुल हो जाता। बट ये अच्छी बात है कि अरावली एरोज के लिए शुरुआती दोनों अंक रेड में आए हैं। अक्सर आयुष अक्सर रायन बहुत समय लगा है अरावली एरोज को शुरुआती पॉइंट्स लेने में, बट रेड में बड़े जल्दी 2 पॉइंट्स आए, अच्छी बात है।
Indeed, it's a very good thing to get those points quickly in form of raids, and that's what you need to do to increase the pace of the game. But we've seen matches where both the teams keep on getting points back to back. That becomes interesting, but it always ensures that both the teams are very much in the game. Sardar Chaudhary now in for the Periyar Panthers, tries to jump and get back. The Panther tried to jump over the arrow there, but there was no escape for him. And the first tackle point of this match has been gotten. जी हाँ, हरिओम चौधरी वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद है। डाइव लगाना चाहते थे सरदार उनके ऊपर से, बट बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। इससे पहले सोलो सुपर टैकल के लिए वहां पर चले गए थे, माफ कीजिएगा सोलो एंकल होल्ड के लिए वहां पर चले गए थे, और पिछली बार नकुल ने पॉइंट लिया था, पर इस बार सरदार की जंप असरदार नहीं साबित हो पाए। और क्योंकि हम पार्टी की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानता हूँ, आर यू पार्टी पीपल, और थोड़ा सा वहां पर इग्नोर करते हैं पार्टीज को आप? Yeah, well, Harshit, I'm sure any of us who has, sports practice the next day in the morning will never be a party people, And I've been so used to having practice the next day morning that I would not go for parties. However, yeah, there are still moments when you have to have fun and enjoy. So yes, very, very briefly, I am a party person. I'm sure you're partying there, Harshit, in Mysore. एब्सोल्युटली, और मैं पार्टी करूँ यहाँ वेदर पार्टी बहुत कर रहा है, बट यहाँ पर इस पार्टी फेस्ट में यानी कि पॉइंट्स फेस्ट में पेरियार पैंथर्स को 2 अंक मिल जाएंगे और स्कोर पुनः एक बार बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा कमजोर डैश वहाँ पर आया था, और चेतन से आप ये उम्मीद नहीं करते हैं, और नहीं आप रोहित देखिए कहाँ से आए, लेफ्ट इन की पोजीशन से आए, कोई फ्रेम नहीं था रायन, तो ऐसी चूक देखिए बिल्कुल ले डाउन भी नहीं होना पड़ा नकुल को, और आसानी के साथ पॉइंट ले गए वहां पर, तो ये रोहित की कहीं ना कहीं बड़ी गलती। Yep, a big mistake indeed. Something you might do when you party too much and you still haven't recovered from the hangover. Anyways, jokes apart, I'm sure he is a top-notch athlete and he has his discipline. Speaking of top-notch athlete and discipline, Rohit there has just stepped into the lobby and he's caused himself to go back outside. वो जो एंटी ब्रेक सिस्टम की बात करते हैं ना, ABS, वो यहाँ पर ह्यूमंस में नहीं होते हैं, और अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हैं, मुझे लगा रायन इस बार सही भी किया, क्योंकि अक्सर कई बार रेडर जब अचानक से ब्रेक लगाने जाते हैं ना, तो वो एक दिन की प्रैक्टिस में नहीं आता है। कभी कभार आप अपने एंकल्स को हल्का सा ट्विस्ट करा लेते हैं, कई इंजरीज इसी वजह से होती है, और हम बहुत सारी इंजरीज पर बात करते हैं। एंड देखिए, आप तो स्पोर्ट्स लगातार खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, आपसे जानते हैं कि कैसे इंजरीज से बचा जा सकता है सभी खिलाड़ियों को, क्योंकि इस युवा कबड्डी सीरीज की समर एडिशन के खासकर बूस्टर राउंड में हमने बहुत सारी इंजरीज देखी है। Yeah, honestly, the best thing when it comes to avoiding injuries is warming up before and after. You warm up and you cool down after that, and I've seen these players do it very nicely. They're always warmed up even during the timeouts and etc. They are taking breaks. There we go. Periyar Panthers this time getting better in form of tackling once again, and the Periyar Panthers have gotten the lead. Harshit. जी एब्सोल्युटली, यहाँ पर आपने बिल्कुल सही कहा था कि इस बार मुकेश जो कि आपको एज ए राइट कॉर्नर, अनुज वहाँ पर टीम में नहीं मौजूद है, तो मुकेश एक बहुत ही अच्छे विकल्प बन जाते हैं। अनुज पिछले कई मैचेस में रेस में भी वहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, और अगर ऐसा टीम चाहती है तो कहीं ना कहीं मुकेश चौधरी वो कार्य अपनी टीम के लिए कर सकते हैं। अब सरदार चौधरी अरावली देखिए ऐसे स्टक हो जाती है, लगातार उनके लिए पॉइंट्स विपक्षी ले जाते हैं। यहाँ सरदार चौधरी अच्छा एस्केप रूट, क्या टैच हो जाएंगे? जी नहीं, जरूर अपोजिट वहां पर टर्न किया था रायन, बट वो टर्न इतनी स्विफ्ट था और डिफेंडर्स ने ओवररन किया कि आसानी के साथ सरदार चौधरी रन करते हुए 2 पॉइंट ले गए। Yes, take a look at this. The defenders there were just chasing him. It was like a game of running and catching there, and he got those points at ease. And coming back to the question, I've noticed how in the Yuva Kabaddi series, even when there is the review being taken, the players are walking across the mat to ensure their body stays warmed up. So these are a few factors, even after the game, ensuring that you ice the portions where you have strain, or even wearing a track pants, suiting up, wearing your jacket after the match. These are the few small components that make a very big difference when it comes to ensuring your body gets the adequate rest. And if you force your body to do something you cannot, you will often pay the price. And the defender here has paid the price, because Navpreet has done a beautiful job and revived a man, such an important radio for the arrows. Harshit. जी हाँ, बहुत बढ़िया सीनियर साबित हुए नवप्रीत अपनी टीम के लिए। राहुल चौधरी पीएन वहां पर अपने आप को पीछे नहीं कर पाए, और एक बहुत ही अच्छा कार्य वहां पर किया नवप्रीत ने। और नवप्रीत की बात करें रायन, आपने जरूर गुरप्रीत, नवप्रीत, और अक्सर ऐसे नाम आपको पंजाब में सुनाई देते हैं, प्रीत जहाँ लगता है रायन। तो अब मैं बता दूं हमारे सभी साथियों को, बताने से पहले लीजिए चेतन चौधरी ने आखिरकार आज कप्तानी वाला कार्य अपनी टीम के लिए किया है। एक बढ़िया सुपर टैकल, जंप करना चाहते थे खिलाड़ी सुपर टैकल के ऊपर से, चाहते थे चेतन की मजबूत पकड़ से बच जाए, पर नवप्रीत ने बहुत अच्छा साथ दिया और वहीं का वहीं रोक दिया, बिल्कुल स्तब्ध कर दिया।
Indeed, and take a look at this. The Aravali Arrows were on the verge of an all-out. They got that rate point, revived a man, and the super tackle for them. That's the kind of performance you need to put out there. That's the Josh Jazba Junoon that you need to depict whenever you play the Yuva Kabaddi series. Now Singh now for the Aravali Arrows as the score is tied at 7 each. या अब स्कोर वहां पर बराबरी पर होगा 7-7 और मैं बात कर रहा था यहाँ पर नवप्रीत की। तो नवप्रीत की रायन में इनके बारे में बताऊं तो राजस्थान पंजाब के बॉर्डर श्री गंगानगर वहां पर है जहां पर बहुत ज़्यादा गेहूं पाया जाता है। वैसे भी पंजाब तो किसानों की एक बहुत बड़ी मातृभूमि रही है, बहुत सारा एग्रीकल्चर वहां पर काम होता है। बट लीजिए यहाँ चेतन कर रहे हैं नई चेतना का संचार, दूसरा सुपर टैकल और कहीं ना कहीं अवेक मोमेंट राजेश गुज्जर साहब के लिए भी है, उनके लिए भी एक सरप्राइजिंग मुस्कुराहट मुझे नजर आई रायन। Yes, he was so happy there. And back-to-back super tackles here. That means they've gotten the last 5 points. It's a 5-0 run. That's changed the game altogether. It was 7-4 and now it's become 9-7. Rohit has now stepped in for the Aravali Arrows. 9-7 will become 9-8. Just when it was going well, the momentum of the Arrows has been cut. Courtesy of that ankle hold initially by the Periyar Panthers. जी इस बार अच्छा एंकल होल्ड वहां पर किया मुकेश चौधरी ने, टो टच करने की कोशिश की थी और मुझे लगा इस बार रेडर थोड़ा सा अपने आप को इंजरी से बचाने के लिए ज्यादा खेल रहे हैं क्योंकि ज्यादा स्ट्रगल में वहां पर इन्वॉल्व नहीं हुए थे और ये सोच भी अच्छी हो सकती है ना रायन, क्योंकि देखिए वैसे भी ये दोनों टीमें पहुंच चुकी है चैलेंजर राउंड में और ये पॉइंट्स टेबल आगे नहीं जाएगी चैलेंजर राउंड में, तो कोई भी टीम के कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड नहीं होना चाहेगा। खासकर इन मुकाबलों में जरूर आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं, मुकाबले जीतना चाहते हैं, अच्छे मोमेंटम के साथ जाना चाहते हैं और नकुल वही मोमेंटम गेन कर रहे हैं। इसलिए लोकेश घोसलिया, राजेंद्र बाकर, अनुज सैनी आज आपको टीम में नहीं नजर आ रहे हैं शुरुआती 7 में रायन। Oh yes, rightly said. That's the most important factor. All these players will have to look out for not get injured because you are headed towards the last few phases of this Yuva Kabaddi series and it's very important that you stay and it's important that you don't get tackled out because you give a point to the defense and the Periyar Panthers should inch very very close to this all out now. जी हाँ रायन, और ये लोकेश घोसलिया की पोजीशन है, लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन लोकेश घोसलिया की है। जरूर वो भी नहीं खेल रहे हैं बट लेफ्ट कॉर्नर पर बहुत ही तगड़ा टैकल वहां पर किया और अरावली एरोज ने कुछ देर के लिए ऑल आउट को टाला था बट अब अरावली एरोज तुरंत वहां पर ऑल आउट हो गई है। पेरियार पैंथर्स के खाते में 3 अंक जुड़ चुके हैं। ऑल इन Indeed, the Periyar Panthers now lead 13-9 and we can see Sahil there talking to his team, trying to possibly motivate them and sort things out because in between they did get the things going their way but then after that they just lost it and this game is still very much alive for the Aravali Arrows. They just need to play smart and playing smart is just taking your time and going in for the raid. Why would you force it? 1 point Periyar Panthers. या एक बार पुनः चेक करना पड़ेगा और अंकित जाट का भी वहां पर सब्स्टिट्यूशन हो गया था, अंकित जाट भी वहां पर बाहर चले गए हैं। यहाँ देखिए बहुत अच्छा चेन आया वहां पर, सरदार चौधरी, मोनू प्रसाद और बहुत ही आसान सा यहाँ पर ये टैकल किया। चेन में गए थे रोहित, जरूर शायद थोड़ी सी डुबकी की कोशिश कर रहे थे बट एक अच्छी सरप्राइजिंग चेन थी। और आयन अगर मैं उस रिप्ले को वापस देखूँ ना तो लेफ्ट कवर ने ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट किया था। क्या होता है मैं थोड़ा सा और दर्शकों को समझाता हूँ उसके बारे में कि कई बार कवर जो होता है ये देखिए एक लाइन में खड़ा होता है, जब लेफ्ट कवर लेफ्ट कॉर्नर वहां पर एक चेन में आ जाते हैं यानी कि एक साथ आ जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं तो अचानक से कवर पीछे हटता है, रेडर को कुछ नहीं दिखता है, ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है और कॉर्नर उसी समय उसे चेन में धर लेता है। तो पिछली बार यही किया था वहां पर मोनू ने, लेफ्ट लाइन से बहुत अच्छा चेन में टारगेट किया। अब नवप्रीत रेड पे हैं, नवप्रीत रायन एक अच्छे रेडर साबित हो सकते हैं एंड ही इज आल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट ऑलराउंडर। Wow, Navpreet there, just when Harshit mentioned, seems like he's gotten the point. He's claiming it and raider point has been stated. Looks like Navpreet will contest that. But thank you there, Harshit, for explaining that so nicely about the blind spot technique that's used in Kabaddi. I'm sure that's very interesting and that was very knowledgeable to me and I'm sure all of yours on fan code would definitely agree. मुझे लगा यहाँ पर क्या हल्का सा टच सरदार पर। थैंक यू रायन। Aravali Arrows challenge is raider safe 1 point. Our decision raider out. Please review. वाह रायन, पहले हम किसी भी रिव्यू की बात करें मुझे आवाज थोड़ी सी बाहुबली टाइप की आवाज सी आई थी। Oh wow, I mean you can name him the Bahubali of Yuva Kabaddi series. The referees are often the most powerful person in any sport. I agree because whatever they say is final and we have to listen to them and that's what Bahubali did as well when he had control. And speaking of this review, it's very close and as Harshit said, I think there might be a touch point there that must
that is likely to be given. जी अरावली एरोज ने तुरंत वहां पर रिव्यू मांगा है और नवप्रीत वहां पर रिव्यू के लिए गए थे। और रायन, क्योंकि हम स्टोरीज की बात कर रहे हैं बहुत सारी, जब नवप्रीत के साथ हमने एक फन गेम वहां पर खेला था ना रायन, तो इन्हें पंजाबी वैसे इनकी बहुत अच्छी है, तो हमने इनसे पंजाबी में कुछ पूछा तो इन्होंने थोड़ा सा शर्मा के तुरंत माइक वापस नीचे कर लिया। वो तो इन्होंने इनका यही कहना था कि इनकी जो जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स है ना, उन्हें पसंद नहीं है कि पंजाबी थोड़ी सी टूटी फूटी बोले। और रिएक्शंस भी देखिए आयुष, रायन वहां पर कैसे आए हैं, तुरंत हमने इनकी फीमेल फ्रेंड्स की बात की है तो। Yeah, well, we can see Harshit exposing Navpreet over here as the Aravali Arrows and the Periyar Panthers anticipate this decision. Important point it could be for the Aravali Arrows as they look to, stay alive in this match and compete against the Periyar Panthers. जी, और एक अच्छा प्रश्न यहाँ पर Review पूछा था successful. वहाँ पर 1 टीम point. ने यहाँ Periyar Panthers. लेट हैव चेक चेक Sir. इधर डिस्को थोड़ा सा हुआ है, Hello? एक बार चेक करना चाहेंगे फिर से समीर साहब किसके पक्ष में गए हैं। रिव्यू अगर सक्सेसफुल बोला है तो शायद अरावली एरोज के पक्ष में जाएगा। Yeah, I think. Okay. Review successful. 1 touch point. Aravali Arrows. या फाइनली और रायन Captain, देखिए मैं भी you बहुत retained कंफ्यूज हो your जाता हूँ अरावली और पेरियार में, क्योंकि दोनों ही टीमें राजस्थान की हैं, ऐसा लगता है कि कौन सी टीम का पता ही नहीं चलता है। Yeah, indeed, and that's just a common error a lot of people make. We're all human beings. We're bound to make certain errors, and it's no worries as the point is gone in favor of the Aravali Arrows. The review will be retained with them. And Sardar Chaudhary now in for the Periyar Panthers. जी, आप सरदार चौधरी हैं, अरावली एरोज, चलिए वो रिव्यू इनके पक्ष में गया है। नवप्रीत सिंह को वहां 1 पॉइंट मिला है। अब सरदार चौधरी देखते हैं किस प्रकार का प्रदर्शन कर पाएंगे, सरदार कितने रहेंगे। सरदार एक लेफ्ट रीडर हैं, इनकी शुरुआत अच्छी रही है और बहुत एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं अपनी टीम के लिए। एम्पल परफॉर्मेंस दर्शाते हैं, कभी कभार सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस लेकर आते हैं। इन्हें पता है कि कब एम्प्टी रेस लगाना है, कब कार्य वहां पर करना है। और आयुष, आज के प्री शो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पर पेश किया था और उस स्टैट्स में ये था कि सबसे ज्यादा सुपर टैकल्स लगाने वाली यही 2 टीमें हैं। पेरियार पैंथर्स के शायद 19 सुपर टैकल थे और अरावली एरोज के 18 सुपर टैकल थे, यानी कि दोनों ही टीमें सुपर टैकल से बहुत अच्छी है। बट मोनू प्रसाद इस बार अपने आप को पीछे नहीं कर पाए, स्पेक्ट्रेल नहीं कर पाए। 1 point अरावली एरोज, जर्सी नंबर 5 आउट। Yes, the error by Monu there, and he will join his coach on the bench. And that's an interesting fact there. The Periyar Panthers have always been among the teams that's always, up there when it comes to having the super tackles. I remember even in the survival round when the Rhinos, Kaziranga Rhinos and the Periyar Panthers were the 2 teams on top, and now it's these 2 teams. So it's good to see the Aravali Arrows climbing up the ladder there along with the Periyar Panthers. We now have a do or die raid. Sardar Chaudhary here, will he do or die? He will die because the defense has caught him. And Aravali Arrows will get their 12th point. 1 point अरावली एरोज। वाओ, क्या बात है, कितना तेजी के साथ वहां पर गए थे चेतन चौधरी। सरदार चौधरी को शायद भनक भी नहीं लगनी थी। ये देखिए कितना तेजी के साथ हरिओम चौधरी आए थे, क्षमा कीजिएगा, और बस थोड़ा सा और पीछे करना था, वो जर्मन सुप्लेक्स हो जाता। रायन, Oh yes, we'd love to see a German suplex in this game of Kabaddi, in the Yuva Kabaddi series, as long as, players not injured or being attacked on. Rohit here is claiming the point. If there's no point, Rohit will have to leave because he entered the lobby. We will wait for the referee's decision. Referee has to say that. 1 point अरावली Raider एरोज। safe. 1 point. Manjeet's not happy, but the point is given to the Arrows. नंबर 4 प्लीज कम। हाँ, मैं एक बार फिर से बहुत ही पास से वो रिप्ले देखना चाहूंगा। मंजीत रिव्यू चाहते हैं, बट क्या लॉबी के बाद भी एंड लाइन के बाहर भी उन्होंने कहीं पैर रखा था? रायन, मुझे पहले एंकल में ऐसा नजर आया। What's your challenge? Please. पर देखते हैं पेरियार पैंथर्स रिव्यू चाहता है, सब TV umpire. Periyar Panthers challenge is Raider out. Our decision, Raider safe 1 point. Please review. देखते हैं रायन रिप्ले में, यहाँ देखिएगा, यहाँ वो टच की वैसे मंजीत कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। ओ, बहुत ही क्लोज फिंगर टिप्स, बहुत ही क्लोज वहां पर फॉलो करना होगा, बहुत ही क्लोज हो सकता है। बट मैं चाहूंगा हमारे ईवीएस ऑपरेटर राम इसे पूरा लेकर चलें, रोल करें जब तक वहां पर उन्होंने एंडलाइन को क्रॉस नहीं कर दिया। अभी नहीं तो चाहे थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अभी हमारे ये देखिए यहाँ क्या हल्का सा पैर बाहर गया था, क्या लॉबी में कोई हल्का सा पार्ट था? रायन, इसकी मैं बात कर रहा था, कि क्या हल्का सा आउट हो तो लॉबी भी चले गए थे। Yes, indeed, it will be a point to the Periyar Panthers, so it's a good review taken by the Periyar Panthers as well.
as we all wait for the decision. And yeah, I mean, if he didn't touch, obviously he cannot enter the lobbies, nor can he go out, which means it will be a penalty point for the Aravali Arrows. But that is only if there was no touch point there. So I'm sure our TV umpire will come out with the best decision here. His decisions have been beautiful, very well executed. He's taken his time. And review unsuccessful, Raider safe, which means the point was there over there, Harshit. या वहाँ पे पॉइंट मिलेगा, और क्योंकि थोड़ा सा उनका लॉबी में पार्ट था, इसी के चलते वहाँ पर, अन्यथा अगर वो पूरा बाहर चले जाते, अगर लॉबी में कोई पार्ट नहीं होता, यहाँ टच था, टच के बाद वो लॉबी में गए, उसके बाद यहाँ रायन हल्का सा उनका जो, और जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल टोज कह लीजिए, वो हल्के से थोड़े से लॉबी के अंदर थे, जिसके चलते यहाँ पर वो सेफ हुए हैं। अब नकुल सैनी है, हरिओम चौधरी आज बहुत ही डिसेंट दिखे और डेलीकेट परफॉर्मेंस उनका रायन नजर आया है, तो इस बार सिर्फ नकुल सैनी ने उनके नीचे से बोनस चुराने का प्रयास किया, बट रोहित आज ने बहुत अच्छा किया। इसे कहते हैं ट्रैप, बट ट्रैप में शुरुआत अच्छी की थी जब तक मुकेश का साथ आता। क्या पसूट देखने को मिला। Oh yes, a spectacular pursuit indeed. Definitely a nomination for, like, you know, the moment or the raid of the day. Take a look at this, the way he ran in, got the first point. The defender did a good job, honestly, in getting that double tie hold, but it was not good enough, and he crawled his way and got back. What a raid here, Harshit. जी रायन बिल्कुल वहां पर नकुल ने डिफेंडर के तौर पर अच्छा किया था, एक बार लगा था कि अकेले सोलो टैकल वहां पर कर दिया है, पर उसके बाद उनके हाथ से वो ग्रिप छूट गई थी। इस बार ग्रिप कहीं नहीं छूटेगी हरिओम चौधरी की। राहुल चौधरी भी है, क्योंकि एक डिफेंडर है, रेड पर गए थे, बोनस जरूर चुरा लिया, वही इनका फोरमोस्ट आउटमोस्ट कार्य था, बट एक बहुत ही अच्छा डिफेंस एक बार फिर से हरिओम चौधरी का। तो आज अरावली एरोज का डिफेंस वो काम कर रहा है जिस काम की हम बात करते हैं, बहुत समय के बाद ये टीम लीड पर है। अरावली एरोज को मैंने बहुत समय के बाद राय देखा है कि शुरुआती क्षणों में उन्होंने लीड प्राप्त कर ली है, तो तारीफ करेंगे उनकी डिफेंस और उनकी रेडर्स दोनों की। Yes, definitely. Shout out to the Aravali Arrows for getting the lead. The question is, can they hold on to their lead? Can they build on from this lead? That's what they need to focus on. That's what they need to try and achieve. As Rohit Pancholi comes in for the Aravali Arrows as we enter in the last 5.5 minutes. Gets the bonus point. Rohit playing smart, getting the bonus. वहां पर एक बोनस प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, और नकुल सैनी अब देखते हैं एज अ रेडर क्या काम करेंगे। और मैं अरावली एरोज की बात कर रहा था, तो 4 टैकल पॉइंट चेतन चौधरी, 2 सुपर टैकल हैं, पर नकुल सैनी युवा रेडर्स अच्छे कर रहे हैं, दोनों ही टीमों के लिए अच्छे संकेत है, दोनों ही टीम के लिए, चाहे आप रोहित बेनीवाल की बात करें, पंचोली की बात करें या नकुल सैनी की बात करें, रेडर्स युवा अब धीरे धीरे ब्राइट हो रहे हैं और शाइन कर रहे हैं। Yes, the tagline, talent meets opportunity. The talent here making full use of the opportunity in these moments, you know, stepping up for their team, getting those points, going in confidently. And Rohit here is gotten the kick. What a kick executed by Rohit. And the Arrows get one more. 1 point, Aravali Arrows. जी यहाँ पर एक और पॉइंट मिलेगा मुकेश चौधरी पर। इस बार वो किक इनिशिएट की थी और किक वहीं पर जाकर समाप्त भी हुई है। देखिए बहुत अच्छा बैक किक, सरप्राइजिंग था, शायद पूरी तरह से वहां पर स्तब्ध हो गए थे डिफेंडर भी, वो तो एंकल होल्ड की तैयारी कर रहे थे, और जब आप लक्ष्य की तरफ देख रहे होते हैं तो कई बार अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं रेडर्स। बहुत ही अच्छा, और रेडर को जितना अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे नारायण, उतना ही वो समझ में नहीं आएंगे। यहाँ देखते हैं डैश, चेतन चौधरी, हरिओम चौधरी, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, और अगर ये चेतन ने इनिशिएट किया था टैकल, तो शुरुआती हाफ में रायन उन्होंने अपना हाई फाई पूरा कर लिया है। Wow, Chetan there was also there. The question is, will he get the point? Because there was a defender in front of him. We noticed that after they both were getting up after falling down. But the Aravali Arrows have gotten a good lead here. जी नवप्रीत ने वो टैकल इनिशिएट किया था, उसके बाद चेतन का डैश आया, पर ट्राइन बिल्कुल आप मिसिंग का 4 अंकों की लीड और अरावली के पास हो गई है। नवप्रीत अच्छा कार्य किया इन्होंने, सब्स्टिट्यूट बेंच से उठकर वहां पर ऑल आउट से सेव किया था टीम को, बट यहाँ मुझे लगा थोड़ा ज्यादा अंदर चले गए थे 5, क्या उसमें शायद इतना अंदर ना भी जाते तो बेहतर हो सकता था, बट पूरन शेखावत साहब खुश हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा टैकल आया लेफ्ट कॉर्नर से, मोनू से रिवर्स एंकल होल्ड रहा है। Yep, not good enough, and a timeout has been called, which means we can listen to what the coaches have to say in this important moment as the Arrows look to hold on to their lead in the first half. रोहित जाता, रोहित क्या हर बार लॉबी में घुसना भाई, बिना लॉबी के भी तो तू अपील कर सकता है, बोले हाँ लगी है, तू उस टाइम तेरी बाहर हो जाता, तू खेलो आराम से, डिफेंस रोक के खेलो। राजेश गुजर साहब ने रायन वही बात की जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हर बार आवश्यकता नहीं है कि आप लॉबी में जाएं ही जाएं, अपील ही करना है तो कम से कम लॉबी से बाहर होकर भी अपील कर सकते हैं, ये आदत मत डालिए आप।
Yeah, that's very nicely said by the coach. Those are the important technical aspects of a game that you need to remind the players, because you never know. Tomorrow it might be a bigger game, it might be a bigger moment, and you step there, cause a heavy point to your team in a crunch situation. As the Aravali Arrows, we enter the last 3 minutes, 3-minute lead, and the Periyar Panthers will try to reduce this lead and possibly tie the match as we end the first half. या और रायन, एक और चलिए एक आपको बात शेयर करता हूँ। ये जो दोनों ही टीमों के जो कोचेज हैं ना, ये बड़े वहाँ पर वन ऑफ द वेरी यंग कोचेज में से एक है। चाहे आप राजेश गुजर साहब की बात करें या फिर पूरन शेखावत की बात करें, तो दोनों ही बहुत ही यंग कोचेज हैं। यंग टीम को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, यंग रीडर्स को। रोहित बेनीवाल यहाँ पर रेड पर हैं, लेफ्ट रीडर, कोशिश की ज़्यादा अंदर जाने के बाद नहीं चाहेंगे। तो राजेश गुजर साहब के बारे में सबसे पहले बताऊं तो ये हरियाणा फ्रेंचाइजी से खेल चुके हैं और एक करंट प्लेयर भी है। और इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने कपिल गुर्जर और चौगान स्टेडियम, जो कि जयपुर राजस्थान में कबड्डी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ इन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस की है। कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को ट्रेन किया है, जिनमें से शायद लोकेश गुजलिया, कपिल गुर्जर का भी नाम वहाँ पर शुमार होता है। और पूरन शेखावत जी की बात करें, जो पेरियार पैंथर्स के कोच हैं, वो भी फ्रेंचाइजी लीग में खेल चुके हैं। वो एक आर्मी ऑफिसर है रायन, और आर्मी की जो टीम बनती है उसमें वो स्वयं वहां पर मौजूद होते हैं। यानी कि 2 वेट कोच, 2 यंग कोच और एज अ प्लेयर, एज अ कोच वहां पर काम करना कहीं ना कहीं उनके लिए, दोनों के लिए एक नई चीजें हैं सीखने लायक। Definitely, that is so nice. He's so qualified, also part of the services. That is saluting stuff there. Hats off to him. I'm sure he's a role model. And a role model, will Nakul Saini become one? Because if he continues to perform that well in such do-or-die raids, he will definitely become one, as the Periyar Panthers inch closer to the Arrows. परफेक्ट टर्न, नकुल सैनी, इनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं राइट रीडर शुड ऑलवेज टर्न राइट। बहुत अच्छा टर्न किया इस बार और खतरा बने चेतन चौधरी के लिए। अब जो डायरेक्ट है, अब रोहित बेनीवाल क्या फिर से किक आएगी? सेम एक्शन रिप्ले। मुकेश चौधरी अपनी पिछली गलती से वहां रेक्टिफाई नहीं कर पाए, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बैक किक आई है। रायन और मुकेश चौधरी फिर से कंटिन्यूटी में बाहर जाएंगे। Yeah, you can see the disappointment in Mukesh's face. Oh, take a look at that. No credits away from that kick. That was so nicely executed. Second time he's doing it. And Kanaram Chaudhary comes in for the Periyar Panthers. तो अब चलते हैं कानाराम चौधरी की तरफ। कानाराम चौधरी एज राइट रीडर आज अच्छा करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं जद्दोजहद के साथ। और यहाँ फिर से क्या लॉबी में चले गए, बिना किसी टच के लॉबी में चले गए, और ये अलाउ नहीं होता है। लॉबी जब भी एक्टिव होती है किसी खिलाड़ी के लिए, तब आप किसी और डिफेंडर को वहां पर टच करते हैं। तो बिना लॉबी के एक्टिव हुए यहाँ कानाराम चौधरी को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लॉबी में चले गए। Yep, you can't enter the lobby without getting a touch point, my dear friend. And all our viewers on fan code, that's an essential rule of Kabaddi. As Rohit comes in, this should possibly be the last raid, because the shot clock and the raid clock, the game clock and the raid clock is pretty much the same. Or maybe if a pursuit is done, it might happen quickly. No, it doesn't look like. Will the last raid happen, Harshit? जी हाँ, अंतिम रेड वहां पर शुरू हो जाएगी। लग रहा था क्या सरदार चौधरी जाएंगे, बट नकुल सैनी गए हैं। आज 8 रेड पॉइंट इनके पास है। रोहित बेनीवाल के पास भी 8 रेड पॉइंट्स हैं, बट एम्प्टी रेड किए यहाँ पर। और मुझे लगता है शायद पेरियार पैंथर्स ने टॉस जीता था, तो शायद दूसरी आपकी पहली रेड भी पेरियार पैंथर्स की होगी। हो सकता है नकुल सैनी वहां पर रेड लगाए, तो अच्छा कार्य किया। इस बार एम्प्टी हैंडेडली वापस आए। 23-19 यहाँ पर पहले हाफ में स्कोर रहा है रायन, और 11 पॉइंट्स यहाँ पर रेड में मिले हैं पेरियार पैंथर्स को, और 23 मिले हैं अरावली एरोज को ओवरऑल, जिसमें से 12 रेड पॉइंट्स हैं, 8 टैकल पॉइंट्स हैं, 2 ऑल आउट के पॉइंट्स, दोनों के पास बराबर है। टैकल्स में कहीं ना कहीं अरावली ने और अच्छा किया है, क्योंकि हाई फाई में चेतन चौधरी ने बनाया है। छोटा सा ब्रेक, रॉयन जल्दी से आएंगे हमारे दर्शकों के पास, वापस फैन कोड पर बने रहिएगा।
So match number 93, we are back after a short little break. एक छोटी सी ब्रीदर के बाद हम सभी आप सभी के साथ हैं और नकुल सैनी 8 रेड पॉइंट्स, रोहित बेनीवाल के 8 रेड पॉइंट्स। तो दोनों ही रेडर्स ने अच्छा किया है और इन दोनों रेडर्स की हमने बहुत बातें की है ना कि टीम को साथ ही सपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो आज बूस्टर राउंड के अंतिम मैच में दोनों ही टीमों ने कुछ सरप्राइजिंग चेंजेस किए, जैसे लोकेश गुसलिया, राजेंद्र भाकर, अनुज सैनी, अंकित जाट, चारों बड़े बड़े कॉर्नर्स नहीं खेले आज के मैच में। मुकेश चौधरी, मोनू को पेरियार पैंथर्स से मौका मिला, हरिओम चौधरी को मौका मिला आज लेफ्ट कॉर्नर खेलने का रावली अरोज से। यहाँ सरदार ने शानदार एस्केप किया था, पहली मर्तबा ऑल आउट किया था यहाँ पर टीम रावली अरोज को। पेरियार पैंथर्स ने कुछ अच्छे सुपर टैकल्स नजर आए, 2 कंसेक्यूटिव सुपर टैकल्स से, जिसके चलते चेतन ने अपना हाई फाई बनाया। 3 पॉइंट रावली अरोज के खाते के हरिओम चौधरी में गए, बट यहाँ पर वो पूरी तरह से ऑल आउट परसू किया था किसने, पेरियार पैंथर्स ने। उसके बाद एक क्षण ऐसा भी आया जहां अरावली ने पेरियार को ऑल आउट दिया। तो मेरे साथ कॉम्बो से मौजूद है रायन, स्वागत है वन मोर टाइम आपका। Hello once again, Harshit. Rightly said, the Periyar Panthers had a very good start, commanding start, but the Arrows eventually got their way back into this game. And earlier on, we saw a couple of questions come in, and all our viewers on Fan Code, you can send in your questions as well, either through the Instagram handle, or you can even just head over to the poll which is shared on the Instagram stories of Yuva Kabaddi series. Send in your questions, and if it's the best one, you might see yourself as well as your question here during a match live, answered by our experts. और चलते एक बार पुनः बात कर रहे हैं उन प्रश्नों पर। रायन, आपने बात की तो एक और जो प्रश्न था ना, वो थोड़ा सही प्रश्न भी था कि क्या वहाँ पर अंकित जाट जो हैं पिछले 3 मैचेस में उन्हें ज़्यादा टैकल पॉइंट्स नहीं मिले हैं, तो क्या वहाँ पर वो सिर्फ वीक खिलाड़ियों के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं? तो रायन, उस पर हमने क्या प्रतिक्रिया दी थी कि जरूर ऐसा नहीं है, और उनकी स्टैट्स भी दर्शाते हैं ना, क्योंकि 50 टैकल पॉइंट्स प्राप्त करना आप सिर्फ वीक रेडर्स के विरुद्ध प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और उनका कोई ऐसा बड़ा आंकड़ा नहीं रहा है कि एक मैच में उन्होंने 8-10 टैकल पॉइंट्स प्राप्त कर लिए। उन्होंने हर मैच में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करके वहां पर हाई फाई बनाकर 50 पॉइंट तक पहुंचे। तो जरूर उस प्रश्न का उत्तर ना था। और रायन, जो एक और प्रश्न पूछा गया था, क्या वो आपको याद है आज द एक्सपर्ट में? Yes, definitely. It was in regards to Manjeet Mitra, whether he's been the best all-round player, and we had agreed as to how he is, he has the highest number of high fives, not to forget, but, we agreed that he is definitely among the best, and I think he would need to do a little more in terms of both raiding and defending, especially in the bigger matches to come, in order to get the title as the best. Yeah. और यहाँ देखते हैं सरदार चौधरी ने अच्छा एस्केप किया, और आज ये मंजीत मित्रा को वैसे ज्यादा ऑलराउंड प्रदर्शन कुछ करने की वहाँ पर डिमांड लगी नहीं है टीम से। उन्होंने डिफेंस में बहुत ज्यादा अभी तक कुछ किया है, आवश्यकता भी नहीं थी, और ना रेड में। और यहाँ सरदार ने बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं अपने आप को चौंका था उस टैकल को टच करने के लिए, साहिल बागड़ा को शायद वहाँ पर शिकार बनाया। पर रायन, चलिए, क्योंकि हम युवाओं की बात कर रहे हैं, तो युवा रेडर्स को एक और चीज समझनी पड़ेगी कि एज अ रेडर आपको जब तक डिफेंस करने नहीं जाना है, तब तक की लीस्ट मौका न हो, जब तक कोई और डिफेंडर आपके पास ना बचा हो, तब तक उन्हें डिफेंस से बचना, और खासकर जब आप अच्छी फॉर्म में हो और आपकी टीम पिछड़ रही हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये युवाओं को समझना बहुत जरूरी है। बट यहाँ नवप्रीत ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था, एक अच्छा कार्य और एक अच्छा पॉइंट रावली के खेमे में। Yeah, that's a very good point shared there, Harshit, as to how the Yuva players, or let's say the less experienced or the amateur players that are here in the Yuva Kabaddi series need to keep in mind. And Nakul Saini, that is definitely not an amateur level escape, because he's executed it so nicely, and the bench reaction says it all. The Aravali Arrows are disappointed. Will this be a super aid? Let's wait and find out. Please come. चेतन और हरिओम तो बाहर जा रहे हैं, ये तो तय है। नकुल सैनी को बुलाया गया है, 17 नंबर जर्सी खतरा बन रहे हैं। और आइए देखते हैं कि यहाँ पर वार्तालाप करेंगी राखी कुमारी, जो कि U2 हैं, करीम साहब वहाँ पर मैच रेफरी हैं, सबको बुलाया गया है। तो हर एंगल से यहाँ पर अब वार्तालाप की जाएगी। मोहन गौड़ा साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, अच्छा एस्केप, राइट टर्न फिर से। तो इस खिलाड़ी के बेसिक बहुत अच्छे हैं। क्या साहिल बागड़ा का हल्का सा टच वहाँ पर आया था? क्या साहिल बागड़ा भी बाहर हो जाएंगे? इसकी बात की जा रही है शायद। Yes, I think they've come up with a decision, and Ms. Rakhi will tell us. Yes, it's 2 points to the Periyar Panthers. It will not be a super raid because there were no 3 touches, and it looks like the Periyar Panthers will also not contest this decision. यहाँ पर बहुत अच्छा राइट टर्न, और
राखी कुमारी का वो सही निर्णय वहां पर आएगा, 2 अंक वहां पर प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। नकुल सैनी का सुपर चैन जरूर पूरा हुआ है और यहाँ पर रोहित को भी पॉइंट मिलेंगे। तो आज यहाँ पर दोनों ही टीमों के युवा रेडर्स ने हर बार की तरह बहुत ही अच्छा किया है। सुपर 10 दोनों ही रेडर्स का पूरा हो चुका है। पूर्ण शुरा है, अच्छी तकनीक वहां पर। मुकेश चौधरी देखिए टाइम क्या होता है जब आप अटैक करते हैं ना, तो कई बार इस बार मुकेश देखिए जल्दी वहां पर टैकल करने के लिए चले गए। तो रोहित को पता था, उन्होंने सेटअप कर रखा था कि मुकेश फिर से मुझे एंकल होल्ड करने के लिए आएंगे, इसलिए मुकेश को अब अबाउट द बॉक्स करना पड़ेगा। पर रोहित ने क्या किया, अब जो मैंने बात की थी ना रायन, देखिए सुपर 10 आप बना चुके हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों अब आप टैकल करने गए? और शायद यही कह रहे हैं राजेश गुर्जर साहब भी। Indeed, rightly said, as Kanaram gets the point. And another interesting point there, Harshit, about how our Yuva Raiders are doing so good. And it's very important for them to start doing good when they get the opportunity. And one example of a player who was a Yuva in the Yuva series in the summer edition 2022, we saw Lokesh Gosalia, who was a Yuva defender. And he's grown to be one of the best defenders of Yuva Kabaddi series right now, as Yaravli Arrows get one more point. वाओ रायन, वेरी वंडरफुली पुट आउट बाय यू। बहुत ही सही और बहुत ही सटीक बात की है और बहुत ही वंडरफुल इम्पैक्टफुल बात वहां पर आपने कही है कि लोकेश गोसलिया यही वो समर एडिशन है कि जहां हमने इन्हें पहली बार जयपुर में देखा था रायन। वो समर एडिशन 2022 था जहां पर उन्होंने शुरुआत की थी और उसके पश्चात कितना ग्रो किया है लोकेश गोसलिया ने। अभी एक बीच में प्रश्न आया था सभी कमेंटेटर्स से कि आप अपनी शुरुआती साथ बताइए। यहाँ चेतन ने बहुत अच्छा कवर के तौर पर सिंगल थाई होल्ड किया और नकुल को बाहर किया, ये आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने किया। बट रायन चलिए मैं उस बात पर था, तो मुझे लगता है कि जितने भी एक्सपर्ट होंगे, जितने भी कमेंटेटर्स जो भी एक्सपर्ट पैनल में हैं, उन सभी ने लेफ्ट कॉर्नर पर लोकेश गोसलिया को कहीं ना कहीं रखा होगा रायन। Yes, definitely. I'm also 100% sure that Lokesh Gosalia was there in everybody's list. Even when I was putting it, I thought of going unique, but I'm like, no, I cannot go unique in that. You can't go wrong with that position. And that also says why he is the top defender of the season, as Rohit is completed a Super 10, 1 bonus and 9 touch points for him. जी हाँ, बहुत अच्छा यहाँ पर रोहित ने कार्य किया है। 9 और 8 पॉइंट्स टच में प्राप्त किए हैं और एक बोनस प्राप्त किया जो पिछली रेड में प्राप्त किया था। चलिए रायन ने थोड़ा सा एक रेडर के बारे में बता दीजिए ना। लेट मी गैस, पर गैस करने से पहले हरिओम चौधरी जरूर थोड़ा सा क्या इंजर्ड हुए, जो वो ठीक आई थी वो क्या कहीं गलत जगह लगी है, बट यहाँ हरिओम चौधरी थोड़ा सा सहज फील कर रहे हैं। Yes, it looks like he might have incurred an injury there. Let's all hope he's fine, because we want to avoid those any which way possible. And yeah, it looks like he's fine as the game is continued. उनके थोड़ा सा स्टमक पर वहां पर एक किक आई थी जिसके साथ थोड़े से वो नाखुश और थोड़े से असहज हो गए थे। बट रायन चलिए मैं आपकी स्टार्टिंग 7 की बात करूं तो मैं कुछ प्लेयर्स, 1-2 रेडर्स के नाम लूंगा, आपको यस और नो बोलना है कि वो आपकी टीम में है या नहीं है। Sure. Let's do it, Harshit. Okay, तो रायन एक और बड़ा नाम अगर मैं लूं वहां पर, प्रतीक भैया। I mean, once again, it would be a mistake to not put him on your team. Okay, and Pratik Daya was, of course, I think one of the best all-rounders also to play in the Yuva Kabaddi series. Yeah, absolutely Ryan. क्या शानदार कार्य उन्होंने किया है। बट यहाँ नवप्रीत है और नवप्रीत और टायरेड एस्केप रूट 3 खिलाड़ियों के बीच से टच करते हुए और सरदार चौधरी की तो यहाँ पर टी शर्ट को भी टीयर करते हुए निकल गए नवप्रीत। क्या पेरियार पैंथर्स की वापसी को भी टीयर अप कर दिया है यहाँ नवप्रीत ने। जर्सी नंबर 5, 3 and 1 Wow, he stayed up properly. Take a look at this, the super raid for Navpreet. He had the struggle across the pain. With the pain he went through. And that is a true definition of Josh Jazba Junoon. Yeah, undoubtedly. और थोड़ा सा नवप्रीत ने वहां गलत जरूर किया था। सरदार चौधरी की टी शर्ट को पकड़ा और पूरा खींच दिया। मुझे लग रहा था कि जर्सी की क्वालिटी को वो चेक कर रहे थे, बट आज क्वालिटी को चेक तो इस खिलाड़ी ने किया है पूरी तरह से। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। एक और शानदार टाई वाई चेतन चौधरी की तरफ से शिकार बनाते हुए यहाँ पर एक और खिलाड़ी को, और अब अरावली एरोज ने एक और बार पेरियार को ऑल आउट कर दिया है। मुझे लगता है कि लगातार 4 जीत की जो स्ट्रीक है, अरावली एरोज इस स्ट्रीक को तोड़ देगा पेरियार पैंथर्स की, और जो अरावली की लगातार 4 मैचेस की हार की स्ट्रीक है वो भी यहाँ टूट सकती है।
Yes, a couple of streaks might be rekindled as the Yaravali Arrows have gone 10 points up against the Periyar Panthers. Rather surprising. And if Periyar Panthers do errors like that, the right corner, it's just not worked for him at any way. He's been struggling throughout this entire game. And you can see the disappointment in his face. Aravali Arrows. मुकेश चौधरी को मुझे लगता है लगातार कितनी बार शिकार बनाया है। जरूर आज पूरन शेखावत साहब तो एकदम आराम से बैठे हैं। जरूर वो जानते हैं कि आज जो प्लेयर्स कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। कल मैं यही उन्हें वीडियो दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि क्या कोई गलती नहीं करनी है। बट रायन एक और चीज़ है, मैं अरावली एरोज अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी बात। मैं फिर मैं थोड़ा सा चिंताजनक हूँ, और क्यों चिंताजनक हूँ मैं बताऊँ। उससे पहले नकुल सैनी को यहाँ पर एक और पॉइंट मिला है हरिओम चौधरी के एडवांस टैकल। क्यों रायन मैं अभी भी अरावली के लिए थोड़ा सा चिंता में हूँ, क्योंकि एक तरफ आपको नजर आते हैं अरावली एरोज के लिए दो डिफेंडर चेतन और हरिओम, जिन दोनों ने यहाँ पर 11 टैकल पॉइंट प्राप्त किया और पूरी टीम को मिलाकर सिर्फ 11 टैकल पॉइंट मिले हैं। और रेडर्स में सिर्फ 13 रेड पॉइंट्स अरावली को मिले हैं, सिर्फ नहीं होते जरूर वो, और 13 में कहते हैं बता तो सही, आके तो आ रहे हो, यही मूवमेंट कर रहा है भाई। ओए मोनू, रुक जा ओए रुक जा मोनू, यहाँ खड़ा रहता मूवमेंट ध्यान में तो सीधे ठोकर ना डायरेक्ट मार। सुने ओए मोनू, ये घुसते है बोनस पर डायरेक्ट मार दे। जरूर हम जिसकी बात कर रहे थे रायन पूरन शेखावत है। बट हाँ, मैं वापस आता हूँ कि क्यों मैं वहाँ पर थोड़ा सा अभी भी अरावली एरोज के और अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि रोहित बेनीवाल ने अच्छा किया है। और अगर नवप्रीत न होती ना रायन, तो वहाँ पर बहुत ही कड़ी परेशानी हो सकती थी कि और कोई खिलाड़ी वहाँ पर स्टेप अप नहीं कर पाए। इस बार रोहित पंचोली वहाँ पर बाहर जाएंगे। एक अच्छा डाइव आखिरकार मुकेश ने राइट कॉर्नर के तौर पर शिकार किया। Indeed, and Rohit there will have to go back into the bench, and it would be so scary to go back into the bench right after a timeout because you just interacted with your coach, and if you're going to the bench, it means you did some error. Not to forget Nakul Sen here, no error for him throughout this entire game. That's why he has 13 points. However, he's had to go to the bench a few times because of the couple of all-outs that were inflicted on his team, but he needs to step up a little more, maybe get those points confidently and boost his team and motivate his team more importantly. या पर ये एक अच्छी चीज़ आई है पेरियार पैंथर्स के लिए, मल्टीपल पॉइंट्स मल्टीपल प्लेयर्स ने लिए हैं। नकुल सैनी ने लिए हैं, सरदार चौधरी, वहाँ पर मंजीत मित्र, राहुल चौधरी को भी पॉइंट मिला है, जरूर बोनस का मिला है, काना राम है वहाँ पर, वो पॉइंट ले रहे हैं। और अरावली एरोज के लिए अगर आप रोहित बेनीवाल को हटा दें और नफरीत क्योंकि बेंच से आए हैं, मैं शुरुआती साथ की बात कर रहा तो बाकी सिर्फ एक रेडर को एक पॉइंट ही मिला है, वो शायद दूसरे रोहित रहे हैं। तो इसलिए पैचेस नहीं परफॉर्मेंस करना है, मतलब अरावली एरोज को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चाहे कितना भी अच्छा हो उससे कुछ नहीं हो रहा है, एज अ टीम परफॉर्मेंस देखनी बहुत जरूरी है। Yes, that's very important, the team performance. You know, you often have one player who comes out very strong, does a lot of extraordinary things, but if your team does not win, what is the point of all of that? I'm sure every athlete would not celebrate individual success unless they can celebrate their team success, and Kanaram here is claiming the point, and the point has been given by the defender. You can look at him, he is so disappointed with that. Yeah, और बड़े अच्छे एक्सप्रेशंस में यहाँ पर नवप्रीत रायन, क्या कहीं पंजाबी मूवी में ट्राई कर लेना चाहिए इन्हें? Yeah, well, I'm sure he can definitely make it to the audition stage, and from there on, let's see how he goes. You know, maybe one of the kabaddi-based sport movies that comes in, Navpreet can be suggested. Yeah, और बिल्कुल रायन कलाप और नवीन शायद बहुत सारा वहाँ पर डिस्कशन भी कर रहे थे, इतनी सारी स्टोरीज हैं, कोई भी मूवी आसानी के साथ ब्लॉकबस्टर बन सकती है। यहाँ पर रोहित बेनीवाल कह रहे हैं कि चलिए मैंने पॉइंट प्राप्त किया है, रेफरी का निर्णय आने दीजिए। उसके बाद देखिए जिस तरह से स्टेयर करते रहे एक दूसरे को रायन, बहुत मजा आता है वो देखकर। यहाँ पर भी पीछे गए थे, रोहित को मना किया कि नहीं पॉइंट नहीं है, और मुझे लगता है शायद दोनों टीमों के पास रिव्यूज नहीं है रायन। Rightly said, the review is required in order to, you know, contest certain decisions. Oh man, Nakul Sen, he just can't stop scoring points at the moment. 1 point Periyar Panthers. नकुल सैनी आज अनस्टॉपेबल रहे, प्रदीप का वहाँ पर शिकार बनाया है, एक अच्छा टच वहाँ पर किया, प्रदीप अपने आप को पीछे नहीं खेच पाया राइट कॉर्नर। तो रायन बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी है नवीन से भी, और बहुत सारी स्टोरीज आपने देखी हैं, आपको सबसे मोटिवेटिंग स्टोरी कौन सी लगी रायन? किस प्लेयर की, अगर आपको याद है थोड़ा बहुत? सुने 9 मिनट बच रहे हैं, 8:48 हो रहे हैं। नहीं, इसको चलने दे, लाएगा ये पॉइंट लाएगा पक्का। Yes, as we come out of that timeout,
we have a do-or-die raid. After this exciting do-or-die raid, I can reckon something interesting happening because Rohit is coming and we have the right corner target of Rohit also being present there. So I can expect something interesting before I tell Harshit what was my inspiring story. Take a look at this. Rohit has inspired me in this match because he's gotten points and I think he's asking for 4 points there. Harshit. वाओ, एक और बहुत ही शानदार प्रदर्शन. देखिए किस तरह से यहाँ पर उन्हें रॉन्ग रूट को एक बार लग रहा था क्या चूज करें, क्या एक बार यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर काम नहीं कर पाए, पर ये देखिए बहुत अच्छी तरह से टर्निंग द पेजेस अराउंड अच्छे आप तरीके से अपने आप को बचाया. और क्योंकि डिफेंडर्स वहाँ पर चेन टैकल में नहीं गए थे, एक साथ वहाँ पर कॉम्बिनेटिव होकर नहीं गए थे, तो वहाँ पर मंजीत मित्र भी बाहर जाएंगे और सुपर रेड वहाँ पर लगाई रायन रोहित ने. और बिल्कुल ये आज इंस्पायर कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस से, इंप्रेसिव रहे हैं रोहित. Indeed, and reiterating back to which story, sincere apologies, I don't remember the name, but Naveen had told me the story of how a player had ran away from Sports Authority of India and he was called back by his coach. So a player who had the intent to, run away. He was of course running away from certain elements. He was scared of something and he still had the determination. He still had the mindset and the ability to force himself and come here, and today he's playing at the Yuva Kabaddi series, and that is spectacular. That just taught me how we should not run away from certain things. There's often going to be obstacles, there will be difficulties, but you should never run away from a challenge that comes before you. Yeah, Ryan, बहुत अच्छी बात की आपने. और वो खिलाड़ी, मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो एसमरिमुथु सेल्वम थे नीलगिरी नाइट्स के वहाँ पर, और साई से वो भागे थे, मतलब भागे इन द सेंस कि थोड़ा सा वो बुलीड हो गए थे अपने सीनियर से, बट उसके बाद यहाँ वो डिफेंडर्स को बुलीड कर रहे हैं जो उनके अगेंस्ट टीम के डिफेंडर्स होते हैं. एज अ कैप्टन भी बड़े मैच्योर वो खिलाड़ी नजर आए. अनडाउटेडली रायन बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी यहाँ पर रही है. और एक और मोटिवेटिंग स्टोरी मैं आपको बताऊंगा बड़ी जल्दी, बट अभी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है और आइए उसकी तरफ चलते हैं, सुनते हैं कोचेस से वो क्या कह रहे हैं. कहाँ से मारा? थर्ड मैन पे मार रहे जाके. अरे बढ़िया कैसे लाग रही थी, सपोर्ट दे दो. जो कवर है ना थर्ड मैन पे वहाँ मार रहे, पीछे हेल्पर से कट रहा. मेरी गलती. हेल्पर भाई साहब तुम कौन सा हेल्पर है? वो था उनके वो तेरा नाम ले रहा है सामने, यही कौन जाने सपोर्ट. कोई सपोर्ट तो जो मैं तन पहले दिया, कैच मारने लग गया उसके, कैच मारो तो सही तुम. यहाँ फिर मोनू मारा इस पे, यहाँ घुसते मारा ना सपोर्ट देते, ये दिखता ना के कूद जा तांगा. वो की दिक्कत यार, इतना ही तो काम है. मेरी बात, सेकंड मैन राहुल कंफर्म तेरा अटैक खाएगा. जो कॉर्नर है ना, राइट कॉर्नर के हाथ पे खेल रहा है, देख कॉर्नर को, सेकंड पे हाथ खोल के सीधा सेंटर पे आ जा. राहुल तेरे से अटैक खाएगा जरूर. आगे खेल रहा है वो क्योंकि कॉर्नर से, ठीक है ना, है ना, वो बहुत एग्रेसिव है ना, आगे होके खेल रहा है वो. हाँ किट पाड़ दी लगी थोड़ी तेरे, कुछ नहीं, डिफेंस अच्छा खेल रहे हो तुम, ठीक है ना. बड़ा अच्छा रहा ये टाइम आउट. वहाँ पर थोड़ा सा ब्लेम गेम चल रहा था एक टीम के पक्ष में और सरदार शायद थोड़ी सी शिकायत कर रहे थे कि मेरी जर्सी फाड़ दी है. बड़े मजेदार विकल्प रहते हैं ना. और कई बार ऐसे स्कूल में होता था ना कि जब हम शायद किंडरगार्टन, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड क्लास में हुआ करते थे, यहाँ सरदार चौधरी ने बदला लिया है कि कैसे आपने इनके टी शर्ट को फाड़ा है. नीचे शानदार जंप आई और ज्यादा एनर्जी के साथ गए थे रायन इस बार अनडाउटेडली. और चेतन के ऊपर से क्या जंप लगाया इन्होंने, मजा आ गया. Indeed, take a look at that jump. Look at the air time on that. He was definitely in the air for a while. That was a very good jump there. पर वही स्कूली डेज जो होते थे ना, वो सबसे ज्यादा शानदार दिन होते थे. मुकेश चौधरी थोड़ा सा ब्लेम बता रहे थे कि यार वो थर्ड मैन से मारा, वो यहाँ से मारा, बट मुकेश आपको पहले थोड़ा सा और अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा. अनडाउटेडली यू आर बहुत ही अच्छे राइट कॉर्नर डिफेंडर हैं. हाफ हार्टेड टैकल के लिए गए थे इस बार, जाऊं ना जाऊं, पर वहां अपने आप को बैकफिल नहीं कर पाए और नवप्रीत ने इसका पूरा फायदा उठाया. Yep, you got to take advantage of those instances, and that's exactly what he did. And right now, Sonu has come in, and he will have to take advantage of this opportunity given to him as he comes in as a substitute. He has 5.5 minutes, plenty of time to make his mark and make an impact. As Kana Ram, a person who's made his impact with 3 points for the Periyar Panthers, has come in. चलिए रायन, आपको मैं इंस्पायरिंग स्टोरी की बात कर रहा था. मैं मेरी इंस्पायरिंग स्टोरी जो मुझे सबसे बेहतरीन में से लगी, पहले साउथ पार्ट से अगर मैं शुरू करूँ, जरूर आपने चोला वीरन्स के एम गौतम को देखा भी होगा, सुना भी होगा और उनके डिफेंसिव स्किल्स के बारे में पता भी होगा रायन आपको. Yes, Murugan Gautam, he's been a spectacular player to watch out for, and it's been a joy watching him. जी, और
वो गौतम के बारे में अगर मैं बताऊं रायन आपको, तो वो गौतम तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं, और क्योंकि तमिलनाडु से जब उनको इतना चांस नहीं मिला तो वो पुडुचेरी जाकर बसे और वहां पर जाकर अब वो लगातार वहां से कबड्डी खेलते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में इतना कबड्डी में कंपटीशन है कि उन्हें वो सिक्योर ऑफ प्लेस नहीं मिल पा रही थी, और पुडुचेरी से वहां अगर उनके लिए थोड़ा सा भी था तो उनको वो सिक्योर प्लेस एज ए लीडर खेलने का मौका मिला, और वो लगातार वहां से अच्छा भी कर रहे थे। तो वहां पर जाकर वो खेलना उन्होंने शुरू किया और अपने प्लेस को सिक्योर किया। और उस प्लेस को सिक्योर करने से पहले की जो कहानी रही है ना, खासकर एमिट जब आया था वहां पर, कोविड जब आया था, पर यहाँ सरदार चौधरी जब से इनकी टीयर किया इनको टी-शर्ट को, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और बार शानदार परफॉर्मेंस, नवप्रीत थोड़े से यहाँ पर अनसेटल हुए और तुरंत उन्हें टच करके बाहर निकल गए सरदार। ये देखिए Rightly said, and yeah, very nicely said there about Murugan Gautam for all our viewers. Many a times, because Pondicherry is a union territory, they do participate separately when it comes to nationals in any sport. You know, you have Tamil Nadu participate separately as a state, and you also have Pondicherry participate as a union territory. So many players do have the opportunity to go in and, you know, go out of their comfort zone, go into a different place and come there, and that's what Murugan Gautam has done, and that's so inspiring. And Monu here created that error and he has to go back to the bench. जी यहाँ पर मोनू बाहर जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर। देखिए फिर से वही, या तो चाहिए या ना चाहिए, और अगर आपने सोच लिया कि नहीं जाना तो एटलीस्ट पीछे जाइए, ये बहुत जरूरी था। और गौतम की चलिए जो सबसे अच्छी बात लगी ना, वो बताता हूँ आपको कि जब कोविड का था बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे वहां पर यहाँ क्या बुलडोज हुआ है, यहाँ पर परेशानी शायद रेडर के बन जाएगा। नकुल सैनी को आखिरकार अरावली के डिफेंस ने संपूर्णतः एक साथ होकर टीम वर्क किया और कॉम्बिनेशन के साथ परफॉर्म किया। आइए देखते हैं कि वो टैकल की कैसे शुरुआत हुई। रायन एक बार फिर से उस रिप्ले का मैं इंतजार कर रहा हूं। नकुल सैनी बहुत तेजी से गए, इनके खिलाड़ी है, बट फ्रॉम द फ्रंटल ब्लॉक सोनू का आया और उसके बाद नकुल को धरा दबोचा रायन। Yes, you said bulldoze there, and he got bulldozed twice in 2 occasions as the game continues. A 10-point lead for the Arrows, and they should be getting this victory. And Ayush, I'll let you, and apologies, Harshit, I'll let you continue on the Murugan story. या तो जैसा कि मैं कोविड की वहाँ पर बात कर रहा था और कोविड में सभी बहुत परेशान थे, तो वहाँ पर गौतम उनका इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस आता है, हमें स्वॉर्ड का बहुत यूज करते हैं उनके अगेंस्ट। बट मैं बताऊँ रायन, आपको आप भी अमेज हो जाएंगे, वो एक इलेक्ट्रीशियन भी है और ड्यूरिंग द कोविड डेज यहाँ जरूर सब्स्टिट्यूशन किया जा रहा है, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। बट वो एज एन इलेक्ट्रीशियन कोविड में पर डे वेज पे, जब उनके पास काम आता था किसी वेंडर से, तो वो पर डे वेज पे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को और बेहतर करने के लिए और कबड्डी के लिए अपने पैसे जुटाने के लिए वहाँ पर डे वेज पे नियर बाय 500 इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ पर खेलते थे, यानी कि इलेक्ट्रीशियन का कार्य करते थे। और वैसे करते करते उन्होंने अपने आप को और बिल्डअप किया है। Just wow, this is levels, ladies and gentlemen. Next time you see your electrician, never underestimate them, because you might see them next day playing at a huge platform on fan code at the Yuva Kabaddi series. Murugan Gautam, you have earned my respect, ladies and gentlemen, and I'm sure everybody watching will also say the same. And this is the beauty of the game. This is the beauty of any sport. You know, you have a lot of interesting stories as your lovely Arrows get one more point. A good kick executed there. जी, पर आज मंजीत पूरी तरह से वहां पर उस तरह का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए हैं। वो हमेशा अटैकिंग खेलते हैं, यहाँ थोड़े से डिफेंसिव थे शायद। आज कैप्टन वहां पर ज्यादा जिम्मेदारी थी। बट 10 पॉइंट की लीड है, पेरियार पैंथर्स पिछड़े हुए हैं, लगातार 5वीं जीत उनके लिए नहीं आ रही है और लगातार 5वीं हार अरावली एरोज बचा लेगी अपने आप को, और यहाँ पर लगभग जीत की तरफ बढ़ चुकी है। सरदार चौधरी अच्छा कर रहे हैं लेफ्ट लीडर। बिल्कुल रायन, मैंने भी जब उनकी कहानी सुनी थी मैं भी इसी तरह से अस्टाउंडिंग था जैसे इस डिफेंस को देखने के बाद। राघव उनके टीम मैनेजर, टीम कोच सब बहुत खुश हैं, अंकित जाट बहुत खुश हैं, यानी कि नवप्रीत की तरफ से बिल्कुल सरप्राइज टैकल था। Indeed, and I'm sure there is a inside joke there. There is always something between the team and the players. They all have their inside tactics and antics as to why they laugh, and I'm sure there was a moment there. Now Preet Singh here looking for his 10th point. Can he get the super 10? He's trying to escape that ankle hold. The ankle hold is done well and the support comes in. This will be a super tackle for the Periyar Panthers. सुपर टैकल या यहाँ पर सुपर टैकल मिल जाएगा, यहाँ पेरियार पैंथर्स को सुपर टैकल मिलेगा। अच्छा टैकल किया, अभी इससे पहले नवप्रीत ने टैकल किया था, उसके बाद रेड में गए, एक अच्छी डाइव थी यहाँ पर। इस डाइव की मैं जरूर तारीफ करूंगा और मुझे लगा कि शायद वहाँ पर कानाराम मौजूद थे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस आज कानाराम ने दिखाया, एज ए रेडर भी एज ए डिफेंडर भी यहाँ टैकल किया। बट
रायन वहाँ पर जो टीम नवप्रीत के टैकल पॉइंट से ज्यादा जिस तरह से उन्होंने टैकल किया ना, मतलब थोड़े से अपोजिट एंगल में वहाँ पर टैकल करने के लिए गए और पूरी तरह से जैसे हम कई सारी बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि जब कोई गलती करता है वो अपने फादर के चरणों में कैसे पड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही वो पड़ गए और उन्होंने बस चरणों को पकड़ लिया, ऐसा लगा। Periyar Panthers, jersey number 7 out. Rightly said, and Periyar Panthers will finish this match with a point. I think it will be reduced Match to over. a single-digit loss. As the Aravali Arrows have come out strong and won this game, they've held on to the lead. Harshit, they've gotten the lead early on and they held on to it. So it's good to see the Aravali Arrows winning a game like this. Yes, wave your hands in joy as you've deserved this victory. जी हाँ, अच्छा खेले अरावली एरोज और बड़ी जीत वहां पर उनके लिए आई है 4 हार के पश्चात। तो कहीं ना कहीं चैलेंजर राउंड में जाने से पहले कहीं अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया है। अगर इस टीम में राजेंद्र वाकर, ब्रजपाल सिंह गौड़ और आ जाएं तो ये टीम और बेहतर करते हुए नजर आएगी, ये तय है। प्रेम बड़ू भी बिल्कुल अंत में आते आते वहां पर खेले, पर टीम इस मुकाबले को जीत जाएगी 9 अंकों के साथ। पेरियार पैंथर्स के लिए जरूर न लोकेश गोसलिया उतरे, न अनुज सैनी वहां पर उतरे, अच्छी कोशिश की। नकुल सैनी ने बहुत अच्छी तरह से अपनी टीम को लीड किया, पर अब देखते हैं कि राजस्थान डार्बी क्या वहां पर जब उतरेगी चैलेंजर राउंड में तब कैसा प्रदर्शन दोहरा पाएगी। रेफरीज बहुत खुश हैं और राखी कुमारी वहां पर मौजूद थी एज ए यूट्यू और समीर वहां पर एज अ मैच रेफरी मौजूद थे और टीवी एम्पायर मिस्टर रामबीर साहब मौजूद थे। इन सभी ऑफिशियल्स का स्कोरिंग शीट से लेकर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और हाईलाइट्स को एंजॉय करते हैं। रायन Indeed, highlights, yes, and I'm sure right now the record will become 9-4 in favor of the Aravali Arrows, but I'm sure the challenger round will be so much more interesting when these two teams go up against each other. And the highlights, yes, it was majority in favor of the Aravali Arrows, but yes, the Periyar Panthers had their moments such as the previous raid and even this tackle that they did. They were able to do stuff as a unit, but when Rohit was on fire, they just couldn't stop him. He got a super raid in that instance, and we can take a look at this how there also he was bulldozed there and denied the point. The raider for the Periyar Panthers. The Aravali Arrows did very well defensively. They're known for coming out strong with defense, but they had the raiding also supporting them. This was a moment where he was looking for his 10th point, but then the super tackle was executed and the game was brought to an halt. An exciting game, but a lot of positives for the Aravali Arrows, especially raid points. Nothing much separating these two teams, but it was the tackle points that made the difference. Take a look at that. 5 tackle points making the difference between the two teams. A couple of all-outs for the Aravali Arrows. The first all-out was inflicted by the Panthers, but after that they just couldn't have control over the game. Extra each for both the teams. 2 super raids for the Aravali Arrows. Definitely it was Mr. Rohit coming up with those 2. And a couple of super tackles, 2-1 in favor of the Aravali Arrows as well, Harshit. जी अच्छे सुपर टैकल्स यहाँ पर प्राप्त किया अरावली एरोज ने और अब जरूर शायद बराबरी कर ली, इक्वल कर लिया पेरियार पैंथर्स और अरावली एरोज ने अपने आप के सुपर टैकल्स को। बट लीजिए रोहित बेनीवाल की बात करते हैं। 20 रेड्स लगाई और आज रोहित पूरी तरह से हिट रहे हैं, ये पूरे संकेत उन्होंने पेश किए हैं। 16 रेड पॉइंट्स, 1 सुपर रेड, स्ट्राइक रेट लगभग 80 की बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है और इसी स्ट्राइक रेट को कंटिन्यू करना चाहेगा रोहित अपनी टीम के लिए। चैलेंजर राउंड जब आएगा जरूर थोड़ा सा और टफ डिफेंस होगा, पर चेतन चौधरी के लिए फॉर्म में आना बेहद जरूरी था अरावली एरोज के लिए। टोटल टैकल्स 11 इनिशिएट किए, टैकल पॉइंट 7 अपनी टीम के लिए प्राप्त किए और 2 सुपर टैकल्स ने टीम को वहां पर अंत में आते आते जीत दिलाई। टैकल सक्सेस रेट लगभग 63 की है। आइए रायन अब बूस्टर राउंड की जो अंतिम में वहां पर सुपर पॉइंट्स टेबल देखी है उस पर बात कर लेते हैं। नीलगिरी नाइट से टॉप किया है सिंध सोनिक, हमारा साथ छोड़कर यहाँ चली जाएंगे रायन। 7 मुकाबले 7 हार और बाकी बात करते हैं पेरियार पैंथर्स की आपके साथ। Yep, the Periyar Panthers finishing in the 2nd position, and Aravali Arrows can definitely be happy with this victory, although it doesn't do much. But yes, it will be motivating to know that you beat the team that was 2nd. Humpy Heroes in 3rd, Palni Tuskers in the 4th position, and Chambal Challengers in the 5th position, followed by the Chola Veerans in the 6th. So, you know, it's going to be interesting to see how these top 7 teams in the next round go up against each other, Harshit. एक अच्छा संकेत यहाँ पर नजर आया इस अंक तालिका में। बट एक जरूरी अपडेट आप सभी को दिया करते हैं कि कल से चैलेंजर राउंड शुरू हो रहा है और चैलेंजर राउंड में हम आप सभी के साथ जो मिलेंगे उसका समय थोड़ा सा अलग होगा वहां पर, यानी कि हम आप सभी के साथ मिलेंगे वहां पर 5:15 बजे और वहां पर उस मुकाबले की बड़ी शुरुआत हो जाएगी। कल से 3 मैचेस का एंथुसियाज्म वहां पर आएगा। बट आप सभी के साथ
जुड़ेंगे। लीजिए बात करते हैं, यहाँ पर आ गए हैं 5:15 बजे के आसपास शायद हम प्री शो की शुरुआत कर देंगे। 5 सवा 5 के मध्य नीलगिरी नाइट्स पलनी टस्कर्स का पहला मुकाबला है जो 5:30 बजे खेला जाएगा। मैच नंबर 95, मैच नंबर 96 होगा पेरियार पैंथर्स बनाम चोला वीरंस। मैच नंबर 97 जो शुरू होगा 8 बजे हम्पी हीरोज बनाम चंबल चैलेंजर्स रायन। तो पूरी तरह कल भी दिन एक्साइटिंग होने वाला है। Oh yes, tomorrow we're going to kick things off with the challenger round on a Sunday. So I'm sure all of you will be ready and roaring at your houses. You can log into fan code and watch that exciting challenger round starting. It's been an exciting day today. Stay tuned for the post-match presentation where Harshit will join you guys later. Thank you, Harshit. It was great being in the commentary box with you. Do tune in to fan code tomorrow. तो चलिए लगातार यहाँ पर 4 हार के पश्चात अरावली एरोज ने जीत प्राप्त की और पेरियार पैंथर्स 4 जीत के पश्चात यहाँ पर एक बड़ी हार आई है। बधाई, आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे इस राजस्थान डर्बी के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। मैच नंबर 93 ऑफ युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023। वी वुड लाइक टू स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन विद थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स, ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैनकोड, फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस जेएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर जिंजर होटल और हेल्थ केयर पार्टनर रामाकृष्णा स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और चलिए आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन में मौजूद है द वेरी पॉपुलर फेस राखी कुमारी टेक्निकल ऑफिशियल YKS। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये मुकाबला पेरियार पैंथर्स बनाम अरावली एरोज का था। लग रहा था पेरियार पैंथर्स क्या 5वीं जीत के साथ उतरने वाला है चैलेंजर राउंड में, पर अरावली एरोज ने आखिरकार उस ग्राफ को ऊपर की तरफ बढ़ाया है और धीरे धीरे परफॉर्मेंस में अपने आप को और उजागर किया है और जीता इस मुकाबले को 9 पॉइंट के मार्जिन से। सीधा चलेंगे अवार्ड्स की तरफ और शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रीडर ऑफ द मैच के साथ, जो रहे हैं अरावली एरोज के रोहित बेनीवाल, जिन्होंने प्राप्त किया 16 रेट पॉइंट्स। आइए देखते हैं इनके दमदार रेट पॉइंट्स को। And now the time for the best defender of the match और अरावली एरोज के जिन्होंने 2 सुपर टैकल्स अपने नाम किए और साथ ही साथ दिखलाया कि कैसे एज अ कैप्टन एज अ स्किपर आप डिफेंडर के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। नई चेतना का संचार किया चेतन चौधरी जिन्होंने प्राप्त किया 7 टैकल पॉइंट्स। देखते हैं इनके सुपर टैकल्स और टैकल्स को।
नाउ द टाइम फॉर द कबड्डी कमाल ऑफ द मैच, और वो जाएगा रावली हीरोज के सबसे पहले जिन्होंने अपनी टीम के लिए ऑल आउट से बचाया, सुपर रीड्स लगाए और डिफेंस में भी अपना शानदार प्रदर्शन दर्शाया, वो थे नवप्रीत सिंह। और चलिए अभी प्रेजेंटेशन से हम आप सभी से विदा लेते हैं। चैलेंजर राउंड कल शुरू होगा, कल हम आप सभी के साथ मिलेंगे 5:30 बजे। बट अभी उससे पहले बता दें आप सभी को बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम जुड़ने वाले हैं आप सभी के साथ एक पूरे बुशर राउंड के डाटास के साथ और बहुत सारी वार्तालाप के साथ इन द YKS लाइव पोस्ट शो।
क्या कमाल, क्या लाजवाब रहा है बूस्टर राउंड। बहुत ही बिजी रहे, बहुत सारे डिफेंडर्स, बहुत सारे रेडर्स इस पूरे बूस्टर राउंड में, और आप सभी को भी रखा है पूरी तरह से हमने बिजी। यहाँ पर क्या शुरुआत की थी हमने, हैशटैग नॉन स्टॉप युवा को आगे की तरफ लेकर आए, तो बूस्टर राउंड बहुत सारी यादें यहाँ पर लेकर आया है हमारे साथ। और यहाँ पर जरूर आज समाप्त हुआ है बूस्टर राउंड का अंतिम मुकाबला। सिंध सोनिक ना चाहते हुए भी वहां पर हमें छोड़कर चली जाए, क्योंकि लगातार साथ उनकी टीम के लिए वहां पर मौजूद रही। बचाइए आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करते हैं इस बूस्टर राउंड के पोस्ट शो में। यहाँ पर हम आज के दिन के सभी मुकाबलों की बात करेंगे सिंध सोनिक की। और आइए फिर से मेरे साथ बुला लेता हूं मेरे को पार्टनर यानी कि मिस्टर इंडिया नवीन शौरी को। Every time you say that, I search whether I am there or not there on the mat, but nevertheless, nice to be joining you, Harshit. Today, the day went on nicely. Palani Tuskers, dominating performance, 17 points, and nice that all the defenders actually got a match practice against the Chola Virans. Chola Virans once again missing out on main raiders, and today Mohandas not performing. That also was a bit of a bother. But then we will keep looking at each match, as in we speak about that each match, isn't it? That is how we will go about this last day of the booster round. जी हाँ नवीन, हर मुकाबलों की हम पूरी तरह से वहां पर बात करेंगे और इन मुकाबलों को हमने देखा। और आइए हमारे दर्शकों को एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि अंक तालिका पर कहां पर क्यों सिंध सोनिक हमें छोड़कर आई है। आइए पॉइंट टेबल की तरफ नजर बनाएं तो नीलगिरी नाइट 7 मुकाबले 7 जीत, कोई वहां पर बदलाव देखने को मिला नहीं, उनकी हार एक भी आई नहीं टाई आया। पेरियार पैंथर्स बहुत अच्छा खेले, 2 मुकाबले हारे बट 5 मुकाबले उन्होंने जीते। तीसरे पायदान पर हम्पी हीरोज, चौथे पर पलनी पहुंचा, ये अच्छे संकेत हैं। बट सिंध सोनिक नवीन क्योंकि 7 में से 7 मुकाबले हार चुका है, स्कोर डिफरेंस भी बहुत ज्यादा था, एक भी मुकाबलों से उन्हें एक भी पॉइंट नहीं मिला, इसलिए वहां पर उन्हें बाहर जाना पड़ा है। पर क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना नवीन कि हर एक मैच को हम इंडिविजुअली यहां पर समराइज करने वाले हैं, तो सीधा बिना किसी इंतजार के चलते हैं साउदर्न डार्बी की तरफ, जहां पर पहला मुकाबला पलनी टस्कर्स बनाम चोला वीरंस का था। पलनी टस्कर्स से फिर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि वो अच्छा करेंगे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नजर आया और पटकनी दी नवीन उन्होंने चोला वीरंस को। Yeah, very good that the Sonics unfortunately will be going out. But look at that, every team was there. They did not start well for the Humpy Heroes, but they came back on track. Did not start well for the Palani Tuskers, they came back on track. Chola Veerans started well, but they lost track. So something is happening there for every team. But apart from Sonics, unfortunately, not able to win even a single game in the booster round. We did not expect the Sonics to go out, isn't it? You know, from coming in from the survival to the booster round, we thought the Chola Veerans might find it difficult, but we never expected the Sonics will go out. But unfortunately, Sagar Kumar, I really feel for that. जी हाँ, वहाँ पर जरूर सागर कुमार के लिए हम इतना अच्छा महसूस नहीं करेंगे, राजू सिंह के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, पर इन सभी खिलाड़ियों को और थोड़ा सा सीख कर आना पड़ेगा और थोड़ा समझ कर आने पड़ेगा। पर चलिए अब आखिरकार उस मैच पर आते हैं जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं नवीन। मैच नंबर 90 पलनी टस्कर्स बनाम चोला वीरंस, और पलनी टस्कर्स ने वहाँ पर जीत प्राप्त की, चोला वीरंस को वहाँ पर हराया। और अगर आप स्टैट्स देखिए ना तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी कि पलनी टस्कर्स के रेड पॉइंट्स के साथ साथ नवीन कंसेक्यूटिवली टैकल पॉइंट्स भी डबल डिजिट्स में आ रहे हैं। Yeah, that is very good. But look who's got the best defender, Mohandas Vishwamohan. So that is a very, very rare thing for a raider to get it. So that shows everybody joined in together, and that really shows that the Chola Veerans did not come out good in the defense department. So that was a bit of a problem there. But again, the main point of Gautam not performing as a defender hurt the Chola Veerans again. And they need to find an answer very soon. They need Arun Kumar Anjapuli very soon back after his university work, because from tomorrow it's going to be a tough challenge again in the challenger round. अच्छा, मोहनदास विश्वमोहन वहां पर बेस्ट डिफेंडर रहे, 3 टैकल पॉइंट उन्होंने प्राप्त किए। हमने इस प्री शो में भी बात की थी ना कि कैसे वहां पर लेफ्ट कॉर्नर की जिम्मेदारी उन्हें दी जा रही है, प्रीमियम रेडर के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बट आज उन्होंने अच्छा कार्य किया कहीं ना कहीं डिफेंडर के तौर पर। बट हम अभी भी उनसे पहले राउंड में बहुत ही अच्छा टैलेंट का प्रदर्शन देखना चाहेंगे। बट कबड्डी कमाल मूव दिखाते हैं नवीन आपको एक बार फिर से, जहां पर स्टुअर्ट सिंह ने एक शानदार सुपर रेस लगाई और दिखाया कि पलनी कैसे तैयार है रेड के साथ। Yeah, and this actually turned things around, isn't it? Where the Chola Veerans had that little initial lead, but then they came back strongly. All out was also inflicted. Good game for the Palani Tuskers. जी हाँ, बहुत अच्छा मुकाबला था वो पलनी टस्कर्स के लिए और बहुत अच्छा खेला भी। बट अब आइए मैच नंबर 91 की तरफ चलते हैं। लगातार 7वें मुकाबले में 7वीं जीत के साथ नीलगिरी नाइट्स भिड़ी थी, और जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, टॉप वर्सेस बॉटम का मुकाबला था और बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शन नजर आया। नीलगिरी ऑन द टॉप रही, 48 पॉइंट उन्होंने प्राप्त किए और सिंध सोनिक सिर्फ 28 पॉइंट वहां पर प्राप्त कर पाई नवीन।
This was a one-sided affair, and the Nilgiri Knights were just enjoying whatever they got in their arena, because the left corner was changed to Elumalai Murthy. Again, the right corner was changed where Abhi Kumar played in. Elumalai Murthy came in on that left corner, and then even Marimuthu Selvam did not play in. But nice to see Harish coming back. That was good for the Nilgiri Knights, where 32 rate points. That was massive. Abhi Kumar, yeah. First match on the Kabaddi match here full time, and he got everything. Best defender, yellow card. He made his presence felt on the Kabaddi match. But yeah, for the Sinsonics, unfortunately, only Prince Kumar Roy with that Super 10, and that was not enough. The defense once again, Arshit, made a lot of errors, and that's why me and Navneet, we were speaking about Nepal, we were speaking about Hrithik Roshan, we were speaking about Brett Lee. Now we had to keep that interesting because Sinsonics, a very unfortunate performance from them. जी हाँ, बहुत ही ज्यादा वहां पर भुला देने लायक प्रदर्शन रहा था सिंसोनिक के लिए। बट एक और बड़ी चीज जो यहाँ पर मैंने नोटिस की नवीन, वो ये थी कि 32 रेड पॉइंट्स नीलगिरी नाइट्स के लिए ये बहुत अच्छे हैं और उनके लिए मैक्सिमम नंबर्स हैं। अगर हम पिछले कई मुकाबलों की बात करते हैं और 6 रेडर्स ने मिलकर पॉइंट निकाले हैं, तो 6 रेडर्स आपको नजर आए, जैसे कि के हरीश भी ने भी वहां पर 1 रेड पॉइंट प्राप्त किया, सूर्या सेल्वम ने सुपर 10 बनाया और सुपर 10 के साथ साथ उनकी 6 पॉइंटर सुपर रेड भी थी नवीन, जिसे आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन भी किया था। ये फिर से देखते हैं वो मूवमेंट को। Oh, that was an unforgettable moment, really. How many ever times we can go back and we can keep seeing that? That was just marvelous. Look at the way how he escapes from the ankle hold, the clutches going off, and that leg comes across. Everybody were thinking of the hands, and the legs came across, and that was why I was so impressed with Surya Selvam. Even without Marimuthu Selvam, he made sure that he is the premium raider, took up that responsibility, and 7 out of 7, Arshit. My God, Nilgiri Knights were just phenomenal. And yeah, Elumalai Murthy, the 7 hills, I also gave that comparison, where 7 hills in Tamil Nadu, that is considered as very big on the spiritual levels. Yeah, 7 out of 7. Congrats, Nilgiri Knights. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा खेले। और कभी-कभी जब हम ऐसी रेड देखते हैं ना नवीन, मुझे लगता है कि मैं भी कबड्डी खेल सकता हूँ, मैं भी रेड लगा सकता हूँ। बच्चे उनकी एक्सीलेंस थी कि कितनी आसानी के साथ वहां पर वो कमाल किया सूर्य सेल्वम ने, और ये सूर्य लगातार चमकते रहे, यही हम आशा करते हैं। और ये सूर्य जब तक चमके, जब तक कि ओडीआई वर्ल्ड कप भी वहां पर आ जाए। बट चलिए दूसरी स्पोर्ट पर नहीं जाएंगे, इसी स्पोर्ट को कंटिन्यू करते हैं। मैच नंबर 92 की तरफ चलते हैं नवीन। हम्पी हीरोज बनाम चंबल चैलेंजर्स, 2 टफ टीम्स। हम्पी हीरोज हेड्स ऑफ, गगन गौड़ा को न होते हुए भी नवीन लगातार हम्पी हीरोज इतना अच्छा कर रही है, और रेड पॉइंट्स कितना अच्छी तरह से उन्होंने भापा है और कितनी अच्छी तरह से पॉइंट प्राप्त किए हैं। Yeah, second match, isn't it? Without the glorious raider, they're winning out a match. 25 raid points. Nothing to choose, as I said, I should see. The Chambal Challengers also, the raiding were okay. They were very good. But where actually the match was lost was because of those all-out points and extra points given away. I did not expect Sanskar Mishra to give 2 extra points. Once when he was on the defender lines, where Madhu Kaverappa came in, where he stepped out of the end line, and then that was the all-out. That was not necessary at all. They could have actually bounced back from that all-out position. But then once when he went into kicked the left corner, and he did not actually control himself in going to the lobby, and then he was arguing, saying, no, I got a kick, and then came inside the lobby, but Chambal Challengers had lost that review. So that was a problem, but hats off to Teja Nayak. I think he really reciprocated the support that he gets from the Chamundi Vihar Indoor Stadium. जी हाँ, मुझे लगता है कि शुरुआती मुकाबले में एज अ रेडर नहीं खिलाया गया, तो वो पूरी तरह से कंफर्म कर रहे हैं रेडर को कि एज अ रेडर में लगातार अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। और नवीन, एक और बहुत ही शानदार बात उस मुकाबले में रही कि दोनों ही टीमों के लिए टैकल पॉइंट जरूर कम थे, पर दुर्गेश कुमार वहां पर चंबल चैलेंजर्स की तरफ से मैट पर आए थे, कुछ ही रेड्स के लिए आए, बहुत सारे रेड पॉइंट्स प्राप्त किए, बट धीरे धीरे अब वो फिट लग रहे हैं हमें। Yeah, he looks fit, but the problem there is their left corner, Arshit. You have Rehan Sheikh. You're confused whether you need to field Javed Khan or Rehan Sheikh. Then Durgesh Kumar came in on the left corner, and Teja Nayak went in, had a back kick on Durgesh Kumar. So you can't have Durgesh Kumar on your left corner. So going into the challenger round from tomorrow, Pradeep Yadav really needs to understand and settle in for a proper left corner. I think Rehan Sheikh has had his run. He's been experienced enough. But I think they'll have to change for a better defender. That's what I feel. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन। और चलिए, आपने तेजा नायक की बात ही कही है, तो हम सिर्फ बातों से तेजा नायक की एक्सीलेंस को नहीं दिखाते, विजुअल्स की तरफ चलते हैं। और नवीन, एक शानदार रेड आपको नजर आई तेजा से आज।
I expected this. And I also said in the commentary that Mohit will actually go ahead and select this as the Kabaddi Kamal moment. 5-pointer raid and the booty dance. Oh, that was marvelous. And I was also telling that in the post show, Harshit, Deva, and all the lensmen will have a booty dance. Can we cut a wide shot? Can we get a wide shot, Deva? Come on, Deva, don't sleep. Yeah, right. Harshit, go for the booty dance. Come on, Harshit, go for a small booty dance. No, you can't do this. बहुत सारे वायर्स हैं नवीन यहाँ पे बहुत, और तेजा नायक को बुलाते हैं, तेजा नायक को बुलाते हैं। चलिए, तेजा नायक इज विद अस, क्योंकि मेरे पास आपको सुनने के लिए वायर है और वो वायर कहीं टूट ना जाए, वरना देवा मुझे वापस बीसीआर में नहीं आने देंगे। पर चलिए, अभी समय है, तेजा नायक को बुलाते हैं। और तेजा, क्या बात है यार, थोड़ा सा और पास आ सकते हैं ट्रॉफी के। हम चाहेंगे कि आप फाइनल से भी पहुंचे। बट चलिए, तो नवीन, पहला प्रश्न मैं करता हूँ तेजा से। तेजा, कई मैचेस में आप बेंच पर वहां बैठे थे। शुरुआत में आपने एज अ डिफेंडर शुरुआत की, फिर कई बेंच में बैठे कई मैचेस में, उसके पश्चात एज अ रेडर पिछले कई मैचेस में बहुत ही वंडरफुल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो क्या सोच और क्या प्लानिंग थी आपकी? गगन रेड रहे, वो भी खेलेगा, पर साइज प्रसाद भी अच्छा रेड रहे, पर रेडर के हमारे टीम में क्या भी फॉल्ट नहीं है, इसलिए रेड कर रहे हैं। नरसिम्हा अच्छा राइट कॉर्नर है, मैं राइट कॉर्नर ही खेलता था, नरसिम्हा मेरे को बेहतर खेलेगा, इसलिए उसे वो छोड़ा। तकलीफ समय में मैं जाकर वो ना हो तो पॉइंट लेकर आ सकता हूँ, इसलिए रेड ही करता हूँ, डिफेंस भी रन खेलता हूँ। क्या बात है, यानी कि जैसे आप डिफेंस को परेशान कर देते हैं नवीन, वैसे यहाँ पर इंटरव्यू में भी ये पूरे अपने बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने प्रदर्शन किया। Actually, you can ask him to speak in Kannada itself, just to go ahead and be comfortable. Okay. You can speak in Kannada. तेजा नायक, आपसे चाहूंगा कि जो आप कहना चाहते हैं यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस के बारे में, वो थोड़ा सा कन्नड़ में कहिए कि हमारे नवीन चौरी हमें सुन रहे हैं और हमारे तमाम दर्शक सुन रहे हैं, वो हम और अच्छे से समझा पाएंगे। आप कन्नड़ में बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ। ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋಚು, ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ರೇಡು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ। Yeah, lovely. Wow. So he's thanking everybody, but before he goes, last question. You need to ask him, I think, Harshit, because he's not have the earpiece. No, ask him. We were actually joking yesterday that Teja should raid with full pants on instead of the shorts, because the entire sound of the arena was because of his shorts and his toned legs. So is he planning for some full pants raids? And what does he think about the girls cheering him for? तो तेजा नायक, आपके लिए वहाँ पर बहुत सारे गर्ल फीमेल का भी सपोर्ट वहाँ पर आता है, और कबड्डी में वो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप ये शॉर्ट पैंट्स की जगह फुल पैंट्स में रेड करें, तो क्या आप ट्रैक पैंट्स में रेड कर सकते हैं? सर, कबड्डी का रूल्स है ना, शॉर्ट्स पे ही खेलेंगे। Tell him Naveen was telling to raid in full pants. नवीन यही कह रहे हैं कि आपको फुल पैंट्स में अगले मैच से रेड डालना पड़ेगा। ओके सर, जोक से बात तेजा, और आपको हम जाने दे उससे पहले हमने आपकी बॉडी के बारे में बहुत सुना। क्या एक बार प्लीज आप अपनी जो डोला है, जो 16 का डोला कहते हैं, वो एक बार दिखा सकते हैं प्लीज? ओह वाओ, lovely. Thank you so much. His brother is a judo champion. He trains with him. Lovely Teja. Brilliant. Yeah. So nice, no? He says no kabaddi rules. We were just joking about it. पर मैं एक बात से आपकी बहुत ही वहां पर निराश हूँ। सिर्फ आप मुझे पॉलिटिकल कहते हैं, आपको तेजा नायक को भी आपसे पॉलिटिकल कहना पड़ेगा, रैन को भी कहना पड़ेगा। Why only me? He does. No, I've left it. In the summer edition, you have not been political, so I like it. But you didn't do the booty dance still. I want the booty dance. I was waiting for you. जब आप मेरे साथ यहाँ खड़े होंगे, तब हम दोनों मिलकर करेंगे। I will definitely do it. You may be scared of Deva, not me. Whatever wire cuts, I will do the booty dance. तो चलिए अब क्योंकि सीधा अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं, जो एक और बड़ा मुकाबला था, मैच नंबर 93 राजस्थान डार्बी। अभी तक जब भी दोनों टीमें एक साथ भिड़ी हैं, दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और इस मुकाबले में अरावली ने लगातार 4 हार के बाद एक बड़ी जीत आई, और पेरियार के लिए 4 जीत के बाद एक छोटी सी वहां पर हार के साथ अब चैलेंजर में जाएंगे नवीन। I expected this, Harshit. I expected the Periyar Panthers will take it a little light, because they want their friends also to probably have a victory going into the challenger round. But yeah, Periyar Panthers also very good in terms of that raiding department, but not so good in the defense. So as a defense strong team,
when you are losing out on the defense, that will actually go down as a bad experience to go into the challenger round. But being on the second place, yes, Aravaliaros were struggling, but I think they took it a little more lighter. If you see all those tackles that were attempted, that was not very convincing enough from the Periyar Panthers. And of course, they also went ahead and experienced, on that experiment lines a little. But yeah, it's good that the Aravaliaros are going in with a victory. जी हाँ, चले एक वो जीत के साथ यहाँ पर आगे बढ़ी है। दोनों ही टीम के लिए रेड पॉइंट्स अच्छे थे, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। जरूर 13 टैकल पॉइंट्स अरावली एरोज के पास से, और अरावली एरोज में अगर हम बात करें तो राजेंद्र भाकर नहीं थे, पेरियार पैंथर्स